Well, ladies and gentlemen, and my dear gamers, yes, we are back, and this is going to be the Monday scrims, and we are kicking off the game with a banger match because this is again going to be scrims of the Algambo Esports scrims number 36 best of 3 series, and match number 1 all the way between two teams, and those two teams will be Team Darkhawks and Team Godfathers. Team Darkhawks hasn't been able to prove themselves into the scrim so far, so let's just see how they have prepared in Even in the this fullest bloom. week. I hope they have done Hails their homework before the against Team Godfathers scattering. because they are Different one heck of a good perspectives team to face expose the against. My name same is Solsky. truth. I'll be your There's no caster for time this to match number 1 chit-chat. best of 3 series of the evening, and my co-caster The will be Miss southern Asuya. How seas are you, are Asuya? my domain. I'm fine, Soul. How are you? Well, and I hope you're doing good, and all the viewers are doing good as well. Just like you mentioned, Team Darkhawks. I think we casted the first match together in the scrims. They performed pretty good on the first time, but the second game was kind of a disaster when it came to the synergy. So hope it's been a week, I guess. So I hope they have improved their synergy at least. Let's see what they have to show us this week. And Team Godfathers, though, it is my first time watching them play. And since you said they are a good team, let's see how it goes. Well, I think there was one match or maybe one scrims that in the best of 3 series, first game, second, sorry, one game or You second should game, be I don't know. ashamed for not But yeah, Team trusting yourself. Godfathers, they didn't give a single kills for like 7 minutes, if I'm not wrong. So I think they know how to play like with discipline. This Team Darkhawks needs to learn that. They are a new team, so and coming into the scrim, so I think they're here to improve by week after week, by game after game, just like Valiant Ghouls improved from their, the first matchup against QE Nebula. They got just clean swept, but after that they are doing 2-0 to everyone. But still, their revenge is due on to QE Nebula. Coming back to this game, Darkhawks I Godfathers. didn't cure the Darkhawks pain. has the first I pick, banned out harnessed this. it. It's not Selena, but the Hirada. They banned out the God. They banned out the Paquito. And there is a Kadita and Eudora and a Marcel. Picked off Valentina. Oh, I think that's a very good choice. I think even if they go for Atlas, and they trade off Atlas and Belleric. Oh, good choice. I would say the Valentina first pick. I mean, of course, Valentina is a good pick, but then again, I don't think I so might that not be she elated, man. needs to be prioritized as the first pick because you could have taken the Barrage, you could have taken the Atlas. Like at the end of the day, Valentina is a mage, and Atlas is kind of tanky. He can dive in. His passive is annoying. His damage in the early is way too much. So yep, the poke. If a mage which comes with a lot of poke is paired with a Atlas in the early game, it can actually create a lot of issues for them. So they did give away the Barrats though. Against the Barrats, I think. What do you think? I think a Goonie can work, or we did see a Direth working against that in the MSC. The Direth being picked up alongside the Rafaela really worked out. So let's just see what Team We don't have Darkhawks go Rafaela for now. because yeah. It's just Belleric. Just lock into Belleric. I understand why you go for Valentina, because either they could have picked the Belleric Godfathers or they could have picked the Atlas. So they opted out for the Atlas. I'm not a big fan of Barats into the first. Like, can go for the third pick, and obviously, if there is Barats, and your opponent will be, obviously will be Uranus. So it's just two sides of the spectrum. And I'm waiting for their last pick. I think it should be Belleric. If they don't opt out for Belleric, I don't know why they. Yeah, good choice. Good choice. Darkhawks looking strong into the game, as you mentioned, but the passive is annoying off that Atlas. But I think Valentina, I think, as you mentioned, that Poke Mage will be good with that Atlas. I've But I been think waiting for Belleric too Valentina long. is good. I But okay, am they opted out for carry. vengeance Team Godfathers going with incarnate. classic counters for Belleric. I suppose they could have gone for Brody, because Brody is also good. Need He some burst heroes stitches? I against can that Belleric. help. But yeah, what's Still better waters burst run than this deep. hero, this carry? But yeah, they banned out the Melissa and Moscow. I mean, could have banned out the Hmm. Kent or maybe Brody, in my opinion. Crowned by I heaven's mean, mandate, my it's just legacy anything works shall in this meta. It endure. doesn't really matter what you ban away. And then again, Melissa is kind of meta, so makes sense. And Moscow is always meta. He can carry towards the late game. But
I don't know, against the carry though, just like you mentioned, Hanabi. Brody can outrange her. So even a Leslie can burst her I towards want the Hanabi. late game Gaze upon as well. the edge of the void. Soul Keeper is the funny part. Come I on, was just Dexter. It's watching our a video showtime. where they were showing which heroes were back, coming back into the meta. It's funny enough. Alongside Mia, it is also the Hanabi, just because she has a lot of purifies. I mean, I love this meta because this is the reason, because a lot of heroes that are coming into the meta, like a couple of seasons back, you might have said that we are trolling, but now same those heroes are into the meta. Like even the Bakito, the Gods, the Idoras, and the Atlas, and even the Beleric. Like holy, but Belric the has clock. always been strong in my opinion, and even the Atlas is just I that they think got a he got bit a more of buff. their HP. Both, yeah. Yeah, both of their HPs were buffed, and Belric's But I speed was think, increased of the yeah, taunts. yeah, So yes, yes. I think one more buff was there for Beleric. Like the speed of ability of his, it just get yeah. low cooldown whenever you proc the passive of Beleric. Like if you hit him like 10 times, it just 10 seconds cooldown. So like basically 0 second cooldown, like something like that. So that's kind of OP, like overpowered in my opinion. So I really like this Barats pick, and the Uranus against the Barats, of Enemy course, reaches the he will work. battlefield. Both of them can Smash give them. damage as well as sustain. But then All again, troops in my deployed. opinion, I think Barats is way better because towards the late game, he can even give crowd control, right? He can lock down one specific character, and if it's a Nolan who loves to dive in, he can just lock him away from the team fights. Or if it's even the Claude who will be diving in with his blazing druid, he can lock him away too. Meanwhile, the Uranus can't really do that. So I think in the XP, I prefer the Barats more than the Uranus. Yeah, because the reason is just because he can basically eat someone. So yeah, so yeah, because that just gives you the pick off kind of strategy in the XP. But as we are talking, Asuya, we have landed onto the land of Dawn, guys. This is going to the game number 1 of the best of 3 series, match first of the evening between Team Darkhawks and Godfathers. This time, Darkhawks are looking for a new glory because they have not been performing well quite into the scrims, but they are a new team, so I hope they have learned something from the previous game, and we might be able to end. We might be in for, I would say, a good game, a good ML here in the scrims of Algambo Esports. By the way, I think they have the opportunity to invite Team Darkhawks because Rias is just too weak into the early game part. I mean, Valentina is one of the strongest when it comes to the early. Valeric is strong too, and even Nolan and Uranus is strong. So I think it's kind of even. Except Team Godfathers, the carry as well as the Vices will be scaling towards the late game. And the Vices, I would say, heavily depends on the snowball. If he gets some stacks funneled into the sky, but Nolan dives in, the flicker being forced away from the Bharat right in the early, just before the turtle fight. Not a good Nice sign. dodge. And with this, the Atlas also diving in. Here comes the passive, the freeze, and one more kill might be taken away as Uranus. I mean, one flicker and the EXP laner. I think Team Godfather is definitely win it up. Yeah, no consecration for him at the time was present, so this is expanding reward map. I think I should be seeing a rotation coming in from Carry and the Cloud as well. There is a turtle secure, and again from that Barrage. Fracture is trying to get his fracture onto that ZT and but failed to do so. There is a light from the Carry as well, giving damage. Valentina going in for the Daytona's welcome. Why Valentina players always take Daytona's welcome? You have the Atlas. That is easy to connect onto anyone because they don't have a purify. You can even use a Zatian's ultimate. Why Daytona's welcome? You are not Barat. You will get melted down if you eat someone. And it is basically bad for your calories also, Valentina. So just take ultimate or for something else, some other hero. Like, come on. I mean, she has a lot of options and she can even connect. I think even the Barats's ult makes sense because she can pick off someone, but then that was way too much of a distance. Kind of underestimated the range of that ultimate. So, yep, I think wasted ultimate. And, I see the same thing happening in this day too. Kind of, I think the synergy has increased a little bit more, but towards that, when the bot lane was getting ganked, the XP was getting that, the mage wasn't present, the roamer wasn't present either. So
I think still some communication gaps and some control over the map is lacking from the side of Team Darkhawks. But look at the Claude, the way he's getting zoned away, not a good Good. sign. But Ripper Atlas takes mid. down the ZTN in the mid lane, and with that, the Fatal Links comes up onto the Nolan. The slow, the passive. Just look at them trying to take down the Valentina. The Barat's coming. Sorry, the Bellaric comes up for the help. Meanwhile, in the bot lane, Good hero. it's just two EXP lane, two tanks. I would say two really hefty boys just competing. Yeah, just two hefty boys. It just reminds me of myself. Yeah. So Darkhawks, they need to just play like that. They just played it right now because they baited out the flicker into the mid lane. They even use a Fury the Phoenix from Valentina. I am you. So now Valentina's learning. I think she should now take Atlas because it will give her the low cooldowns. And the Fatalings can on to be connected to anyone because she might have. Yeah, not might. She has the flicker. And she just need to get any three people, and then Belleric will come, follow her up, and that's GG's for Team Darkhawks. But I think need to wait out for the opportunity of talking about opportunity. Look at that YSS and Ripper. Come on. Very bad decision making from Yazuveer. Might get caught. That's the Fury the Phoenix, Fatal Links, and that's Caesar Day. Brother Riot's quite too late into the party. There is a blazing duo onto the back line. Oh my god, Claude with a pick off. Good pick off coming into the Claude. And kill for a red buff as well. So I think that's going to be a very even trade off. And it just makes that jungler ahead from that Ripper. You know, you wouldn't want YSS getting ahead of you because the Claude uses up the second skill, gets taunted, gets stunned, gets slowed. A What 3-man the heck? sandwich. Absolute decimation onto that Claude. Very bad Really decision sad making for from him. Yazuveer. Yes, Might get we caught. have, That's the Fury the pretty Phoenix, good Fatal items, pretty good Links, and synergy that's coming Caesar in from the Day. side of Brother Riot's Team quite too late into the Godfathers. party. There is a blazing duo onto the Yep, back line. I think Oh Claude, my Claude god, performance was Claude actually with a good. pick He was off. Good pick waiting off coming for into their the Claude. spells to be And used up so kill that for a his red ultimate buff does as not get well. So I think interrupted. Yep, that's going pretty to good be a gameplay, but very then again, even trade I off. think a bit of a synergy issue coming up between the jungler as well as the tank from the You side of know, Team Darkhawks. And I think, just like you yeah. said, the Valentina has kind of learned. She's waiting for the tank to give the setups. But with this, once again, into the mid lane, some skirmish happening. Uranus also making its way up alongside the Barats. Yes, and you know what? I think, as you mentioned, Claude is just doing good. But Team Darkhawks, they also lacking into the micro. That Ghost know that he is low. He doesn't have the blazing duet. He might get ganked because they got the pick off onto their marksman. And still, he was into the top lane. And as you were saying that he is playing good, and I think we had a little bit of high hopes for Team Darkhawks. They just made a little blunder again. That is going to be the fate. No, not that like that. You had the flicker. Now, holy. What will you use to escape? You will use flicker to escape into the back lane side. We can see blazing to it onto carry as well as YSS. YSS falls down. And I think Atlas might be next into the chopping block. But no, that's a lot of damage coming from Zaiti. And that will be it, I guess, for the team fight. And that will be the perfect cast just to escape from the danger. Team Darkhawks giving a tough battle to Team Godfathers in this match. Ripper, I would say, having a bit of jungle diff in this match. Said he was into the top lane. And as you were saying that. True. I think both the tanks over there kind of missed their ults because only one person got. It's like Atlas ulted one person. Just look at the Vices. And he has the dodge, but then into the backlines. At least they baited away all the skills, right? So the Claude had the opportunity to take down the Vices, who was kind of snowballing in the farm. He was already level 9, but here we have once again competition for the turtle. The ultimate from the Bellaric. The taunts, but Noisy comes in, grabs onto that turtle. And with this Ripper getting taken down by the Barats. Atlas making his way away. I think they do have this opportunity to invade because a lot of spells were used away, but Team Darkhawks, I don't understand their gaming sense. It's like when they should go and dive in, be aggressive, they don't, and when they should not, they do. What can you say? Like, I mean, come on, like they are just wasting their ultimates and they are not taking advantage of it. And when they are baiting out their ultimates, they are just giving free trade-offs to Team Godfather Darkhawks. I'm not saying Team Godfather also playing really, really, I would say, perfect, like perfect. But yeah, I think they're making good trade-offs. Their Atlas is giving good rotation. And I think Team Darkhawks should know that Atlas has a very fast rotation than this Belleric. But Belleric has that very good, I would say, disruption. So they just need to play around that disruption, especially this guy. And why were they focusing on to the turtle when you heard your jungler
was just getting sandwiched by two people, and that to a dinosaur and an octopus. Like, come on, like, oh my god, in the top lane might go for the flicker, light field, no, but Atlas Oh, really no sad. purify as well. Didn't use the purify, I don't know why I had the blazing 2-8, but you can see Noisy just getting caught onto that jungle side, but I think that will be a trade-off that will go into the benefits of Team Godfathers because they got the top lane tier 1 structure and a kill as well. I think it was a good decision by Claude not to use the purify because his death was, it was inevitable in that situation. He was literally getting sandwiched, but look at the damage coming in onto the Atlas, but still a tank. Meanwhile, I mean, the Beldrick was there, right? He was trying to give some. I think the vision issue. The Claude is not getting proper vision. He's not getting proper support from the mid laners because the Beldrick is just roaming around the river because the Atlas went in, dived in for that final hit. Meanwhile, Beldrick was kind of daydreaming. I would say. I would say the Claude is actually. I'm kind of sad for the Claude. So I really think that this Beldrick as well the Valentina should buckle up their rotation because I don't see much macro as well as the micro control into their hands. Yeah, absolutely. And I think now Team Darkhawks, okay, never mind, that will be the Mountain Shocker going for the perfect catch. Have used the Annihilate. Atlas looking for some that, ice passive, net frigid. I think Purify frigid baited freeze. out Soul. Oh, Lee, hell no. Now that will be the opportunity for this guy. What is his name? Mask hates. Oh, that's some kind of an aura name right there. That will be the second item for ZTN, and now they are just locking down the Lord. And again, nobody's checking on to them. There is the Fury of Phoenix. No, not contest right there, and a very good perfect catch again. Fury of Phoenix from this one, this time from IMU, and that will be the Fatalings on to Ripper. But Ripper harms way from the side of team from Godfathers. Now Team Darkhawks is onto the back foot. Lord has been secured by Team Godfathers. Looking good, no trade-off so far. That will be a flicker bait out from the carry. Nah, I'm not a big fan of the trade-off. They didn't even bait out the Lord for a team fight. Team Darkhawks could have made that team fight onto their hands, but fails to do so. Top lane. Lord marching from the top lane side. Hmm. I don't know. It's like Team Darkhawks, gameplay is kind of slower than Team Godfathers. That's all I can see for now, especially because the rotation coming from the mid is kind of lagging for them. With this Lord, I think Godfathers have just decided to follow up the Lord. Not even going in for the first tier in the mid. Valentina's damage isn't enough. Meanwhile, the EXP is just having their own solo battle. I think at this point, the carry is kind of farmed up. She already has 2 kills and she's level 12. So, and then again, I'm good. I'm not a big fan of Nolan, but then Ripper really needs to, I would say, a bit more practice onto Nolan because I don't really see him giving good combos. Plus, Nolan is kind of dependent on the snowball, even though he got that energy buff. But yeah, you don't have the snowball, so kind of weak. Their only hope might be a good sex coming in from Valentina as well as the Claude who can scale up. Yes, and we can see there's a Mountain Choker onto the top lane side. And you know what, Nasri, I think Team Darkhawks, they're really doing better, from the last game because the last game against Team Valiant Ghouls, they were just like, holy, like that game was just, so sad to see. But this time, Darkhawks is doing good. A little bit, I think, can do better onto their micros. I would say micro, we are wise a little bit behind. And first fix the micro, and then the macro will automatically will be the next target. But if we see itemization wise, Claude is having a good time. Carry is also having a good time. Going for wind chant first, then going for malefic gun. Interesting. And Vorax, why Vorax? I think could have gone for malefic gun in my opinion, but Vorax give you that damage boost, slight bit of true damage as well, and slight bit of lifesteal as well. But I think Malefic Gun could have been much better choice for killing that not Belleric and that Uranus. So far, so forth. Itemization wise, I think I haven't seen. I would like to see again itemization because I was checking out the Barats. Where is the Barats? There is Vorax. Oh, come on. Why? Oh, no, man. I think we are winning. I can go for the Vorax as well. No Divine Glaive, or even though no. Oh,
I think Truncheon on to Valentina, I think would have gone for the Wishing Lantern, in my opinion. Mm, yeah, they definitely do need some penetration. But at this point, I think Valentina should go hybrid build because the major damage at this point should be the Claude, and Valentina should be, they should play around the Claude. Second Broderick to should play around the Claude, and Valentina should focus more on giving proper sets or maybe reciprocating the sets which will be coming in from the Barats as well as the Atlas. So a bit of a defense, maybe the brute, the breast. Okay, that's brute force, right? Yeah, she can go for it. But meanwhile, we do see another skirmish happening. A flicker, all the purify being baited away from the Claude. Pretty good reaction time, but with this, the second gear might fall down. Look at the Atlas, the way he's zoning from behind the scenes. With this, I think pretty aggressive gameplay coming in from the Godfathers, the Uranus, as well as the Atlas. Just some tanks happening. Nothing much more. Let's see if they'll be able to defend because we see Nolan. Just look at the Nolan. He's just having a very good trade-off. Mountain Shocker, and it connected onto Ripper, and he got a kill as well. I think Noisy, but a good play right there into the top lane. But Nolan got what he wanted, and there will be two taunts. Good, but no, why flicker? You could have easily done that without a flicker. That's a very good fatalings from that Valentina, fatalings of that Atlas of himself. And no, I think it's not it for Team Darkhawks. Not enough damage, and I think Ghost will be next on the chopping block. I think Ghost is only left, and I think it's a GG's for Team Darkhawks. Mountain Shocker hasn't propped up, no mana for this Claude. And Atlas looking for some target, might go for that perfect catch. Yes, he will go for an Alit as well. That's going to be another fatal links from this Atlas. He will fall down, but will give the team the win that they needed. Team Godfathers getting the game number one onto their, I would say, pocket. Yep, I would say that Valentina's art, my god, just look at that. It was so beautiful. But unfortunately, they did not have Nolan, and Claude was getting taunted. The amount of stuns that Claude got, he couldn't even give, the space which a Claude wants when he dives in. He did not. He was completely denied. And of course, even that makes sense that the gold lead was way too much. Damage wasn't enough. Because I think Claude should have rushed for a Winter Crown. And after his Trinity was done, winter should have been his priority. I think a winter could have done proven more effective, especially towards that late last team fight. I think Team Darkhawks made a lot of blunder, but I am improved by I think they have improved. I would say not by a big margin, but I think they have improved by medium margin. But yeah, they still have that the growth potential that they need in in the upcoming scrims. And I think if they improve scrims, but still they have a little bit, I would say, adaptation wise slightly behind. Might adapt into the second game, and we might be able to see some third games. BO3 first BO3 going for, I would say, for in the Algambo's esports scrims. And yeah, I mean, I think Darkhawks surely had that potential to make a snowball, and gave that good sets from Valentina as well as good sets from Belleric. But I don't like, he went ahead, he had that taunt, then he came back, then he went back again with a flicker, just like, no, not sure of that decision making. This Rome should give the short calls. He should have that confidence to make the short calling as well as give the sets and tell the team to come and help him. That's what a roamer should do. If Roma can't do, I think that responsibility comes on to the mage's hand. He should tell him that or her that you go ahead, do some sets, I will follow you up. That should be the way of communication between Med and Rome, and that was a little bit missing. Not a little bit, I think it was a lot of, I think, was missing from the mid duo. If Mm. Team Darkhawks fix that, I think we might able to see some, the Dark Horse kind of performance coming in from Darkhawks. You see the wordplay But right there. even I believe that the room as well as the jungle are two of the most difficult roles. Sometimes I can keep the jungle as well as the EXP at the same point because if it's not the room who's giving the call sets, it's the EXP. Or like depends like what kind of exp you have. If you have a damage exp, you follow up the tank. If you have a set maker exp, you go and give the sets first, right? So highly depends, but yeah, roam is kind of an essential, I would say, point for the team. Really needs to be that
strong and a bit more confidence, because you can see the Belric was, I could see he was not confident enough, and that's okay. Like if you play more with your teams, you'll improve more. So hopefully we see them more in scrims, and hope they keep practicing and keep bucking up. Yes, I mean that's what scrims is for, Suya. And guys, if you want to be the part of the scrims, don't forget to like, share, subscribe to the stream, as well as you can follow us onto our social medias, and that will be the links of that will be given onto our description box. Just just do us a little favor, go to the description box, and you will be able to see there is a Twitter, so not Twitter, but yeah, I think I have a very bad habit of calling X by his prior the old names. But yeah, you will get the X right there, you will get the Twitch right there, you will get what I mean, Discord, the Instagram, the website as well, and the WhatsApp as well. So do make sure that you guys follow us onto all our social media and join our community, so that you will be able to book your slot for the scrims, and we will be very happy to cast for you. And coming back to the second game, Now Godfather a this time guy getting the enters first the pick. scene. Darkhawks have the second pick. Even Well, the the forest Darkhawks blew. has the ability to turn this game Chaos into before the their scattering comeback and make us clouds. go to the game number 3 and can become the dark horse of this game, of this scrims. Godfathers going for their Kaiban straight up. There is going to be Hiraraban from the Darkhawks. Priority ban, and kind of surprised. I even saw a Ripper play Hirara in the Different first perspectives match of the expose the scrims, same and he was truth. playing it good. So, like since when they had that You first should be pick, they were ashamed the for ones not to ban out trusting Hirara. So yourself. why not, like if you're good on that hero, why not just pick it up? So really confused with that ban. I don't know, because I have seen you play. Why not just go for it? But pretty same I bans. might not This be a time we do lightning see man, but I Darkhawks do banning know my away the Atlas trades. and the Barats. So Like I will still say again, I'm not a big fan of Barard's ban, but if you find any hero troublesome, just ban it. I'm also a big fan of that thing as well. Play with your, I would say, what which is your most comfortable ground, and also play which your have more versatility ground. So you have to be something somewhere in between on the of these both spectrums. So if these were to be the Venn diagram of versatility and as well as comfort zone, you A come in the punch between, for a which is common punch. from to the both. But the Godfather is opting out for the Paquito for the first pick. Left out the Belleric. Just go Belleric because Paquito will be, I would say, having some trouble against the Belleric and can go for this time, can locked into the jungle because I think they have the ability to pick Ling. Also, I think what else could be picked here? Any XP lane, I guess. What do you have to say about that, Asuya? yeah, Phobos is open. Go ahead. He will counter out the Paquito. There's also the Esma. He can go for her. Another counter. There's also the Minsatar. He can literally lock down the Paquito. He can't move. So I think a lot of options for them onto the EXP. So don't prioritize the EXP at this point. Maybe lock down the gourd. Gourd is The gourd is open. There is the Beldrick, and I think this Beldrick as well as the gourd is a very deadly combo. So really deadly combo. If they one stun, one ult, it's instant delete. So yep. Let's see what Team Dark Horse offer. Okay, Beldrick has been picked up. Pretty good I option. am not the But only hopefully one he's the bound one by these initiating and giving chains. threats. Okay. Okay. Obvious too early. I think they should have utilized that for something else. But yeah, Maybe a carry could have also worked. So yes, yes. But you know what? I'm not a big fan of carry There's no nowadays time because to now game chit has chat. become too fast. Like you pick assassin, you go for the backlines, you become so overpowered in the early part that marksman like carry, which needs a lot of scaling, becomes slight bit of, mm, I would say, not useless but less impactful Night into the early sky game. tells So all. I think again this is a very good opportunity, and that is a very Esma, and you said it Bound by very heaven's right. mandate, Asuya my could have picked legacy this. Oh shall my god, why endure. this 18? I think might have some combo. Let's just not jump into the conclusions. Zayden against God, laning wise, has the range advantage, but he is the Esma that can eat away your, robe of Phoenix. That is your passive. So basically,
You just give up the shield to that Isma and she will eat away your shield. And good laning against that Phoebus as well. So drafting point of view, both are going equal to equal, I would say. But a little upper They hand call is me a with Team hero Godfathers because because I of this saved my Isma. nation It from. will Come become so on, annoying Dexter. for It's our Team showtime. Darkhawks to face a King, especially with this God as well. He can just melt down that Phoebus whenever he jumps in with the Infernal Pursuit. That Mystic Gush even melt down that Valeric. So, that's a very Need good some choice coming in stitches? from I can Godfathers. help. Banning section wise, we can see again. This time, Claude, not Moscow. Claude is banned. Interesting. Claude is one of those marksmen who God is kind of, he counters the God because when God just ults, there will be the Claude who can ult onto him. So I think a very, very brilliant banning Just go out Ling. there because Claude has been taken away in Melissa too. When God will ult, she can just connect. And plus, she's into the meta. She's like really scary right now. I've seen, earlier the Melissa was so highly dependent on the Inspire, but nowadays you I don't think even you saw need that me play. Inspire on her. Just use the Flicker, just use Aegis, and she will still melt you down. She will still work, Yes, I've yes. been and she waiting for works too because long. the fighter emblem just works way too good on her, and the heals are insane. So yep, just look at them. The carry being picked up, I think a good option because she can melt down the Esmeralda. But as for now, let's see what will be the matchup against the carry. And even a Clint can work at this point because Clint Brody. a Clint I can think just Brody will be torture the better. carry. Brody can torture the carry. So let's see what they offer. They do have the jungle. It is Paquito for the roam. What do you think would be their roam though? Rome wise, okay, against the Belleric, uh, can go for, Granger? classic. Yeah, obviously Granger. Yeah, now you have said it. Granger very good against this guy, this Belleric. As well as the Granger, carry. Brody, Clint. Granger, Brody, Clint. Yeah, I mean carry as well Experience the because you have the rage euphony of advantage. So yeah, that is going to be suffering. Granger. Very good point out by Asuya. I mean, just oh my god. I was thinking they might go for some early game. There's two scaling heroes. That is going to be the Zatian and the carry. They just, Godfathers forced Darkhawks to go some early game jungler, and what else is left other than that Nolan in the Assassins? So I would say Godfathers read this very beautifully, and Badang against this Belleric, 50-50 matchup, but Badang against this Nolan, very good. Yep. So Godfather, I think, might have the upper hand into that melting potential. Early game is just too much. They have the Paquito as well as that God. I have to lean on to this Godfathers. They have won into the draft little bit, just by a little margin. But you know what? This is going to be the game number 2 of the best of 3 series. Landing into the land of dawn, guys. It is going to be the game number 2 of the best of 3 series between Team Darkhawks versus Team Godfathers. Will the Godfathers do again a 2-0 against this Team Darkhawks? So will Team Darkhawks come back and tell us that we can become the Dark Horse of this Algambo Esports? Team Darkhawks has that comeback on the line. But Team Godfathers has a much match pointer. So let's see what happens here. Personally, really good draft coming in from the side of Team Godfathers. They will be literally winning in every lane. And we were saying that pick up the Belric just for sake of the Paquito because Belric will deny diamonds. But then I still think that since this time it is the Paquito onto the jungle, he can find a lot of flanks. Because except the Belric, there is nothing which can stop you. How he's winning? Yeah. Okay, to carry literally winning. It's okay. Granger needs level 4. Then Level 4, it yeah. will be the carry who will be suffering. But for now, carry will be a bit stronger. But just we already have the Badang. Just look at them. The Beric a bit late. It's always the roamer from the side of Team Godfathers who's always better when it comes to the rotations. And once again, the carry has been forced. Previous game, it was the Claude who was winning, but then lack of rotations, he was forced back into those gold scenes, and I would say even the micro was forced back. So I think the roamer really needs to be a bit more situational awareness on the map. But just look at the Badang, the way he's literally denying and delaying the farm for a Nolan who's heavily dependent on the amount of, like with this the Esmeralda with the frost of the moon, and Paquito follows up, gets the flank, first blood in the hands of Team Godfathers. That's just, unfortunate for that
this Yaduvid, and I just knew that this is going to happen. She needs to play a lot back. She just need that power spike for to make that Nolan enable to go into the back line. We can see going for the cut, but why cut now? Where you will you? You could go mid lane. I think if you go mid lane, you need a pick off. Okay, that will be the good pick off. Not pick off, but a trade off coming in from the side of Team Dark. Sorry, Godfathers, because they were able to take that blue buff. That is going to the Mystic projectile. Ghost again might get caught onto that fish break, and no, that will be the fracture. It's too early. That's going to the premature fracture coming in from that Nolan. I mean, why you've just used a fracture? I know that it is very slow cooldown, but still would have waited out for the good lock on onto the backliners. Meanwhile, a lot of damage coming in from that Granger. Rhapsody just trying to delay the lane to that Ghost, and he has that level advantage as well now. And it will highly depend on if he can, if Team Godfathers can funnel in some Skypiercer stacks onto this Granger, because they don't really have much of a. Okay, they do have the God, my bad. They have very good drop. Early, late, they have everything. They even have the Paquito for the late game, who will be literally one shot deleting the Zetian too. And I think this kind of same gold draft. God is going in for the anti-heal as the first item, and a Sky Piercer, and a Fury Hammer from the Granger. I think pretty good, solid choice of equipments out there. But with this, just look at the Phoebus, the way he's suffering in the EXP lane. Not much impact. I don't think so that much impact will be coming in from the Phoebus, except after he builds some magic defense as well as the War Axe. Yeah, I would like to see some itemization now. That is going to be the first item priority. That will be the Sky Piercer, Falling Star Moon onto Nolan, just getting his blue buff. But no, Retribution. No, he had the Retribution. Wasn't able to use anything. I think Isma got the blue buff. And I think that's a free turtle for Team Godfathers. Winning onto small trades can become the big trades if this compounds really well for the side of Team Godfathers, because they're getting the small wins and it can compound into the big wins as well. So they need to check out for that, and that will be the first anti-hit priority. I think Bellery could have gone for that antique, but that is unfortunate. Oh, Ghost. And oh my god, that just one is doing premature ult and other is doing very late ult. So it just it is not matching the description of synergy for the side of Team Darkhawks in this match. But however, Team the Godfathers really playing it well, going for good pickoffs, and again looking for fish break crack too near to that Badang. But Badang with a good discipline needs to lock onto 2-3 people, waiting for that fish crack. Okay, no, why will you show yourself to Badang? He was aiming for the Granger, but he failed to see it was a 1v4, and you don't even have the snowball, nor do you have a gold lead. Why would you? That was a very weird decision. I think, like I said before, the jungler as well as the roamer for the side of Team Darkhawks really need to improve a bit on their decisions, as well as a bit of. I would say the gameplay is a bit slow compared to other teams we have right now, and with this once again, Nolan is way too far behind on his farm, and a delayed Nolan does not really do anything. I mean, just look at the Esmeralda, the way she's kind of literally zoning away everyone at this point. In the top lane, we do have a Paquito taking down Ghost. Just 2 shots and complete delete. See, this is the reason that you need to win your lanes, as well as this is the reason that carry is not onto the priority marksmans, because early game is just too important nowadays, guys. Like, first 5 minutes into the game, if you handle it very well, I think your both teams have the chance to win. But if you lose that first 5 minutes, it's just very difficult for you to make a comeback. And even if you not win the lane, just stick to your lanes, and if you're somehow able to survive survive just first 5 minutes mark of this game, it's a very good possibility for you to make a comeback. But no, when you have given the snowball to Team Godfathers now, the only thing is left is for Nolan to make a snowball, and also he is also getting caught off guard. So, and you took Phoebus, so that because you might have easy team fights, but Phoebus is not into the team fight. So where the heck will you have your winning conditions? It's just too narrow for the side of Team Darkhawks in this match. But look at the damage coming in from the God as well as the Granger.
Granger has got that first Sky Pierce stack as well, if I'm not wrong. Yep, I think he has, but right now, Nolan, why is he sure? Okay, he's going in for the gold, but the god is also making his way. And I think with the amount of, I can see a lot of potential where the Nolan can mark down the god, where the Nolan can mark down the Granger, but it's not really happening. I don't know. It's like team is completely separated. The jungler is somewhere else. The roamer is somewhere else. I mean, three people going after an Look at Esmeralda. that Is Isma. that something which you would opt for? You should not. And Nolan, I could see that coming from far behind. He was trying to do 1v3, 1v4 out there. And with this, the ultimate from why would you use that ultimate to lock down an Esma who has a speed up buff? Oh, And with this, nice. the Badang also coming in, a lot of stuns connecting in. Finally, Noisy gets Good. taken down, but look at the amount of time the EXP has bought you. And with this, okay, we might see some gameplay coming in from the Phobius. He's jumping up again and again, going to chase down, hunt down. But meanwhile, behind the scenes, of course, that was too much delayed. Azician would get got flanked by the Phobius. And at this point, he's so much farmed up. Level 11 already. I told you this is a winning condition for them. And the Phobius, when the Phobius came, oh my god, that just unstoppable. Holy, why would you into the bot lane when you don't have the vision of this legendary Panther? Oh, you forgot to, put H after T. I guess it would have been Panther, but yeah, Panther is so yeah. Godfathers, holy, like look at this Esma. No fear anything, not even a fear of the carry. But once the carry joined, she just got decimated. But it was the outplay of the carry. But yeah, here it was just so delayed. I would say delayed ult from that Zaitian, and now Lord has been secured by Team Godfathers. This is a good play coming in from the Ghost, and the Phobius was just such a good enabler. But why the Flicker alone? Like, give the short calls. Come on, man. You just missing the short calls. Otherwise, your play is up to the point into the back lane side. No, I think not enough attention from that Beleric. Holy, it is so messy in these fights. And Team Godfathers, they are not, wasting out for the Esmeralda when she is on her first skill. She has the speed up. You literally stun nothing. And it's a 60-second cooldown right now. So major waste out there. And why would you be so far ahead? I think the Belric it feels like the Belric has no clue of what is happening, what is going on into the map. Because it was obvious that you have taken so much time out there. It is easy for the people to come back, but look at the 4-man to make them off the wall. The Fury of the Phoenix can't really stop them, and the Flicker being forced away, but just look at that complete 4-man wipe out. Only the Zishian remains, and the Lord is coming up. The Holy Shields have toppled, they're just toppling one by one. I don't think so she can actually defend this because the lane clear from Zishian is not that good. Red team base turret has been destroyed. Oh my god, that just GG's for the Team Dark Hawks again. Godfathers marching down the Nexus, and Nexus just gets junked down so quickly. 10 minutes 37 seconds this game ended with the first Lord, and that will be it for the side of Team Dark Hawks. But however, Team Godfather winning the second game with a dominant fashion. Yep, I think it's not about I think, it is so that the draft gives you half of the match. And yep, the draft was very good from the side of Team Godfathers. And Phoebus is a great pick, but just like you said, he has to be matched up against the Paquito. He has to be in the team fights, which he was not because the Esmeralda was literally melting him down. Literally, the HP was half down whenever I was zooming onto the EXP lane. So he couldn't really join those team fights. And carry was there to melt down the Esmeralda as well as the Badang, but then even the carry had no support. She was getting flanked, she was getting ganged by one. And Ripper, a Nolan who has no gold, who has less damage, trying to, we could see that even his full combo could not delete a god, and yet he was still, waiting into the jungle, waiting for what? I don't know. He should have just joined those team fights. I think a lot of miscalculations, and yep, that's it. Lack of a lot of synergy. Well, absolutely, you just pointed out everything, Asuya. That's why you're the GOAT analyst. But yeah, it was just team. I mean, I'm not saying anything bad towards team, Dark Hawks, but they could have done it better if they just, communicated a little bit better against Team Godfather. But yeah, they have improved. So, like,
Not very by a very good margin, but yeah, they have improved from their last game, or maybe from the last week as well. But this was it for game number one, match number one, guys. Again, we'll be back to the match number two. But before we go, please like, share, subscribe to the stream, and also follow us onto our all social media. And the links to that will be onto our description box. So please go check it out. And I Sonsky along with us. So yeah, we'll be seeing you onto the second game, which is going to be held between Team Valiant Ghouls and Team Modern Royals. See you after a short break.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Algambo Esports MOBA Class Series. It's your boy STZ, and with me, none other than Pichi will be joining us for the game number 2 of the night. A new week, a new day, but the same energy and the same teams going to fight against each other so that they will have some fun and they will have some strategies built before the tournament starts in. And before we go in, Pichi, you remember that there is an event in MOBA 5 Dig event in which if you're lucky, then you'll just open up all the skins and heroes, everything. Yeah, I I do. just I was just thinking about it. If it will happen, then our plan will get. Yeah, that's true. But it's Mauryan Royals versus Valiant Ghouls. Both the teams, they have that ego, they have that self-respect to not lose. What do you think, Pichi? What will happen tonight? We'll have to see though. Both of them teams have been playing it so well. Weeks by weeks, they have been practicing, but today they will be facing each other. Now, onto the one side, we always see Valiant Ghouls really trying to push it down around the mid to the late game. But for Mauryans Royals, the early game is really important for them. So now the bans should be, a bit cater towards the late game. So let's see if that Even the happens or not. first Moran bloom. Royals, the first might be a You should be Marcel, something ashamed for similar not to an trusting Atlas, a yourself. Belleric The as well, night but looks sky like it's going to tells be a all. Hirara, one of the rising junglers right now in the meta. But hey, loving Still the waters Esmeralda run ban, deep. that is too quickly. Esmeralda into the ban scene, so do the Ling. That's because of the buff Esmeralda received. And you can play the Esmeralda into the goal lane as well. So maybe Mauryan Royals are preparing themselves not to have a fighter goal in their opponent's side. But now, first pick about to come in. Mauryan Royals, they do have a chance to go for the first pick roam, or if it's not the roam, then they can try to go for a mid lane, which would be a god, or maybe you can say Eve. Nowadays, okay, no, they're gonna go for that class. So the god might get traded out in the hand of Valiant Goals. So and if the god is coming in, they have a chance to go for the Claude as well. So let's see VG what they're gonna go for. Let's see though. Once again, it is really looking good given the fact that Atlas is definitely good and there is no Belleric coming in for a good comeback. But hey, Esme being one of the bands, I did want to see that being open up given the fact that Uranus is also one I of the didn't heroes cure which the has pain. been I really harness it. being annoyed in this meta, especially towards those junglers who really start with the EXP lane. But William goes in for a Valentina, a classic counter right here, Let them play trying the to get the hero. Atlas I ultimate. will But be in the turn, truth I this feel like world maybe the desperately mage or possibly needs. the EXP could be There's no it as time well. to So chit-chat. far, looking quite good. Morin Royals picks up the god, one of the heroes that has been a signature pick for them. Definitely Valentina, so did the Uranus, and now they might gonna go for the jungle assassin being open here. Nolan being the most strategic assassin nowadays in the jungle area. If not the Thorns Nolan, then remain, having a should Valentina, you can petals actually try fall. the Harley. But no, they're gonna try out a Lancelot here, I've been which is waiting for too actually a long. bigger bait they're doing here because the Atlas does have the Strumble. The God is going to Come give you a on, lot of Dexter. stuns, It's our Mystic showtime. Projectile, and all. So you need to prepare yourself against this kind of draft with this Lancelot. And there you go, 2 man on the Claude, Carry, both taken out. Or maybe focusing on to the next goal lane, that is the Moscow Beatrix. Ooh, the Moscow should be there definitely onto the list given the fact that it is one of the good hero and Vinland Ghouls can get used for a Moscow. Now the split push They call potential me a really hero looks because good I with the saved my Moscow, so nation why from not falling go for apart. something like that? Looks like it's gonna be a YSS. Another classic respect band coming in. Morin Royals, I feel like during the warm-up there is like a lot of players who have been practicing the viruses and few of them really pulling up with a maniac and savages as well. So not to give that kind of a situation, it is already banned out. But for Valiant Ghouls,
they True love can still get like blood. countered a bit. So I'm kind of curious to see what they will be going forward to. Valiant Ghouls will have to think after the Carmilla ban what they will be trying to pick up. One option they could go in for, okay, was expecting a Khalid, but that's going to be a Badang onto a Rome. Really like it, but I feel like the Lancelot itself won't have enough space around the walls. Let's see. And definitely, maybe the Badang thing is to secure the Lancelot, but then you see the Yuzhong and Atlas already been there. Or maybe the What's Badang is your the name, insert pick so boy? that the Nolan or Suyu will not come in. Need And some there you go. stitches? They're I not can going to go for a help. Suyu or Nolan. They want to treat it with a Palman and the Melissa coming in. The Melissa in this meta, I'll say, is not a go-to pick hero, but still it works. Like the attack speed thing, it works. It's not the Mia, the Hanabi, but in the early phase of the game, you can play safe. But into the late phase, when you will get the strike, when you get this damage spike into your hand, you can actually, torment down some heroes out from the Valiant Goals. The last pick from Valiant Goals is actually a crazy pick around there. It's a Brody, a double-edged sword, and Yeah. this pick might work so good if it gets the stack, so bad it doesn't. And now I feel like Valiant Goals, they are kind of not having much burst damage into the magic scene, so they might get fall down in that way. If not, then the Brody and the Valentina, if it works well, the Valentina set with that Atlas Battle Links, if it goes well, then Valiant Goals will actually have a getter draft against Mauryans Royals. Let's see. I mean, draft is complete. It's more on to the execution now. Yes, sir. With that, let's go. Let's see how the teams will be trying to get it on. We are all set with the draft. This is the draft, ladies and gentlemen. And on top of that, the teams are definitely in for a ride because this is again a best of three series. Teams are here to practice. That's going to be the main goal before you go in a tournament. But with that, into the land of dawn, here we go. Let's go, Ashtazy. Who do you think was going to be the first blood? I think it might falling into the hand of Mauryans Royals because look at the draft. Like their draft kind of crazy, and at the same moment they have like early game into their hand, not into the goal lane, but rather than goal lane, if you see the EXP, the Yuzhong might gonna give some starting trouble to that Uranus. So do the Balman here. I don't feel like the Lancelot will pick the first blood. It might be the Balman or the God. Early start, you can see a little bit of poke coming in, but down into the roam this time. Going to give a lot of sets, but at the same point of view, you can see the Valentina is actually playing so safe. Definitely true. Want to have a bit of a safe space. Victor, on the other hand, is almost taken down by O2. O2 playing it safe beyond the fact that he doesn't want to lose his flicker so early on because Legit Sensei is right there as a backup. Now, taking this timely decision from the Brody is going to reward him, and that is definitely a good thing that we have witnessed. No first blood coming in, but onto the mid, I do see a bit of a pressure, but that's just gonna dissipate very quickly. That's why I said just to the goal lane, you are not playing the winning lane, and you'll have to play a little bit safe. So there might be a chance for Team VG to actually get the first blood from the goal lane only. But then you see the Melissa turning out the events, going to play safe. At last goes in for the bonk. You're going to use the Revitalize, but not going to survive. First blood, Sanford it is to get into the hand. And we're going to see that fist wall coming in there. Little bit of strumble, but no. Will be retaliated back into the turtle zone. Let's see. Puncture years. Phantom execution. Retribution. Kenneth got the turtle. And that will be a kill on the Japanese guy. Slain on the Kyoshi. Sanford got another 3 for none with the turtle into the hand. Team Mauryans Royals. What a start. What a start indeed, but they are not stopping it in. That's going to be the Barang flickering out of the way, and another buff stolen down. Lancelot might not be on time, but he is still trying to get something right there because the Yuzhong has jumped in. On top of that, Kenneth is definitely getting it in. But Atlas, crazy set coming in. Kyoshi will be taken down along with Cyrix right there. Sanford doesn't stop there. So close right there, but no, he is out of the way.
three people caught in the way of the Fatalings, and then you see the follow-up with the bonk from the Balman. I mean, definitely that too. Every event, Pitchy, is happening at the jungle area of Valiant Goals. That too, prior 5 minutes lesser time. That 30% damage you're getting into your way because of this reason, but they're still taking on the fight. This is the aggressive approach from the side of Team Mauryans Royals, and they're actually getting succeeded with it. 5 kills in their board, turtle in the hand. So everything is getting settled for their side in the early phase of the game. Valiant Goals have been winning, have been smashing a lot of teams with a one-sided way. QE has been the victim. We have seen Team Godfather has been the victim of VG's trap down. But this time you're playing against some big team as well. This is Mauryans Royals, who also known for crushing out other teams. So you have to play a little bit, strategic, a little bit macro-centric kind of game. Or if not play like that, then you might get outplayed by them. But here, fight on the start is a well start for Mauryans Royals, I'll say. Second turtle about to approach into the land of dawn. What do you think, Pitchy? This time, Mauryans Royals or Valiant Goals? Before that, a little bit of fight coming in. We're going to see the flicker comes up from Legit Sensei before the turtle. He's going to use the Mystic Gush as well. But, Mystic Gush CD is a little bit low. That's true. So he's gonna have a bit of an easier time right there. Okay, Turtle goes into the hands of Kenneth. That's just right before I could answer your question, Ash. But Team Mauryans Royals are holding on to the advantage they have. Now they are not forcing in the fight. Even they know that they are in the advantage. They could push it down and possibly take down the turret as well. So far, Melissa playing it safe. There's a bit of a pressure at the top lane, which is quite looking good. And we'll have to see how the mages will be getting a set, especially the Valentina, because she has picked up the Atlas Ultimate, and I do want to see how it's gonna get executed. Eren, he's just looking for the set, but he doesn't want to take one person with him. So waiting it out, I do believe there might be a surprise gang coming in on either of the lanes, possibly the top, because the pressure, especially from the Badang, is just not stopping it in 1 minute for the turtle. Plus, the teams are not fighting. 1 minute for the turtle, and the teams are playing safe. This is VG's approach against Mauryans Royals, because they know, like, if we will rumble it a little bit more, then we might get targeted down by them, and with more kills into the hand of Mauryans Royals, they will having more and more goals. So it's better to stay calm, to stay back, and to play safe until we get the spike into a hand, because we're having heroes who does need the snowball. We cannot throw it out there. Okay, thrown rose, but it was away of the position, and that will be off guard caught into the hand of Kenneth's bonk. He got the kill there, and now they might gonna go for the Brody. We're gonna see the shots coming in. Melissa with the ultimate. We're gonna see the attack speed as well, but shot. Oh, he couldn't manage to give it away. Flick up, but no, you're not gonna survive. Easy kill comes in. Battle Links, Valentina, use it out there. Kenneth comes in for the bonk. Gotta get the mark out of the Balman. Onto the Badag, and then he finishes it with the Valentina's trade as well. 3 for none, and the turtle is on. Team Mauryans Royals 9 for none onto the scoreboard, and third turtle will be uncontested, Pitchy. My goodness, look at the sustain coming in from Kenneth. That is just not stopping it. And on top of that, they are just making sure to push it down as much as possible. Not quite sure why, Melissa did pop her ultimate quite early on. Understandable, she was kind of quite low, and it was like an intimidating factor for the Brody. But Valentina, oh, what a great set as well. Eren did his best too, but he survived. Like, the members right there did survive it out. Valiant Ghouls are not in the lead. They are not able to find the lead that they are missing, and this is what I always talked about. Mauryans Royals, if they have the early game onto their hands, just as we have seen them taking the first blood, plus all the gangs, and imagine it's not even 5 minutes into the game, and still Lancelot's buff is getting stolen. That is something very, very aggressive moves coming in, that too before 5 minutes. So let's see if Mauryans Royals are able to keep this and not open up any mistakes for the other sides. We are yet to see a major way of
the turrets falling down. It's just the top as of now. Maybe there's going to be more coming in. Zyrex, he's just stacking it up, but knowing Kenneth as well as Aaron, they are just slowing him down. So far, looking quite good. Love how once again it's going to be Valentina waiting it out for the right moment, and she is perfectly going to time that moment right after Atlas. The real one is going to pop it in, but wait a minute, there's going to be Kenneth taken really low right there. Still manages to find one kill, possibly going to go for two, but that's going to be the Valentina down. A 2-for-1 trade when you're falling into the trap down mechanism of 4 of the members from team VG, and then you got a tier in the bot and a tier into the mid as well. I mean, successful trade. They just got the Ballman, the jungler of Mauryans Royals, that too in a time when the Lord is not being there, so Richie Holder is not so important at that moment. And at that point of trade, team Mauryans Royals get 2 structures, one onto the bot, one onto the mid, expanded the whole map, then 2 kills as well. I mean, I'll definitely say 11 won the score. Goal lead is kind of 5k, and they already have all the outer tiers in the 3 of the lanes. So it is Mauryans Royals going fast and going so well with the macro and the micro as well. So definitely you need to focus on some things now. Lancelot do being there, but onto the opposite side of the lot, I don't feel like you're going to contest this lot out there. Easy lot, uncontested one coming out from Mauryans Royals, and I believe that's the plan is for, because if you're going in, you might gonna go for the gamble, you fall it out, and it will be going as an arrow onto you. So it's better to stay back and to focus onto the defense to the lot. Agreed. And with that, we will be seeing the lot jumping in. Talking about the items a bit now, there is very much a big goal difference. Like, oh, you can see between the EXP laner as well as the tank from the Mauryans Royals. So, if this is the biggest gap, Team Valiant Ghouls really needs to get their farm up, really needs to make sure to get a bit of a lane freeze as well, because Team Mauryans Royals are trying to sync it up while they are positioning every single member right there in every single lane. The more turrets Team Valiant Ghouls lose, the more problem they create for themselves. So far, there's going to be the Holy Crystal that's going to be save it up. Kenneth as well as Sanford really tried the best to take down the Urans. Not a very good attempt right here, but hey, we still give it to them because they have taken down the Holy Shield. You can see the way the burst, which is not having from the side of Team Valiant Ghouls, is actually pointing out a lot of fault into their team, because whenever the set is coming out from Badang, nobody is there to go for a follow-up. They don't have a chain CC, they don't have a proper amount of magic burst. This is why they are not clearing it out with a proper finishing. You're waiting for the Brody to get the spike, but it would be late. Melissa will have the spike as well. Puncture onto the minion waves, but now gonna clear it out in the mid, and into that Lord marching in. They got 2 tiers on the bot and onto the top. Now it's just the inhibitors being there. Holy Shield out from the bot. Doesn't matter, because during the second Lord, you might not have the Holy Shield because it will be past 12. So yeah. Valiant Ghouls, I believe the main thing they can do right now is a proper wipeout kind of thing onto Mauryans Royals, so that they can get some bounties onto their hand. And apart from it, they can also try to go for a lot, because you really need a lot to actually open up the map from your side, your point of view. If you're not opening the map, if you're not opening the tiers, then the pressure of the lane due to these minions will be higher onto you. You have to focus on the lane clearance. You have to focus on to recuperate, you equalize the goal, and you have to focus onto the team fights as well. Let's see, what is it going to be? Valiant Ghouls still struggling to find something right here. But as for Mauryans Royals, they are very much comfortable. They will be trying to get something more out of this. Kyoshi really trying his best so that, teammates will be losing up their spells, the enemies, because it is really important if the team Valiant Ghouls wants to jump in. Before that, we will be witnessing the fall for the second Lord. And with the second Lord, definitely
very curious to see how the team is going to work it out. Now, again, Kiyoshi can jump in. He does have the puncture. He can work it out with it. But the problem is the space is not getting very good. Zyrex, he tastes the fatal links right there. And Kenneth is just going to be the finisher. Now, despite the jungler Kyoshi being onto the top lane, not quite sure why the team was taking that decision to actually go on for a distraction, because either of the way, Melissa was top, like right after the Lord. I'll say what a phenomenal performance from Valiant Ghouls. Team Mauryans Royals. Because every time they're going for the CC chain attack, they are succeeding onto it. Even if it's a Badang, even if it's a Uranus, doesn't matter. They do know they have a proper lead, proper damage spike, and now they're utilizing it without any fear. Puncture, thrown throws, but nothing gonna happen with it because you don't have the damage. Phantom Execution being used at this moment, but he's getting cornered. He's getting stressed out, and he will get the Sapphire into the air as well. What a momentum shift into the hand of Mauryans. It's gonna go for the engage, a double for the god. Legend Sensei marking it up. Kenneth on the way for the bonk, but not gonna have the energy to take down anyone from here. Lord thrashing into the into the bot tier 1. The bot tier 1 still survive. Minion waves coming in. They managed to take down the tier 2 in the mid. The holy shield pop off. And now that will be the exposure to the Nexus from both the way, because the mid lane is also getting thrashed out as well. The minion waves gonna get into the war. And this will be a strike onto this Nemesis. And they're trying to lock it down. Legend Sensei goes in for the Mystic Gush, trying to take out the minion waves. Fatling's connected, Godlike secure. Zeiser falls down. The killing spree onto the Parati. Into the meantime, Lancelot got a kill though. Throne Rose, double for the Lancey, but the base will not get spared. And the phenomenal win will comes into the hand of the side of Team Mauryans. On the first game, they will start it with a lead, 1-0 into the series. And with that, they claim the victory in the spectacular fashion. Mauryans Royals, what a game, what a good game that they have shown us tonight. Now, again, not giving anything for the enemies was such a great way to say it all. On to the other note, look at that, the team it's going to be Legit Sensei picking up the MVP. It's kind of like a bit surprising given the fact that I felt like maybe it was Kenneth, but hey, it's all good because this was the team which has won it up. On to the other note, I like how team Valiant Ghouls had their draft, but they were lacking a bit of an early game. If they had something like a Lilia, a bit of a hero which could have been slowed down, or plus the damage, or even a Valley could have been it, because the Balmond, I think that was the point, because Balmond was unpredictable, and since there was a bit of an assassins off, Valiant Ghouls were left confused. I'll say the decimation from each and every member of Mauryans Royals in the early game is really incredible. They managed to thrash them out till the late phase of the game. They know like they don't have the proper amount of magic burst. They don't have a proper amount of CC chain. Even though they're going for the setup, nobody is coming up for the follow-up. They're waiting for the Brody to get the spike. So utilizing all these factors, taking down the tiers, opening up the map for them, and then having the lead and taking all those macro out from the hand of Team VG is actually a win-win situation for Mauryans Royals from the very beginning of the game. And now it's time for them to actually go in for the second game, which is actually a match point for Mauryans Royals and a do or die for VG. But we know VG, after losing the first game, or after winning, they win sometime the first game, but with a very much luck. If you remember, that's against that QE Zenith. I remember that fight. I just came in. You and Solsky were casting. I thought it's a QE game. They're gonna win this no matter what. Then I come 2-0. How come it's possible? I saw Yeah. the win past 24 minutes. Valiant Ghouls managed to take down the game into their side. So I believe there is a huge chance. 90% of the chances are saying, Pichi, that this series will end up with a third game decider. But the way Mauryans Royals showcased us the first game is really
setting all against the odds. So definitely, Doctor. if Valiant Ghouls can actually, perform well, or they will just go for something like 2-0 clean sweep, accepting the 2-0 clean sweep against Mauryans Royals. Oh, they're really curious to see how the teams will be working it out, given the fact that teams are really in for a ride. Valiant Ghouls, though, nothing short of the draft class game, but they will have to work it out onto their teamwork. I do believe they do have a bit of their new players onto their head. Not quite sure if they are new or they have just like changed up their IGN. But with that, ladies and gentlemen, into the second match. Here we go. Valiant Ghoul having the first pick right here. They can go for an Atlas this time around, Nash. Let's see what they will prepare themselves for, because last time giving out that Balmond in the trade of the Lancelot was not actually a good choice for them. They did not think about it. They banned the they picked the Lancelot. They went for the Badang. You They should thought be like ashamed there will for not be an entrusting assassin yourself. coming in. We can ban the carry right now, but then the Even the Balmond comes first in as the bloom fourth pick for Mauryans Royals. fails. Respect ban. Let's see what could come up. You can see the first ban onto that Eudora, second The onto that night class, sky tells restricted. all. Mauryans Royals roam. Esmeralda getting out as well. Mauryans Royals are going for the same picky bans. Last time also they banned the Hirara, Esmeralda. Third ban, I feel like it's it onto the God or the Valentina. Because no, Belleric open though. What do you think? Belleric into the ban? Should be banned off. Like, come on. If not, then we would be seeing, a Belleric versus an Atlas kind of a situation. But Mauryans Royals, though, they will have to think twice and they will have to draft a bit around their Belleric as well. But there you go. It's going to be the Belleric getting banned off while we are getting the first pick. Atlas most likely to be coming in right there. But other than that, what do you think, Ash? By thy wish. I mean, it's banned. I was Guided actually by thinking about Lanterns Jushin. I don't know light. why. I was thinking Oh. Ray, and I just thought Oh. like Jushin comes in my mind. Then I don't know why. But then I was feeling like, why the Jushin? Jushin is not in the meta right now. You cannot use it properly. They have a lot of counters for the Jushin, so you have to play it safe. But they're still gonna go for the Jushin first pick, and that class was banned. So that's the reason they didn't go for Yeah. it. Belleric at last. Both the things are so annoying in this meta. You need to ban it. And the Belleric is a flex hero. You can use it in the EXP as well. So you Still have to waters run think deep. much more about it. Lenga, it was open. It comes in there. If the Eudora would have been open, Pichi, just There's have no it. They time would have to gone for this chit-chat. 2-pick Ling and Eudora. But God, Legit Sensei, love to play this mage. They're gonna go for it as well. Sora open right now. Valiant Goals can actually go for the EXP Sora. If not the EXP Sora, then they can try to go for the Freya into the EXP so that the I damage might not EXP be a combo will legend be there. man, but I And if do not know my this, then the trade. Barats. Yes, the Barats coming in, and I'm damn sure. I don't know why. I feel like it's a Barats EXP. And if it's not a Barats EXP, then I don't know what they will pick in the jungle, but it True will love be is like uh, blood. Carmilla. Okay, that's quite good though. But you have a lot of risk because they're yet to pick their Roma, and they can go for something like Matilda. But no, Ling, God, I don't feel it's a Matilda. It should be something sustained. Minotaur is my option. Minotaur will Oh, finish off what was left Minotaur. undone. Let's see if that comes in or not. Once again, I do love a Minotaur, given the fact that it can give out a very good combo. That too against a hero like a Carmilla, the Barats could be really working out very well. Let's see how is it going to be happening. Back onto the band section, there's going to be a bit from Warren Rolls. There's going to be They call me a assassins hero getting because I banned, saved my and nation from. there you go, Oasis I've been thus waiting for gets too banned long. off. Now Valiant Ghouls, what are they going to go for? Pain Okay, is the Claude maybe proof that next. I'm still alive. It might be the Claude. Brody being taken out. Ishinshin as well. Carry banned from the set of Valiant Goals. Last ban about to come in. That might be the Claude, as you mentioned, or the Moscow. If they don't want to give the Claude into their side. But they Need do some have the first stitches? pick I and the can second picking help. phase, so banning out the Claude will actually give you more chance. And if they're banning the Claude, they might gonna go for the Harith. So it's a Melissa. It's a respect towards Victor.
I mean, last time the Melissa comes in, so that might be the reason. But if you're banning the Melissa, they can go with the Layla, they can go with the Mia. There's a lot of heroes like that in the Rumble. They can go with the Hanabi. So Melissa ban, I don't prefer it. I prefer a proper counter for the Melissa rather than banning out. You have the Irithel, you went for 10 the years. Brody, it was your fault. Four teams right here will have to do some thinking right here, because the team that they are just going in for is definitely crazy. Let's wait and watch. It's gonna be a Terizla, a bit of a team fight, trying to combo it out with the Minotaur, which is Welcome to the again a greatest very magic good show of pick. all Was not time. Let's expecting go. it, given the fact that you could have gone in with something like a Uranus as well, since you have already a lot of crowd control coming in from the Minotaur. So far, loving the pick of a Hiritel as well, because hey, that was a absolute surprise pick that I was definitely not in for. Because hey, Irithel will be needing a bit of the items, and I don't think that's a very good way or a hero to pick against a Ling. I mean, I suggested the Irithel for the last time against the Melissa and the What? Balma, not this time. So, and I even suggested a Harley last time because you had Valentina. But now into the phase, the Hanabi coming in. I told you Victor can go for the Hanabi if you're banning the Melissa. But this time, high stakes on Mauryans Royals. They do have a good greater drop, but still, the Curse of Blood with the Irithel's AB crossbow will actually be a big problem. But then comes the early game. It's more into the hand of team Mauryans Royals. They will try to thrash out this Irithel to get the damage spike into the late phase of the time. That's what the strategy should be. Let's see what will be happening. We'll be entering into the land of dawn for the game number 2, the match point for MR, and the do or die for the team Valiant Goals. Let's go. Let's go. Really curious to see what the teams are going to put up for us, because hey, this is definitely gonna go interesting. With that, into the land of dawn. Seconds till the Here enemy we reaches the go. This battlefield. is going to Smash be them. Mauryans Royals having one score All onto their troops hand, deployed. very close towards the match point. But the other side, they need to get 2 games onto their hands. Will they be able to do it or not? Is this what we are here for? With that, I do feel like having Kyoshi onto the assassin is something works out really well. Despite last game also it was one of his strongest hero, yet he did not get any chance to jump in onto the team fights. He did not get any chance to work out onto the kills as well. But this game with an Harley, that chances increases. Definitely. The Harley thing is actually a good thing for the macro thing, but look at on the top side, they're going to go for the Hanabi. Early Aegis just got beaten down there. That's a good start, I'll say. Like, they want to play the way last time Mauryans Royals played, into the goal lane, trying to make sure the Brody will not get enough damage, enough snowball. This time they're gonna do it with the Hanabi. But Hanabi, even though not having the snowball in the early game, if she will make the things in the late phase, the items in the late phase, she will be invincible again. So you have to make sure that someone should be there to take down the backline, and it should be the Harley who will mark down that Hanabi in each and every team fight. Because if the Hanabi is there, then they do have to sustain chunky frontliner, that is Aaron onto the Minnow and Sanford onto that Terizla. So they will stand out, and Victor will be the one giving out the backline damage. Oh, let's see though. The teams are definitely plotting in. Top lane, there seems a bit of a pressure that the first blood might be coming in. And talking about Victor once again, I feel like the teams will have to look after him a bit, because early game he will be needing that kind of a support. But what about Celestial Twilight? 2-1 situation on his hands so far, and he has to get level 4. Nobody does pick a fight yet or having a first blood yet into the game. The turtle number 1 coming into the land of dawn and is getting danced or started from Mauryans Royals here. We're gonna see that reset is also happening there. Both the teams want to try on the first turtle.
Barat's going in there for the zone. A little bit of poke coming in as well. Terizla trying to pick it up onto the Barat. But there is a little bit of engage comes in with that. Minotaur goes back. Flicker. Baited. Crimson Bacon comes in. They're chasing down the middle. God falls at the hand though. But now they're quick away from the turtle pit. And this signals that it will be an uncontested total, but no. The fight is not yet over. They're gonna go for it, and the first blood secured with the Barats going down as well. Turtle secured. 1 for 1. It's a jungler for the EXP laner with the turtle into the hand of VG. Crazy. That is going to be really looking quite good. Now onto the top lane, the pressure is definitely building up. You know, the focus is there. A bit of a stun. That's just too much for Legend Sensei. He falls down. Minon and Fury trapping down Zyrex right there. Now, but again, there's going to be the Zushin playing it out a bit safe, trying to get a setup for his teammate, the Kyoshi, but he's just not gonna enter in. So again, 2 for 2, Ash Daisy. And on top of that, the teams are just looking for objectives this game rather than those kills. A 1k economical wise lead for VG, but not matter much because it's just a 1k, so it can get easily equalized from Mauryans Royals, just like the score. 2 for 2, as you mentioned, obviously, because that's what Mauryans Royals is doing. They don't want to give up. They know, like, even if we are not having the first turtle, Ling does mistake out that turtle fight, but still, doesn't matter. We can, you know, make our comeback. Now, they're going to go for the Barats. Barats is getting chunked down onto the top side. Off-cam kill just got captured there. Jushin with that onto the Minotaur. I don't know what was the purpose of this Tempest of Blade, but now you are in a trouble. You don't have the Tempest of Blade. You're getting chased down, and you're gonna get back to the safer side, losing out your blue buff. Oh no, Mystic Gush comes to the way. You gotta go for the blue buff charge, and now the Curse of Blood comes in as well. Heavy crossbow. O2 got the kill there, and that will be a double now. Minotaur, he finds a kill on the Barats. Aaron, he somehow take the trade out, but it's the victory holder falling second time down. Oh, look at the bong there. Victor goes down. He comes in for the follow-up, but couldn't manage to sustain that heavy damage coming out from the magic burst of this Harley. Oh my goodness, Harley definitely having a good streak right here with the kills as well, and that is definitely going to unlock a snowball potential for him. So far, that is looking quite good. Other than that, look at this highlight. You know, what a way Team Valiant Ghouls are going in for a flank right there, and on top of that, here the teams really got a good streak of kills as well. This is just going to, you know, set it up really good for the mid to the late game, which we are shortly going to enter. Now into the mid game, we'll have to see top lane Victor playing it too aggressively will be punished for that. Valiant Ghouls are not opening any cracks for the side of Team Mauryans Royals this time. Indeed, and that's the reason they are right now having the lead here. And if they will focus on the constant pressure they did from the very first of the game, they might gonna give a comeback for their team. They might gonna take the game, the series into the third game decider. A little bit up taunt with that Lantern Flare coming in. Retribution popped up as well. That was a forced retreat onto the onto that Ling, and onto the top side. Victor goes down. Once again, Kyoshi gonna get the kill there. BG. They literally change each and every perspective of the game. A Curse of Blood and Bonk, and we're gonna see that spit and two with the double attack. Aaron, Legend Sensei falls down, thrashed out into the air. Now the tormentation is happening. Heavy crossbow being used, and we're gonna see the killing spree out of the terrorist line. Still sustaining, is going back. Link gonna go for the wall, but not gonna crash it onto the Inethel. Well outplayed by her. O2 gonna get the kill. And into the wave, Victor, he is surviving at a nick of help. That was another deadly catch. Deadly magic. Apology. And structure falling down, Pitchy. Table turn. Oh my goodness, that was definitely high risk right there for the side of Team Valiant Ghouls, despite not, you know, opening up anything right here. But hey, they did. They are
taking all this advantage, and on top of that, Mauryans Royals, they are lacking behind. They will have to look out for a bit onto their sides as well. Again, really good team fights from both the sides. They're trying to invade the blue buff, but it's more like pressure is getting created. Turtle secured by the Jushin. And Ling is not having the best day of his life. He's not getting the snowball as a jungler, as an assassin jungler. Did he got okay? Did he get the blue buff? Yes, he is. Okay, I like how there's going to be a bit of the lane's gonna get lane pressure that's gonna come in, because once again, Valiant Ghouls, when you are in such a lead with such a big goal difference gap, you will have to push it down. You will have to try to do the same as quickly as possible, because this is a very good way and how you can be winning this team fight, which is quite important. Now, once again, you do see the side of team Ghouls, but Kenneth, he has to get out. Oh, he got strumbled there, but he somehow managed to go back. The recall got halted down by the Irithels, a little bit of poke. And this is a march to victory, Pichi, because now the same situation which happened last time for VG is right now happening for Mauryans Royals. All the outer tier secured, all the macro turtles, neutral objectives secured. Kills are higher into the mark, 11-3, and they do have a goal lead. Definitely a very good goal lead that we are talking about. The teams are really, are in for to open up the second tier. Now again, the second tier are on like a 50-50 of a health as we speak of, and on top of that, they will have to look after it. Terizla is not a hero that is a lane clear hero. You definitely need to put Kenneth right there. Now, once again, this being a scrim, so definitely Kenneth is in for a good practice run as well. So let's see what the teams are plotting it in. There you go. Valiant Ghouls are definitely putting the lovely pressure that I do want to see. Other than that, the lot's gonna be taken down as quickly as possible. That's gonna be Valiant Ghouls for you. And as you are right, we are definitely gonna see a gate number 3 at this rate. I told you, it's all come down to this one game, which will be the third game. No second chances, no tomorrow. This might be a game 3. I'm not sure about it yet though. Mauryans Royals, they can come back. They do have a Hanabi. They do have the late game approach for them. But look at it, VG is not giving them any chance to make their perfect comeback. Even not to the flinch. Gonna go in for the deadly magic. Comes back with a hat, and not Victor going to. Crash out by the deadly magic's damage. He got to survive. He got sustained around it. Holy Shield is getting pressurized with the lane pressures. Lord are marching from the top lane. They're trying to defend it up with the Holy Shield. We're going to see Sanford, Kenneth trying to pick something for the team. Irithel with a heavy crossbow goes back easily. And now all the way the mid lane, top lane, bot lane is getting invaded, infiltrated. Sanford, he goes down unstoppable. For the Irithel, O2 is right now cooking the whole game of VG versus Mauryans Royals. We're going to see the Tempest of Blade coming in. Skypiece have walked it out. Shut that happened on him. Legend says they got the final blow. That will be a 1-4-2 score with all the Holy Shields falling down. They managed to succeed it with the defense, but then here it comes the Nightmare, Pichi. Second Lord is about to burst into the Land of Dawn. And I don't think VG is going to give a chance to come into the pit and to try for a contest for Mauryans Royals. With having a deficit in the goal, with having a deficit on the damage, with having a deficit on your items, you're not going to manage out the contest into the pit. This is going to be a little bit heavy into the hands of Team Mauryans Royals. Now, again, if they do want to take out the jungler, Kiyoshi, or, possibly the back laner such as the Irithel, especially the Irithel, because that is much needed as of now. And on top of that, they are like trying to give
all of it. Even in the highlights just now, you did see how they are just not leaving open O2 in any chance. And this time around, I would love to see that again as well. So far, really looking good on the positioning coming in from both the sides. The teams are playing it a bit slow, which is kind of not expected from right now. I was not expecting that, but hey, this is a bit of a discipline is definitely needed. I'll say the Urdu guy is actually doing good with that Chushin. I mean, having the Sky Piercer, having, like 2 kills in your hand. Oh, what just happened? Heavy crossbow connected inside the tier. Now gonna get a double there. O2 got cooked. Finds the double. Going for a triple and crossbow. Cross of the blood. Will connect to it. The triple will get secured. They're gonna go for the flicker. And that's the chew and spit comes in. But into the fountain. Gonna use that Mystic Dash. We might gonna see the end here. They're trying to go for the final finish. They're chalking down the base there. We're gonna see the deadly magic connected. Mega kill secured by O2 got cooked. That will be a 4 kills wave for this man, and nobody will get out from the side of Team VG after an intense fight, after going inside the ground, after giving out 4 kills for the scoreboard. They're still surviving. Tier 2 falls down. Lord into the way. This might be the end. So close for Valiant Ghouls to end it all up, but no. Now again, Kenneth, though, this time around has been playing it so aggressively plus so passively at the same time as well. Now again, he is trying to find his way in, but at the same time, it is just not working out. Once again, the minion pressure, if Team Valiant Ghouls are able to keep it off, but wait a minute, Kenneth, he pops as the Tempest of Blade in a good manner. The sun, and what a timing that Eren was there to give him a bit of, the heal. Yep. But now you don't have the Tempest Blade. So do 4 of them that does have their ultimates, but not gonna work. Mino with a proper set, kind of giving some time for the team. To buy some time, but then O2 got cooked. It's still arising there. He's not even down. And you're gonna use the Mystic Gush to clear out the lane there. Okay, we're gonna see the engage happening. Slither of HP. Victor goes down. Urdu guy gets the kill there. Eren falls down in the hand of the Carmela. And unstoppable secure. Legend Sensei falls down. Celestial Twilight will be the consolation kill. Double onto Zyrex, but you're not going to survive to see, to defend the base, and the end will be there. We are going for the game number 3, the decider game. Both the teams are so goated in the Algambo Esports MOBA Class Series that they refuse to defeat, to get loose with 2 games. They want to take it for the last game. They want to utilize each and every possible games of a BO3. And now, Pitchy, the end, the Verge call is here. So let's see, what will that game bring us? The action will be there, but I'm not sure who will be taking on the throne, who will be taking on the win. Definitely. Really curious to see, because it's going to be the side of Team, they really pulled it off what Mauryan Royals really did. That's going to be Valiant Ghouls for you, really hyping it up for themselves and making it game number 3. Now, game number 3 is going to be mixed reactions coming in. So, definitely curious what they are trying to do. Other than that, the teams are quite ready. Now, Iratel is one of the heroes where is very conditional where she's going to fight, and in this match every single condition was met for her. Definitely. What a game it was, ending with a 3rd game call for both these sides. I knew it from the very beginning. The way these 2 teams played last week, it was definitely, I was definitely sure that if we have a match for these 2 teams, then it will take us to the best BO3 series of Algambo Esports, just like Godfather versus Mauryans Royals, just like QE Nova versus QE Zenith kind of thing. But now, entering into the 3rd game, before we enter into the 3rd game, Pitchy, there is a lot of heroes this time who are going to get respected, mainly O2's Iratel. Like, you went for the Iratel last time, not to the last time when the Melissa was around you. You could have went to that pick because it's actually counted the Melissa, but you went for a Brody. It doesn't got the
snowball, and that's why you got thrashed out. Into the second game, you tried the same formula being used by the side of Team Mauryans Royals to actually go in for the goal lane, to pressurize the goal laner, to not give him any chance to get the snowball, and to mark it down to till the late game, and you will have the damage. That's what happened. O2 got cooked. He got the damage. He was the sole carrier of the team. I mean, I'm definitely going to say that the follow-ups, the action, the chain CC, the execution was so good. But O2 got cooked. He was finishing it all with those heavy crossbows. So definitely, this game 100%. number 3 will have a lot of respect bans. Atlas, Baloric, and that's a Hirara on the first ban. But is there any chance we're going to see the Jushin taken down? Ooh, Zushin, I feel like it is a must as of now for these teams to go for it. Because, hey, we have seen such a Still fantastic waters run performance deep. coming in just a match ago. So, it is definitely going to get respected. But before that, there's going to be a Ling getting banned off because they do know and they do realize it might be Kyoshi picking it up as well. So, other than that, the teams are trying to go in for a Night Paquito. But sky you know, tells Paquito has all. been such a hero from the side of Team Valiant Ghouls that they don't want it open. Definitely. Ling. No Ling this time for Mauryans Royals. They got the first pick in their hand. At last being not around as well. Beleric is open. They might gonna go for the first pick. Beleric, of course, they will. And this is absolutely giving a chance for Valiant Goals to actually go for the Barats into the EXP. So do the Valentina, because the Valentina is open. You can try the Valentina Time to go to the against the NFT Valeric. The show Valentina do for works. If some you're not taking the fun. Valentina, they might gonna take the Valentina for their side. Lilia, okay, they're gonna go for something into the true. I mean, something in the burst. Uh, Not a Lunox, but it's a Lilia. We do have the black shoes for the revival. But then I think Valentina's. It's a Valentina's game. You could have copied out that Wrath of Dryad, and same effects would have been there for from your side as well. It's okay. They want to try something else. It's a Scrim, but it's a do or die game, guys. Valiant Goals. If they are losing, the series will eventually goes in the hand of Team Mauryans Royals. So yeah, you need to pick it up with a proper, strategies and So, synergy kind of thing. But Rome, what else could be there into the room? That class is banned. There's a ban. Badang. What do you think, Badang? No, Barats into the EXP. ooh, If you are going for the Barats EXP, why not the Valentina? Like the Urdu guy, he plays Valentina. He played the Valentina on the first game. yeah, he played it out well as well. So I do feel like that hero could have been a comeback kind of a hero right here into the hands of Villain Ghouls as well. But looks like that is not going to be a pick. So far, Mauryans Royals might be trying to go for Let them a play the Lapu Lapu. hero. I have a feeling, I but will be okay, the they are truth this definitely going to world stick it desperately out with needs. the Yuzhong, one of a very I've good, been waiting for too long. team fight potential hero, which is a good thing. But for Valiant Ghouls, they need to take a check on this carry. What is it going to be? Kirby, Yuzong, good picks from the side of Team Mauryans Royals, and now he can not go for attacks with MM because there is a Beleric. He will try to stop you down there with the True love blade armor is and like with the blood. repel energy, but now they're gonna go for the Caramel again. It's just that everything is same from Team Valiant Goals in the first phase of the pick, just that Sushin Come has on, got Dexter. replaced It's our by show Lilia. time. I They didn't want that cure the pain. insane amount of I burst into harness the mid it. lane. That's why they went for the Lilia. They call me a hero. Because I Valentina saved ban, my nation Kimmy from ban, falling apart. Ishinchin, and the Claude from Mauryans Royals. Okay, jungle. Now, what else open in the jungle? Harley. magic show Gonna go for Harley. Yep, they're gonna go for the Harley because they are literally having the same draft, just like the last game in What's your O2. name, boy? He might gonna go for the Irithel or something else. He's like against the carry, he can actually use the Clint if he wants to, and if not the Clint, then Brody also been an option there. Oh, that's a great quick pick. And now look at the chain CC of the side of Team Mauryans Royals. They do have a Yuzong for the backline in infiltration, hindrance, whatever you can say. Set off, you got the Baleric, slow down, you got the Valir, finish, you got the Bonk, Bauman. And if not anything, then the carry is there for the true damage.
Hanabi, okay. Oh, okay. Once again, you are going to see, you know, Wali coming in. That was something I was expecting into the first game as well, but we are going to get that onto this game. So let's see how it is going to do. And with that, third game decided. Let's see. Let's see. Draft is already done, and a lot of picks are similar this time. Like the Yuzhong being used on the first game, and then you see the first game Balmond into the Mauryans Royals as well. But the Rome, and the Mage has been changed from their side. Whereas Valiant Ghouls have already copied out the whole second game draft with a replacement in the goal lane. They used a Hanabi, which is actually used in the second game by the side of Team Mauryans Royals, and they used Lilia in place of that Jushin. So let's see how this game goes, because both the teams are ready. We're entering into the land of dawn. Game number 3, Heaven's Call is here at Algambo Esports. VG, Valiant Ghouls, straight against, going against Team Mauryans Royals. As you can see, the junglers are going for the aggro. Oh, let's go with that. This is going to be a good game that we are going to look forward to. Now, again, for the team that picks up the, the kills right here is going to look quite good. So let's see what is it going to be. Once again, onto the bottom lane, you do see the Hanabi getting a bit of a support from the Lilia, which is kind of unusual in this meta on how the rotations works out. But hey, not missing your minions is still a way to go. Loving the pressure onto the carry, but at the same time, the teams are keeping their checks onto each other. Nobody's following up the new EXP rotation out from MOBA 5v5, but it's fine, it's fine. They need some time to get adapt onto it. But I look at it right now, no invasion, nothing from the side of Team Valiant Ghouls. They want to play it safe. They want to go for the EXP. Okay, let's see if Sandpod can be taken out or not. He will! First blood secured. That's a quick rotation from bot, helping out the Hanabi in the early phase of the game. Going straight down to the top to take down the first blood is really working well. And now you're going to see the deadly magic comes in. Flicker baited. Carry goes back. Kenneth comes in for the follow-up, but it's just that one onto the scoreboard from VG. That two on the top. Let's see. I love how there is a Barat into the middle lane right here. I mean, getting ready for the turtle. Now all the teams, like all the players, are right here wanting to have it onto their hands. Now it's kind of interesting to see the Lilia did not get a level 4 and will be sharing a bit from Celestial Twilight. Understandable. Celestial Twilight was in the mid lane, taking the level 4, potentially trying to get the first blood as well. Zyrex onto the back lane, getting for Kenneth. Okay, gonna go for the ultimate. Spitted Tube has been used as well. Turtle secured by Kyoshi. They're gonna go for the engage as well. Kenneth goes for the bomb, but that's a beautiful flicker. You're gonna see the deadly magic comes in as well. Black Dragon emerging. Kenneth falls down there. Lilia got the final blow. We're gonna see the trap down comes in, but that's a beautiful sustain from the Carmilla. True damage being used, but he could have managed to survive. We're gonna see the Aegis comes in for Victor, but that will be the O2 as well. And not a single body being taken out from Valiant Ghouls while they took one down with the turtle into their hand. Carmilla sustained that flick of health, managing to go back was a perfect, execution of going back to the base, I'll say. Yeah, that's true. Now again, Kyoshi did get a assist right here, so that's going to be really good. Other than that, I like how the Lilia is working out. Now again, this is what I wanted to see from the Lilia. It has been such a good run for the side of Team Valiant Ghouls with it. Maybe on to the bottom, we might be able to see the same. Kyoshi getting out of the way, realizing that dangers are around the corner. Not a good start for the Mauryans Royals, but they need to, push back something. They need to play safe at this point. They know they do have a Valeric, so they can actually go for the proper engage with the Wrath of Triad then being there. But I don't know, I feel like if you have a Valeric into the roam, you can actually go for the Uranus in the EXP to have more sustain rather than the Dragon. But no, once again, the Dragon is getting trapped down. Slain happened on a Sandpod, and that will be Kyoshi getting the final blow again. 3-0 the score. Still
looking for the first blood, for the first kill. Mauryan Royals, same situation just like the first game, just the opposite teams are getting advantages. Okay, advantages are definitely coming in, but at the same time, let's see how Mauryans Royals will be trying to take it on. To the other hand, okay, Turtle is back, so let's see how it would be working. Okay, you joined the back. Okay, Black Dragon comes in. Wrath of Riot being used right now. Aaron goes in for the engage. We're gonna see the double petri combo. Flicker comes in. Kenneth got the turtle. Flicker from the Barats as well. They're going back without anybody's falling down. But look at that carry. Oh, O2 got cooked. He comes in a perfect timing. Got a kill there in the hand. Spirichu on the carry. He can't survive. He used the flicker right now. He goes back at the safer side. Kenneth, at the cost of a kill, you got the turtle there. And you're still looking for the first kill. And look at it. They got the bigger trade. Legend Sensei goes down. Mid-tier 1 falling down as well. Slather of HP. Sandford being taken out by O2. Got killed. And now Kenneth surviving. Goes for the bomb. Got the first kill. But now he will get taken down as well. Got tormented. Finish. Executed. As well as Aaron into the hand of O2. Got cooked. With a single turtle execution, with a single kill into your hand, you lost 4 of them with the tier 1 in the mid. Exposure to the map. O2. This guy in the early game cooking with that Hanabi. Just think what will happen in the late. Oh my goodness, he's, really cooking right here what he did onto the last game. Once again, the highlights will be up, and this is where all the members were in a bit of a trouble because of the Wrath of Riot, but no, it just worked out well. It was right there. Once again, let's see how team, especially Valiant Ghouls, are trying to in onto the live feed as well. We do see the teams really pushing it in, painting the map red. They're doing the same in the highlights. Yeah, really, like this is the thing I was talking about. Like 4 people getting traded for a turtle and for a kill was really not a good idea. I don't know why they continued that fight at that point, but it was not necessary. Kenneth got a kill as well as you see Aaron going in there. For what reason? There was no reason to go in. 9-1 the score is right now. We got all the outer tiers out with the mid-tier 1 and the top tier 2 falling down there. It's really, the top is totally finished up, and Sandput can't do much with this Yuzhong this time. From the very beginning, from the very start, he was getting targeted, he was getting ganked, and it goes in for the retribution fight. Kyoshi got the 50-50 smiter in the hand, turret falling down from the bot side. They're gonna go for the fight. Wrath of Riot being used, but we're gonna see the killing spree on the Kenneth. Kyoshi got the kill there. You're gonna go for Aaron right now. He used the catch, but now mega kill. Victor falling down, double onto Legend Sensei from the bot to the top to the jungle of the Mauryans Royals. We see Valiant Gold trading the shits of their fear onto them, and they might gonna take this 3rd game to secure the series with a 2-1 river sweep. Oh my goodness, what is Team Valiant Ghouls cooking in? Look at them. Once again, they are not popping it in. They are not giving anything out of this side. A bit of a stun onto the Beleric, and he will be just melted out. It's not over. O2 got cooked. Gets 2 right here. But onto the same note, that's going to be the Waleed getting out of the way. Now he does realize there's a bit of really a good amount of damage comes in for him. So let's see what the teams are plotting in. 3 members down right there in just 1 team fight, just for a EXP laner. So I am kind of curious what the teams are going to do, because for Mauryans Royal to get the comeback, to get the game onto their hands, they will have to play it hard. They will have to make sure that they are not giving anything. But at this point around, they are taking down a Beleric so easily. Like, he's getting melted down like a butter. Like, look at that. Definitely, like at that point, I believe it was not at all. For the structure, you could have given up that structure into their hand. Waiting for the fight. Kenneth, he was looking for the red buff, then he got totally trapped down from everyone. But look at the bot side. Another fight being engaged out from both these sides. We're going to see that slowdown onto the Balman. Higamman up being used, and Go2 gonna get the kill there again.
This man is really cooking right now. He's not getting cooked. He is cooking the whole Mauryan Royals onto the frying pan of the terror. The terror sprayed by the side team Valiant Ghouls. They're raining this terror onto Mauryan Royals. They can't do much. Holy shield. Top one popped out. Holy shield. Mid one popped out. Holy shield from the bot is the only shield right now being present into the land of dawn, into the map for Mauryan Royals. Nobody gonna come in for the Lord. Nobody is going to contest the Lord. Nobody is going to do something for Mauryan Royals. It's just the miracle from the God which can save them up right now. Holy shield. That bot, holy shield. That's the last option. But the Lord is not going to come by there. It's going to come out of the top or maybe out of the mid. Let's see, talking about the itemizations a bit, there's going to be the Beleric with trying to put up a bit of a Dom Ice onto his hands, but the Chastise would be a much better choice against a Hanabi in my opinion. So I feel like that should have been a pick right here, but Radiant very well for the Lilia, understandable. Other than that, the other teams as well, the other players especially, they are also trying to get their damage in. They're also trying to get farmed up as quickly as possible. And as for Valiant Ghoul, it has become a bit easier because they are the ones in the lead. Rising team Valiant Ghouls. They're taking their revenge on the game number 1. Totally thrashing out Mauryan Royals this time. Gonna go for the engage. Top tier 1 falls down. Nexus open. Look at O2's damage right now. Getting sprayed for the Urdu guy. Kenneth goes down. Victory to the hand of the Barrage. Barrage falls down. Celestial Twilight doesn't match a Kyoshi. Shutdown happened, but Legendary Auto Air and O2 still surviving. Gyrus goes down there. Double. But Gyrus locking down the base to get the win away from the hand of Mauryan Royals. Do on the score to finish this series with a victory. Triumph into the hand of Valiant Ghouls here. What a majestic win. What a majestic performance. What a majestic reverse sweep to end the series with a win. Valiant Ghouls are the winner, ladies and gentlemen. And now we will be entering in for the last game of the night, the last series of the night. Before that, look at it, guys. The amount of crazy setups been done by the setup team Valiant Ghouls was the reason for their win into this game. Even though having Beleric, even though having a carry, that did not give them the chance to go into the late phase. They did not give them the chance to take on them. And in the end, you can see that's a win for the setup team. VG, Pichi, you want to say something before we go for the next game? O2 was definitely cooking it very, very well and loved how there was a lot of emphasis from the second game. A perfect reverse sweep worked in their favor, and this time around they have shown why they want to be the winners of the Monday as well. Crazy matches, definitely, Ash. Crazy for real. And now we'll be taking a short break, guys. Pichi and me will come. I mean, no, not Pichi, but I'll be coming back with Shinra, but Pichi will be taking a bid from us. So we'll be coming back soon for the next game. Don't go anywhere, stay tuned with us. And if you want to register yourself for the scrims, the link is open there in our website. Just check it out, guys, and register your team.
स्वागतम बड़क्कम सभी को अलगैम्बो स्पोर्ट्स की मोबा वार्मअप क्लास सीरीज में। मैं टीजी मेरे साथ आएंगे शिनरा फॉर द लास्ट गेम। आज दो नए टीम जुड़ने वाले हैं हमारे साथ एट द मोबा वार्मअप क्लास सीरीज। अभी तक तो आप क्यूई नेब्यूला, क्यूई जेनिथ, क्यूई नोवा, मॉरियन रॉयल्स, मैवरिक्स, गॉडफादर, वैलेंट गोल्स, इन्हीं सबको देख रहे थे। लेकिन आज आप देखोगे दो नए टीम। आज बातें हो रही थी मेरी कुछ प्लेयर से, उन्होंने पूछा कि यार कोई नई टीम आते नहीं है, तो भाई देखो आगे नई टीम यहाँ पर ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स, भाइयों का ई-स्पोर्ट्स बनाम टीम लॉस सरियल्स। देखते कैसा इन दोनों की टीम के बीच में जो मैचअप होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। बिकॉज ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स वो भी नए हैं, लॉस सरियल्स वो भी नए हैं। देखते हैं व्हाट देयर स्ट्रेटजीज, व्हाट दे आर गोइंग टू ब्रिंग अप इनटू द डेस्क। तो सिंड्रा भाई क्या लग रहा है, बैंस पर्टिकुलर मेटा बैंस होंगे या फिर कुछ नया डिगी? आई थिंक जो रैंक्स में ज्यादातर बैन्स होते हैं ना वही हमें देखने को मिलेंगे। लाइक बोल सकते हैं आपके जिस तरीके से एक हो सकता है आपका पकीतो, चलिए बोल ही रहा था, पकीतो हो गया, लिंग हो गया, इडोरा हो गया, हिरारा। प्रोबेबली ये जो बैंस हमें देखने को मिल सकते हैं। हिरारा भी एक बार साइड रख सकते हैं, लेकिन बेलरिक ऐसे जो बैंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें आते हुए दिखेंगे। और चलिए इसी के साथ जो बैन का आगमन है वो तो स्टार्ट दिखेगा। बेलरिक बैन हो चुके हैं, हिरारा बैन हो चुकी है, यानी ये 3 पिक्स जो बोले थे वो तो बैन हो चुके हैं। और चलिए यहाँ पे क्लॉड को भी बैन कर दिया। क्लॉड, जी हाँ, क्लॉड को भी बैन किया यहाँ पर, पकीटो को बैन किया। एंड यू कैन सी दैट कि हिरारा एंड द बेलरिक विल आल्सो बी टेकन आउट फ्रॉम ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स। नाउ थर्ड बैन यूडोरा पे हो सकता है, लिंक पे हो सकता है, बट नहीं, वो चो पे बैन करना चाहते हैं यहाँ पर। चो बैन ये एक रिस्पेक्ट हो सकता है समवन फ्रॉम ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स, क्योंकि हम इतना ज्यादा चो बैन तो देखते नहीं है, बट चो अभी मेटा पे चल रहा है। यू कैन यूज इट ऑन द रोम। हमने देखा किस तरीके से एमएससी में चो ने कमाल का खेल खेला था फैल्कन के अगेंस्ट फ्रॉम ओनिक। वी हैव आल्सो सीन इट फ्रॉम अरोरा वर्सेस ओनिक गेम एज वेल। बट यहाँ पर मार्शल इनटू द लास्ट बैन, बहुत सारे हीरोज खुले यहाँ पर। अब एट लास्ट फर्स्ट पिक गए हो, लेकिन यूडोरा एंड लिंग माइट गेट कम इनटू द साइड ऑफ टीम ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स। प्रोबेबली, लेकिन लिंग के साथ भी दिक्कत होता है। एटलेस काफी ज्यादा उनको बोल सकते हैं कि परेशान करते हैं, लेकिन वैलेंटीना वो भी ओपन रहेगा कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए। अच्छा खासा हमने देखा है कि हर बारी जब भी एटलेस फर्स्ट पिक होता है तो सेकंड पिक की तरफ वहां पे चले जाते हैं। वैलेंटीना एक अच्छा काउंटर रहता है एटलेस का। उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूटिलिटी है वही उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी कर्ज बन जाती है अगर वैलेंटीना सामने अपोनेंट में आ जाए। लेकिन लेट्स सी कि उसकी तरफ जाना चाहेंगे नहीं लिंक। चलिए वो तो आ चुके हैं, और उसके साथ इडोरा, ओके इडोरा के साथ जाना चाहते हैं। वो शायद वो नहीं देना चाहते थे सामने इडोरा, क्योंकि अगर लिंक के सामने इडोरा अगर आ जाए तो एक तरीके से काउंटर रहते हैं वो, और लिंक को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वॉल पे भी घूम के नहीं जा सकते लिंक। और लिंक की अगर सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम मैं बोलूँ वो यही है कि वो उनको जो है कोई भी सीसी जो है ना वो लाइक उनको काउंटर करता है बहुत ज्यादा। और आइटलेस की बात करें तो वो लगातार अपने आर्टिक कोल्ड से चिपके रहेंगे लिंक के पीछे, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकता है। तो चलिए वो तो हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा। चलिए इसी पे जाते हुए देखेंगे हमको बराट्स या फिर जंगल भी जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल पिक में बोलूंगा। और बराट्स की बात करें तो अभी काफी अच्छी तरीके से मेटा पे चल रहे हैं, सस्टेन उनको मिलता है। और उसके साथ साथ लाइक आपके जो सस्टेन हीरोज है ना उनके सामने काफी अच्छी तरीके से चलता है, जैसे कि आप बोलेंगे ड्रैगन वगैरह। इवन आप ड्रैगन से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे बराट्स के सामने। बराट्स का डैमेज आपको उसके मतलब ड्रैगन के सस्टेन से ज्यादा पड़ता है। अब बराट्स आए तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि टायरॉथ में भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि जितने भी चार्जिंग हीरोज है उनको अच्छा काउंटर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जो यहाँ यूरेनस के साथ जाना चाहेंगे। यूरेनस की बात भी करें तो काफी अच्छा है मेटा पे इस समय। लाइक आप बोल सकते हैं कि पकीतो के बाद सेकंड पिक ईएक्सपी पे लाइक ऐसा जो अच्छा खासा डैमेज भी दे पाए, डैमेज सोकअप कर पाए और मरे भी ना, तो वो यूरेनस ही रहेंगे। और लाइक काफी अच्छी पारी यहाँ पे अभी चल सकते हैं। मिड लेन की बात करें तो इडोरा वर्सेस यहाँ पे जो है जेतियन होते हुए देखेंगे। जेतियन एक बोल सकते हैं कि साइड के तौर पे रहेंगे जो एटलस के साथ एक अच्छा कॉम्बो बनाते हुए दिखेंगे। बैन की बात करें, चलिए एमएम के ऊपर बैन आता हुआ दिखेगा। कैरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैन था, अगर कैरी बैन नहीं होते तो बराट ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और कैरी के जाने के बाद बराट जो है टीम फाइट में ज्यादा देर तक टिकेंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो आखिरी बैन यहाँ पर ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से ब्रॉडी को उन्होंने निकाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्लॉड को भी जो है यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिया जाएगा। लेकिन नहीं, हार्डली, अच्छा ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि आप लिंक खिलवा रहे हो तो हार्डली एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट्स माइट बी द रीजन द बैन द हार्डली हियर। उसके साथ साथ नोलन भी यहाँ पर खुला है, तो नोलन जा सकते हैं। इफ नॉट द नोलन देन पैराट्स भी ईएक्सपी पे यूज ना होकर जंगल पे यूज हो सकता है। सो ऑल दिस ऑप्शंस आर ओपन, बट अगेंस्ट द यूरेनस बराट्स एक अच्छा कामयाबी स्थल देगा, और ये बढ़िया बैन। मिनोटॉर
was the possible pick into the roam for Brothers Esports having a Eudora and Link. आपको पता है कि Eudora के पास वो हील का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, तो आपके पास जब मिनोटोर रहेगा, वॉकिंग गार्डियन हेलमेट, मेरे प्यारे रे भाई बोलते हैं इसको, तो ऑब्वियसली वॉकिंग गार्डियन हेलमेट जब आपके साथ साथ घूम रहा होगा तो आपको हील मिलता जाता रहेगा. तो डेफिनेटली बैनिंग द मिनोटोर वाज अ परफेक्ट चॉइस फ्रॉम द साइड ऑफ टीम Time लॉस्ट and सरियल्स. tide wait यहाँ for पर no कैरमिला man. ऑप्शन खुला है, Not girl. बीट्रिक्स जाएंगे फॉर द गोल. ब्रदर्स Esports अभी against the Beatrix, you had a chance to go for the Moscow, you have a chance to go for Melissa, और ये दोनों नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है इरिथल भी यूज करवा सकते हो अभी. रिथिल सही बोला आपने। और आई थिंक यहाँ पे अगर डायरॉथ जंगल आते हैं ना तो बहुत अच्छा एक सिनर्जी बनता हुआ हमें देख सकता है, या फिर ईएक्सपी पे भी। तो लाइक डायरॉथ के साथ आपके पास एक ये रहेगा, जितने भी फ्रंट लेनर्स होते हैं ना वो टैंक नहीं कर पाएंगे। और डायरॉथ का इस समय अगर बात की जाए, हम लोग मिथिक ऑनर पे जिस तरीके से चल रहे हैं, जो बैटलफील्ड अभी आया है मोबा का, तो वहां पे उनका जो पेनिट्रेशन है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और इस समय लाइक जो सस्टेन की हम बात करें ना, वहां पे डायरॉथ लाइक मैं बोलूंगा वन ऑफ द अंडररेटेड ईएक्सपी अभी चल रहे हैं मेटा पे। आप सरप्राइज हो जाएंगे एसटीजी, आप फुल टैंक पे जाएंगे, आपको सिर्फ 2 आइटम लगेंगे। 2 आइटम में आप क्वीन विंग्स डाल लीजिए और एक रोज गोल्ड। ये 2 आइटम अगर आपने डाल लिया, उसके बाद सारा आप डैमेज बिल्ड पे जाते हैं, तो डायरॉथ बहुत ही ज्यादा लाइक आप सोच नहीं सकते उतना अच्छा आउट प्ले करके दिखाता है। लेकिन डायरॉथ के साथ थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, वो थोड़ी सी रहती है कि आप बैकलेन को टारगेट नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ आगे ही चार्ज कर पाओगे। और इसी के लिए यहाँ पे जॉय का आगमन लिया है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रीफाइंग बीट का इस्तेमाल करेंगे और बैकलेन को टारगेट करते हुए हमें देख सकते हैं। और जैसे कि आप बोल रहे थे यहाँ पे कि कार्मिला वो भी आती हुई दिखेंगी, ब्रदर ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक अच्छी अप्रोच है कि आप अल्टीमेट लगाते हुए देखेंगे वहां पे कर्स ब्लड, तो हो सकता है कि 2 से 3 एनिमीज आप पकड़े, और बेट्री से अगर एक अच्छा सा कॉम्बो लग जाए तो उधर कमाल का हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड की भी अगर बात करें तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हनाबी ली है। और इससे पिछले वाले मैच में जिस तरीके से हनाबी का आप बोल सकते हैं कि वो अग्रेशन आता हुआ देखा था हमको, शायद इस गेम में भी मैं आता हुआ दिखे। मेरे पास एक छोटी सी चीट कोड है फॉर द Deroth players, like not for the Deroth players but the players who are playing against a Deroth and getting suffer from the Deroth, and that's a Vexana actually. अगर आपकी मेज को वेक्साना आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो फिर डिरॉथ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा गाइस, जस्ट टू मार्क इट डाउन. अगर आपके पास कोई वेक्साना प्लेयर्स है उनको उनके साथ खेलो, अगर डिरॉथ आता है तो फिर बिल्कुल मत डरना, उनके पैर पड़ जाना, उनको बोलना है वेक्साना पिक करने के लिए. और सच में वेक्साना इतना ज्यादा स्टन देता है कि डिरॉथ कांट डू मच इन दैट टीम फाइट. बट यप, इनटू द लेन टू लेन मैचअप डिरॉथ डज हैव अ बेटर चांस. बट अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कैरमेला यहाँ पर आएगा, लेकिन थोड़े से स्क्विशी बन चुके हैं. रिकॉल करेंगे अभी तो टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, बट मिनियन क्लियर्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा गोल्ड जो है वो हैम्पर होने वाला है अभी मिड लेन का. Brothers Esports, Beatrix will be playing a winning lane against the Hanabi. Top lane पे आप देख सकते हैं Baraz versus Uranus, जहाँ पे Baraz is actually controlling the EXP lane properly into his way. और top lane पे यहाँ पर invade का वो सरिया खोलने की कोशिश थी. Rhythm of Joy मौजूद, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रम्बल करेंगे. उस लावा गोलेम के पास हरकत दिख रही है हमें लॉस्ट सरियल्स की तरफ से, शायद से लावा गोलेम को लेकर ही निकलेंगे. लेकिन स्टर्न यहाँ पर आता हुआ, वी कैन सी द फाइट कमिंग इन, ट्रैप डाउन करते हुए बराज को 2v1 सिचुएशन में बॉबी भी सस्टेन कर रहे, बहुत ही कम एचपी में. द बॉयज यहाँ पर पीछे हटे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए रिदम ऑफ जॉय आया है, बराज भी सेफ खेलेंगे और साथ ही साथ जॉय यहाँ पर उनको फॉलो अप देके बचा के निकल जाएंगे. जॉय अभी तक लेवल 4 नहीं हुए और टर्टल आने वाला है. जी बिल्कुल, थोड़ा सा ना वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक लाइक सिचुएशन में फंस गए थे कि लिंक की तरफ जाएं वो ब्लू बफ लेने के लिए, या फिर पीछे की तरफ आए. लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा टेम्पल्स ब्लेड का इस्तेमाल करा है, मेज दिक्कत पड़ सकती है. ब्लेड कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, मार्क कराए, फर्स्ट ब्लड लिया है यहाँ पे लिंक ने, और यहाँ पे डबल किल के लिए तलाश पे जाएंगे जरूर. रिदम जॉय का इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स और किल में गया उनका. चलिए, बहुत ही अच्छा तरीके से फाइट को इनिशिएट किया, और लाइक जो एक लीड बना सकती थी, एक पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे हो सकता था, उसको बैलेंस आउट करते हुए हमें दिखी जॉय. चलिए, उसी के साथ टर्टल लेने का आगमन, लेकिन उससे पहले टीम ब्रदर स्पोर्ट्स उनके जो मेंबर्स हैं वो पोजीशन लेते हुए दिखेंगे, लेकिन वापसी आते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं है इस समय, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा. बेसिक इस्तेमाल आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिक्कत हो सकती है. अंदर की तरफ जाएंगे, बराज की तरफ से अल्टीमेट उनको पकड़ा जाएगा, डैमेज देते हुए पीछे से आएंगे, और ये देखिए यहाँ पे फिनिश द फ्यूरी का इस्तेमाल किया है, और फाइट अभी भी लगातार चलती हुई इमेज की तरफ से स्टन आता हुआ दिख सकता है. लेकिन चल वो इनके हाथ में लग चुकेगा, फ्लिकर का इस्तेमाल किया है, पीछे बसते हुए निकलेंगे 2 बंदे, कोशिश रहेगी जरूर एटलेस की तरफ से, लेकिन अभी लेवल 4 नहीं है, जिसके कारण अल्टीमेट नहीं आएगी. चलिए, आपने टाइटल तो ले लिया, लेकिन रेड बफ क्या बोले पाएंगे यहाँ पे. चलिए, नहीं, कोशिश भी नहीं करना चाहते, उनको पता है कि इस समय
रेड पे अगर समय बिताएंगे तो उनका ब्लू जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और इसलिए वो सीधा जाएंगे अभी ब्लू के लिए। और यही दिक्कत होता है लिंक जैसे हीरोज के साथ, जब भी आप बफ डिफेंडेंट हीरोज ऐसे लेते हैं तो आपको लगातार अपना बफ जो है वो डिफेंड करके खेलना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ज्यादा समय है वो अपना बफ की तरफ ही जाता है। लेकिन लिंक के पास वो मोबिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए और वो अगर बात करें तो आता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन लेट्स सी, अभी भी कोई बड़ी लीड नहीं ली है किसी भी टीम ने। आप बोल सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है लेकिन बैलेंस आउट जो है वो होता हुआ जा रहा है। डेफिनेटली देखते हैं अभी फिलहाल के लिए क्या होता है। स्कोर तो इक्वलाइज में ही है अभी तक इक्वलाइजर में, बट आगे जाकर अगर तब्दील होता है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स तो मजा आएगा देखने के लिए। यहाँ पे दोनों देखिए थोड़ा सा पोक करते हुए पीछे हटेंगे यहाँ पर। एटलास ने थोड़ा सा स्ट्रम्बल करने की कोशिश की थी लेकिन ओके दैट्स अ क्विक स्टन एंड वी कैन सी दैट अल्टीमेट बीइंग पोक्ड आउट। वॉल के ऊपर गए, टेम्परेचर प्लेट का इस्तेमाल, पैसिव मौजूद नहीं है, स्लेन करेंगे, पीछे हटेंगे लेकिन यहाँ पर वो आर्टिक को लाता हुआ उन्हें स्टन देंगे। बैटलिंग कनेक्ट हुआ एंड दैट विल बी खावी गोइंग डाउन विद अ डबल इनटू द हैंड ऑफ मैक्स। He managed to recuperate, he managed to reconciliate the kill, the revenge onto Jush, onto the Zetian fallout. तो Zetian का जो किल था उसके ऊपर रिवेंज लेने में मकसद जो है वो कंप्लीट हुआ मैक्स का यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया 3-2 लॉस सरियल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए इस गेम में 3-2 का ये स्कोर। टर्टल मौजूद अभी दूसरी बार और दूसरी दफा भी मुझे लग रहा है टर्टल यहाँ पर लॉस सरियल्स के हाथों में ही जाएगा। शिनरा जी बिल्कुल लग तो ऐसे रहा है। लेट्स सी यहाँ पे देखिए लग रहा है ना मेज जो है भाई एक ट्रिगर पॉइंट बन चुकी है इस समय। हर कोई आता है मेज को मार के चला जाता है लेकिन उनको मारने के चक्कर में खुद भस्म हो जाते हैं यहाँ पे। और देखिए कोशिश यहाँ पे रहने वाली है, फिर दोबारा से फाइट आती हुई दिखेगी यूरेनस के ऊपर प्रहार, लेकिन यूरेनस बचते हुए निकले हैं। पाम इजिली जो है हील अप हो जाएंगे लेकिन दिक्कत पड़ सकती है मेज के लिए क्योंकि उनकी परेशानी लगातार बढ़ती हुई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि लगातार उनके पीछे प्रहार होता हुआ जा रहा है। और चलिए द बॉयज वन उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा डैमेज पीटरी की तरफ से अच्छा खासा फार्म हो चुके हैं। एटलेस उनको बचते हुए निकलना पड़ेगा और टर्टल फिर दोबारा से लिंक की तरफ जाएगा और ये दिक्कत आपको बहुत ज्यादा होगी कि ऑब्जेक्टिव आप लूज कर रहे हैं। और दूसरी साइड की बात करें एमएम वो अपना काम कर चुकी है, बॉटम का जो टर्रेट है वो उसके ऊपर बढ़त बना चुकी है। अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि हना भी एक ऐसी की पॉइंट बन जाएंगे ना जहाँ पे वो चेंजेस लाते हुए दिख सकती है। और उसके साथ लेटर फ्रैंक बीट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज टेम्पल्स ऑफ ब्लेड का इस्तेमाल किया है, ब्लेड कलेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ गए हैं, बचने का प्रयास, डैमेज उनकी तरफ से आएगा और अच्छा खासा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रयास रहा वो बफ लेने का। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि मैक्स वो धाराशाही हुए वहां पे। चलिए दोबारा कोशिश हो सकती है अंदर की तरफ जाते, देखिए अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया है, वहां पे किल मिलेगा लेकिन मेज वो धाराशाही होंगी और आई डोंट थिंक कि अच्छा खासा ट्रेड रहा यहाँ पे। मेज की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उनको लगातार आप बोल सकते हैं कि कोई ना कोई टारगेट कर दे रहा है या तो फिर उनकी जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उनको थोड़ा सा या तो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा या तो बिल्कुल टैंक के साथ चिपक के रहना पड़ेगा। डेफिनेटली देखते हैं अभी फिलहाल के लिए क्या होता है क्योंकि ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स के पास वो मौका वो मंशूबा क्लियर था एंड वी कैन सी दैट की स्कोर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर से इक्वलाइजर में आके अटका पड़ा है। बट इस बार एक छोटी सी लीड यहाँ पर हासिलात हुई है ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स को। गोल्ड की बात करेंगे इतना ज्यादा वहां पर भी इजाफा नहीं, अभी तक सिर्फ 600-500 में ही गोल्ड लीड हमें देखने को मिल रहा है ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से, जो इजीली जो है रिक्यूपरेट हो सकता है फ्रॉम लॉस सरियल्स। आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे लेकिन वहां पर एक स्टन, ब्यूटीफुल वे टू गो फॉर द अल्टीमेट पिक किया है यहाँ पर और पिन करेंगे वॉल पर। पैटलिंग्स का फॉलो अप, चेन सीसी इज गॉट यूज्ड, द बॉयज फॉल्स डाउन, स्लेन ऑन टू माही एंड यू कैन सी दैट स्लेन खावी भी यहाँ पर जाते हुए ट्रिपल किल यहाँ पर सिक्योर करते हुए। आर्टिकल यूनिट सस्टेन कर रहे हैं लेकिन वो पुश बैक आता हुआ अंदर जाएंगे। इलेक्ट्रीफाइंग बीट, रिदम ऑफ जॉय एंड वी गोइंग टू सी द फोर्थ मैन गेटिंग डाउन देयर विद जस्ट अ सिंगल किल opted for the side of team brother esports। जो लीड जो बरकरार रख रही थी टीम ब्रदर esports अपने हाथों में वो उनके हाथों से अभी चला गया है। Mid tier 1 is about to crash down, 9-7 the score is, 2 into the score and there is a proper 300 goal lead for the side of team Los Surreales। फिर से गोल्ड पे इतना इजाफा नहीं लेकिन किल स्कोर पे इजाफा और हर बार मैं देख रहा हूँ कि बीट्रिक्स को टॉर्मेंट किया जा रहा है तो वहां पर थोड़ा सा हमें जो है अपना
लहजा पकड़ना पड़ेगा और टर्टल के पास अभी आप देखिए स्टार्ट हो चुका है। आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अटलास आएंगे यहाँ पे जोन करने के लिए। सिंड्रा अन्य तरफ गए हैं, जरूर कोशिश रहेगा और यहाँ पे चेन टुगेदर लगाने का प्रयास, लेकिन मिस करेंगे। ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट का इस्तेमाल किया था, पीछे बचते हुए जाएंगे। मैक्स यहाँ पे कोशिश करे एक और किल लेने का, जी बिल्कुल मिलेगा उनको यहाँ पे। प्रो नो लिमिट वो दाराशाही होते हुए शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए बेटे जाएंगे, फ्लिकर का इस्तेमाल और यहाँ पे फाइनली मैक्स को दाराशाही कर दिया। लेकिन पीछे की बात करें तो वहां पे फाइट अभी भी लगातार चलती हुई और यूरेनस वहां से बचते हुए जाएंगे, लेकिन एमएम की तरफ से बेट्रिक्स यहाँ पे डैमेज देती हुई दिखी है। बहुत ही कम अच्छी बचते निकलेंगे। फिनिश ऑफ का इस्तेमाल क्या है, पोक मिल सकता है, नहीं मिस किया। पीछे हटे, इसी के साथ वो स्किल मौजूदा नहीं थी उनकी, अगर फर्स्ट स्किल रहती तो वहां पे एमएम ताराशाही हो सकते थे। लेकिन अब थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, लेन्स को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। बॉटम लेन जो है वो भी टूटने वाला है इस समय। और बीट्रिक्स कमाल का यहाँ पे खेल रही है, पिछले बार जितने बार उनको टारगेट किया था अब उसका बदला लेती हुई दिख रही है इस समय। एटलस फिर दोबारा से आएंगे, बेट्रिक्स दिक्कत में पड़ सकती है। आर्टिकल का पैसिव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक उसका इस्तेमाल करते हुए बचते हुए निकली है। और लेट्स सी अल्टीमेट आएगा, कोशिश डेफिनेटली बहुत बढ़िया यहाँ पर खेलते हुए टीम ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स। जो भी हो, मतलब उनका हाथ से वहां पर वो टर्टल गया, उनके हाथ से वहां पर किल गया। लेकिन अगर आप मैक्रो वाइज देखेंगे तो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर यहाँ पर सिक्योर करते हुए दिख रहे हैं ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स, और उसी के साथ किल्स को इतना ज्यादा डिफरेंस पे लाने के लिए नहीं दे रहे, इक्वलाइजिंग पॉइंट पे रख रहे कि एक दो किल के लीड रखे, उस पर हम लोग इक्वलाइज कर देंगे और गोल्ड को भी कहीं ना कहीं वहीं पे भी सेटल करके रख रहे हैं। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर लॉस सरियल्स ने पूरा डोमिनेट करके रखा है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ब्रदर ई-स्पोर्ट्स डोमिनेट कर रही है। तो बोथ दी साइड्स आर प्लेइंग सेफ। टेम्पेस्ट ब्लेड का इस्तेमाल, गोइंग बैक टू द सेफर साइड, but आज गोइंग फॉर द एंगेज हियर, वी कैन सी दैट स्ट्रम्बल ट्रैप डाउन किया है, बहुत बढ़िया सीसी यहाँ पर दिखता हुआ, फिर बैक टू द तीन स्नाइपर गेट कनेक्टेड एंड दैट विल बी द बॉल फॉलिंग डाउन। काबी ने लिया है पर रेजा का किल, 1 फॉर 1 का ये स्कोर, ट्रेड को सेम किया, लेकिन मैक्स यहाँ पर दूसरा ट्रेड बनते हुए टीम ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के लिए, उसको काबी के साथ यहाँ पर इक्वलाइज करती हुई टीम लॉस सरियल्स। What a way! Reza first, then Kavi, the poke coming in. Mikov Health is going back, getting chased down by that class, getting the double damage from the structure, and he will eventually take the kill, but falling down as well. That will be the trade equalizer. उसको भी लीड में ले आए यहाँ पर फॉरलॉम ने। उन्होंने आखिरी मोमेंट पे फाइनल ब्लो दिया वहां पर यूरेनस के ऊपर, जिसके कारण जो ट्रेड 2 for 2, 3 for 3 होने वाला था वो 4 for 3 में खत्म हुआ। What a way! इतना बड़ा फाइट लगभग 2 मिनट के लिए चला, जिसमें इजाफा तो सिर्फ एक का हुआ लॉस सरियल्स का, बट इतना ज्यादा कुछ मैक्सिमस मैक्रो या फिर माइक्रो सिचुएशन नहीं बना। ये बिल्कुल दर्शाता है कि दोनों ही नई टीम है, तो वो थोड़ा सा रहता है। और मैं बोलूंगा कि दोनों ही काफी अच्छे तरीके से खेल रही है। आप बात करेंगे एक तरफ तो टीम जो है, एक तरफ वहां पे सैला नहीं है। चलिए लॉट तो मिलेगा यहाँ पे, प्लेरो टेम्पेस्ट का इस्तेमाल किया है, बचने का प्रयास, लेकिन लेंगे यहाँ पे दाराशाही होते हुए जाएंगे मैक्स के द्वारा। और अभी फाइट की बात करें तो डबल किल मिला है उनके हिस्से में। एमएम बचते हुए निकलना चाहती है, लेकिन पीछे से उन्हें पकड़ने का प्रयास, लेकर का इस्तेमाल करते हुए इसका सहारा लेना पड़ेगा वहां पे टावर का, और टावर का सहारा लेते हुए पीछे हटे हैं अभी, लेकिन टावर के पास एचपी नहीं है, पीछे हटना पड़ेगा दोस्त आपको। और एटलस यहाँ पे कोशिश करना चाहते हैं, पीछे से आएंगे, थोड़ा डराया जाएगा उनको, पीछे धकेल रहे हैं टरेट से ताकि वो टरेट निकाला जा सके। आना भी कोशिश करती हुई, लेकिन अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए लगातार डैमेज देते हुए देखिए दिक्कत हो सकती है, और प्यूरीफाई का इस्तेमाल करना पड़ा और यहाँ पे बचते हुए निकले। चलिए अच्छी कोशिश उनकी, और यहाँ पे शील्ड भी जो है वो भी चला जाएगा मिड लेन से। लॉर्ड जो है बॉटम लेन से अभी आ रहा है। चलिए आइटमेशन के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे टीनेटी कंप्लीट हो चुका है अनाबी का, उसके साथ साथ अब वो जा रही हैं आई थिंक यहाँ पे मेलेफिक गन की तरफ। मेलेफिक गन आएगा, उनका रेंज और ज्यादा आएगा, फिर उसके साथ साथ जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगा, तो फ्रंट लेनर्स को और ज्यादा दिक्कत होगी। और अंदर की तरफ गए, काफी ज्यादा डैमेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक गलती साबित हो सकती है। ब्लेड रैम्पेज का इस्तेमाल किया है, बचने का प्रयास, लेकिन उनको दाराशाही कर दिया गया। फिनिश ऑफ द फ्यूरी आएगा, कोशिश किया है बराट्स ने, लेकिन वो भी दाराशाही होंगे, और उसी के साथ एक और किल मिलेगा। पेट्रिक्स मैनियक, ओह माय गॉड व्हाट अ गेम प्ले द बॉयज वन की तरफ से। कमाल का पेट्रिक्स खेलते हुए, और मैनियक उनके हाथों में आता हुआ। एटलेस थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि अंदर की तरफ गए, जरूरत नहीं थी वहां पे जाने की। आपके पास अच्छा खासा लीड था, आपके पास एक अच्छा खासा मौका था, आपको पीछे रहना चाहिए था। उनकी तरफ से कोशिश समझ रहा हूँ, लेकिन अगर वो किसी डैमेज डीलर को पकड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता, रेदर देन वो यहाँ पे जो है यहाँ पे कार्मिला को पकड़ा उन्होंने, ज्यादा उसका जो है खामियाजा हुआ नहीं। उसके बाद पीछे की तरफ गए डैमेज लेते हुए, लेकिन वो बेट्रिक्स की पोजीशन की बात करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करें, कमाल का आता हुआ उनकी तरफ से। जो डैमेज आ रहा है इस समय वो कमाल का आ रहा है। हनाबी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बोलूंगी विंड ऑफ नेचर उनको बना लेना चाहिए, रोज गोल्ड उनको बना लेना चाहिए, क्योंकि
आई थिंक रोजो गोल्ड से भी ज्यादा मैं तो कहूंगा कि अभी विंड ऑफ नेचर ही बना लीजिए, क्योंकि बेट्रिक्स का जो बर्स्ट आ रहा है ना और लिंक का जो बर्स्ट है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। डेफिनेटली देखते क्या होने वाला। फिलहाल के लिए तो गेम इतना ज्यादा तय तक नहीं जा रहा है। दोनों टीमें कोशिश अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रही है कि इस गेम को जीती जाए। अटलास यहाँ पर स्किल वन के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिफाइंग बीट्स, लेकिन इस बार उनको स्टन किया। प्रॉपर वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द situation from the position. We're gonna see that Baraz going in for the ultimate fear. The Phoenix का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर Pros No Limit को फंसाते हुए The Boys यहाँ पर शट डाउन होते हुए Baraz के हाथों में, और ये देखिए माही के ऊपर यहाँ पर ट्रैप डाउन करने की कोशिश, लेकिन मिनियन वेव्स यहाँ पर अंदर जाते हुए Meteor 1 टूटने वाला है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं छोटा सा पोक यहाँ पर आता हुआ खेवी यहाँ पर आ चुके हैं। खेवी क्या यहाँ पर एक प्रॉपर स्लेट के लिए जाएंगे, यूज किया है टेम्पेस्ट ब्लेड, आगे बढ़ेंगे आजो यहाँ पर फंसते हुए, लेकिन रिची फादर को इक्वलाइज करवाते हुए यहाँ पर टीम लॉस सर्रियल्स 3 for 1 का ये ट्रेड। लॉर्ड इनटू द मैट्रिक्स, डजंट हैव द टेम्पेस्ट ब्लेड इनटू द हैंड ऑफ लिंग। Meteor 1 टूटता हुआ, नेक्सस यहाँ पर एक्सपोज होता हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ टीम ब्रदर ईस्पोर्ट्स। कमाल का गेम प्ले आता हुआ, कमाल का डिफेंस भी आता हुआ, और उसी के साथ उनका आगमन भी हो चुका है। इस समय अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये गेम जो है वो जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि लिंग वहां पे मौजूद है, उनके पास मौका रहेगा रेट्री लगाने का, तो पीछे हटे हैं अभी। और चलिए यहाँ पे लॉर्ड डांस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लिंग मौके का फायदा उठाते हुए पुश देना चाहते हैं। आर्टिकोल्ड आएगा जरूर, दिक्कत हो सकती है, लेकिन बचते हुए अभी निकले। दूसरी साइड की बात करें तो के ऊपर मार किया जाएगा, लेकिन मैक्स यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और आपको दाराशाही कर दिया। बेट्रिक्स के ऊपर जाना चाहते थे, वो चेन टुगेदर गए जरूर है, लेकिन फायदा नहीं है, फॉलो अप नहीं है आपके पास पीछे। एटलीस्ट भाई थोड़ा वेट करना चाहिए था, आपको समझ सकता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी सी भावनाओं में बह गए आप कि आपके जंगलर को कैसे मारा। और चलिए उसी के साथ एक और दिक्कत हो सकती है, अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, बहुत ही कम एचपी बचते हुए निकले, लेकिन डैमेज पीछे से आता हुआ भरपूर रूप से शट डाउन मिलेगा यहाँ पे बराट्स को। और अब इसी के साथ टीम यहाँ पे बात की जाए बदर ई स्पोर्ट्स, उनके पास एडवांटेज है ये लॉर्ड लेने का, और कोशिश करते हुए दिखेंगे लॉर्ड को जल्दी से जल्दी अपने नाम करते हुए। बात की जाए डैमेज की यहाँ पे डोरा की तरफ से, वो भी काफी अच्छा खासा डैमेज आ रहा है, तो अंदर की तरफ ज्यादा जा नहीं सकते हैं। आपकी अप्रोच अच्छी थी मैक्स की कि यहाँ पे को टारगेट करना है, बट आई थिंक आपको पहले यहाँ पे इनिशिएट जो है एटलस को करने दीजिए, ताकि उनका जो ब्लिंक है, उनका जो फ्लिकर है वो वेस्ट हो जाए, तब जाके आप अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और वो डैमेज इतना ज्यादा है इस समय बेट्रिक्स का कि आप जितना भी ज्यादा आप जो है सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो बस उनकी तरफ से आता है। और या स्कोर की बात करें तो उनके स्कोर भी देखिए आप, 10-3-3 का स्कोर है यहाँ पे, 10 किल उन्होंने अकेले लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास फार्म कितना जबरदस्त होगा इस समय। 50% ऑफ द किल्स उनके पास है, तो ऑब्वियसली एंड उससे ज्यादा है, बिकॉज 3 असिस्ट में भी उनका साथ है वहां पर। आप देख सकते हैं लॉर्ड को मिड वे पे डिफेंड करने की कोशिश, अंदर लेने की तक का वो मौका नहीं दिया, बट डजंट मैटर। लॉर्ड यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, मिनियन वेव जो आने वाले इसके बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंक कर नहीं पाए सही से, क्योंकि थोड़ा फोकस कहीं और था यहाँ पर टीम ब्रदर ईस्पोर्ट्स का। बट यहाँ पर फैटलिंग्स कनेक्ट होता हुआ, साथ ही साथ फॉलो अप यहाँ पर फ्यूरी द फीनिक्स का, बट यहाँ पर देखिए एंगेज होता हुआ स्पिट एंड फ्यू यहाँ पर किया है, और उसी के साथ कर्स ऑफ ब्लड यहाँ पर लगा है। लिंग यहाँ पर अंदर जाते हुए बीट्रिक्स ट्राइंग टू डाउन एंड बैक गोस डाउन, आउटप्ले किया वहां पर, माही फॉल्स डाउन, रिची को यहाँ पर लेते हुए रेजा गोस डाउन देयर, काफी को यहाँ पर खा गए, डबल किल सिक्योर किया यहाँ पर आज़ेक्स ने, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 3 बनाम 2 का ये ट्रेड मिलता हुआ टीम द लॉस सर्रियल्स को, एंड नाउ दे गॉट अ चांस टू फिनिश द गेम, क्योंकि हैनबी के पास भी उतना ही डैमेज है जितना बीट्रिक्स के पास। द बॉयज वर्सेस एज़ेक्स का ये गेम बढ़िया चलता हुआ, और आप देख सकते हैं लेट गेम तब्दील हो चुका है। 27-22 का ये स्कोर, 17 मिनट का ये गेम आगे बढ़ता हुआ, कोई हार नहीं मान रहा है, अपने तरफ से सब चाहता है जीतने के लिए। लॉस सर्रियल्स दे आर नॉट गिविंग अप, इफ यू विल सी टीम ब्रदर ईस्पोर्ट्स दे आर नॉट गिविंग अप। देखते हैं क्या होने वाला है, अभी भी पिक्चर बाकी है। पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, और यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से उसको रिलीज करते हैं। चलिए ब्लू बफ मिलेगा लिंक को, तो अब थोड़ी सी बोल सकते हैं कि एनर्जी उनके पास सफिशिएंट रहेगी टीम फाइट्स के दौरान, और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी लगती हुई दिखा आ रही है कि आपने पूरा अपना जोर आप बोल सकते हैं कि बेट्रिक्स के ऊपर रखा है, और वो दर्शा रहा है जिस तरीके से 2 फ्रंट लेनर्स हैं आपके पास जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी जो है वो यूज हो जाए।
और यहाँ पे दिक्कत में पड़ सकते हैं मैक्स, क्योंकि उनके ऊपर दाराशाही होते हुए दिखेगा टॉप लेन की तरफ, बस निकलने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, डैश मारने का प्रयास, लेकिन वो डैमेज इतना ज्यादा आएगा उनकी तरफ से कि दिक्कत होती हुई दिखेगी। आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे चेन टुगेदर लगाया जरूर है, उसकी तरफ से कर्स ब्लड आता हुआ दिखेगा, फिर फ्री का इस्तेमाल किया है सही समय पहले, लेकिन एक एचपी बचते हुए निकल चुके हैं यहाँ पे एमएम। ओ माय गॉड, कोशिश पूरी करते हुए लेकिन ले आएंगे यहाँ पे पीछे से और एमएम को फिनिश ऑफ करेंगे। ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट का इस्तेमाल किया है, गए पीछे की तरफ से लगाते हुए डैमेज, अब डैमेज डीलर नहीं बचे उनके पास, पीछे हटना पड़ेगा आपको और जो है और ज्यादा डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड का आगमन हो चुका है और आपका जंगलर जो है वो धाराशाही हो चुका है। Definitely 27-24. They don't have the joy on the field right now, and onto the pit you can see the Ling is going in. काफी के पास वो मौका लॉर्ड को सिक्योर करने का, एंड साथ ही साथ we gonna see that contest coming out here. जोन करने के लिए एटलास आगे आते हुए, लेकिन पीछे ही हटना पड़ेगा उन्हें। लॉर्ड लेंगे भी तो सिंक करना जरूरी है, लास्ट टाइम लॉर्ड था लेकिन सिंक नहीं था, तो डेफिनेटली लूजिंग आउट द लॉर्ड इज बेटर देन नॉट गोइंग फॉर अ प्रॉपर सिंक, क्योंकि अब लॉर्ड लेके फायदा नहीं होता है। फिर आपने अभी तक मिड टियर या फिर बॉट टियर या फिर टॉप टियर कहीं से भी नेक्सस एक्सपोज नहीं करवाया है टीम लॉस सीरियल्स का। उनके पास हैन भी है, लेन क्लियरेंस प्रबल मात्रा में है उनके पास, तो आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो कोशिश पे रहते हैं कि लाइक हाँ यार देखिए मिनियंस को फिर से क्लियर करते हुए यहाँ पर है ना भी आपके और एक सेट वाले मिनियंस आ रहे हैं, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा इजीली। तो यहाँ पे सिंक कैसे बैठेगा, यहाँ पे सिंक ऐसे बैठेगा कि आपको क्लोज करना पड़ेगा लेन को, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा खुद को। अगर आप तुरंत लॉर्ड लेके फाइट के लिए अप्रोच कर रहे हो तो वो गलत है। इवन इफ यू आर विनिंग द फाइट यू आर एक्चुअली नॉट टेकिंग डाउन द लेन क्लियरेंस वाला हीरो, दैट इज द हैनम। तो अगर आप बैकलाइन को इरेज कर सकते हो देन दैट माइट बी द थिंग, बट राइट नाउ वी कैन सी सम डिफरेंट अप्रोच कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम ब्रदर ईस्पोर्ट्स। सिंक करवाते हुए लिंक को, बॉट लेन सिंक हुआ था लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लिंक ने वहां पर मिनियंस का गुच्छों को क्लियर कर दिया। यहाँ पे लॉर्ड आगे बढ़ेगा, थ्रैश करेगा, इस बार एक्सपोज होने का पूरा चांसेस है नेक्सस। लुक एट इट, ऑल ऑफ देम आर गोइंग इन फॉर द फाइनल स्लैश एंड यू कैन सी दैट somehow they will expose the lane there। फिर the Phoenix पीछे से आता हुआ यहाँ पर माही बहुत ही खराब पोजीशन में एजिक्स के शिकार बनते हुए, Max goes down there, Slane happen on to Pros no limit, double kill for Azix, he might gonna go for a triple, immortality pop up हुआ है, Richie goes down, Max use the flicker, Tempest Blade, Rose Gold इस्तेमाल किया, पीछे हटे, quick item change from Nakavi। That was so quick that he managed to survive, but right now Arctic Cold यहाँ पर आता हुआ, Bintrix in a very bad position, getting Strumble, use the bazooka fire, poke comes in, now it's just the Ling without Rose Gold, without the ultimate। Minions पहुंच नहीं जाएंगे इतना जल्दी, लेकिन Resurrection 17 सेकंड का भी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या यहाँ पर खत्म कर पाएगी लॉस्ट सीरियल्स, क्या लग रहा है शिनरा? कोशिश पूरी करते हुए दिख रही हैं, लेकिन लिंक्स देखा जाए तो यहाँ पे हनाबी को ही मार करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा वहां पे देखना पड़ेगा। और चलिए कोशिश करते हुए जाते हुए दिखेंगे, अंदर की तरफ गए हैं, लिंक बैक लेन को मार करते हुए मिनट्स की तरफ जाते हुए देखेंगे, फिर फ्री का इस्तेमाल किया है टेम्पेस्ट, लेकिन ओके हनाबी का डैमेज इतना ज्यादा कि सर्वाइव नहीं कर पाए वहां पे। अभी भी फाइट लगातार चलती हुई दिखेगी, कर्स ब्लड लगेगा जरूर और डिफेंड करने में कामयाब। मिनियन जो है स्पॉन हो चुके हैं सही समय पे और उनके टीममेट्स भी आ चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी स्थिति थोड़ी सी सुधरी जरूर है, लेकिन डिफेंड करने के लिए वहां पे मौजूद आते हैं, लेकिन एक अच्छा चांस बन सकता है लॉर्ड के लिए। लॉर्ड अगर ले पाए तो हो सकते हैं कि एक अच्छी ओपनिंग बन सकती है उनके लिए, और कोशिश पूरी करते हुए देखेंगे। लेकिन जॉय बहुत ही जल्दी अल्टीमेट आपने यूज कर दिया, थोड़ा वेट करना चाहिए था। और चलिए यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए देख सकते हैं, आपको जोन आउट करना पड़ेगा, एटलेस को जाना पड़ेगा आगे। एटलेस थोड़ा सा आगे जाते हुए बुश अगर चेक नहीं करेंगे तो दिक्कत पड़ सकती है। मेज वहां पे मौजूदा रहेंगे, कभी भी आके जंगलर को वो स्टन दे सकते हैं। और देखिए पीछे की तरफ जाते हुए देखेंगे, डैमेज देते हुए इस बार फिर से मैट्रिक्स वहां पे मार किया है, चेन टुगेदर का इस्तेमाल किया जाएगा और फाइनली द पॉइंट्स वो खत्म होते हुए देखिए, फिनिश फ्री का इस्तेमाल किया, बढ़िया कम है यहाँ पे आता हुआ दिखेगा मैच की तरफ से, मार्क डाउन होते हुए देखेंगे। इडोरा को फिनिश ऑफ कर दिया गया, पीछे से अभी लगातार डैमेज देते हुए देखेंगे, फिनिश और उसी के साथ मेज लगातार यहाँ पे डैमेज देते हुए देखिए। कार्मिला कोशिश करेगी किसी भी तरीके से इस फाइट को थोड़ा सा वो करने के लिए, लिंक यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी तरफ से आएगा जरूर। रिजा यहाँ पे खत्म होते हुए दिखेंगे, मैक्स बहुत ही कम एचपी पे, उनको वापस हटना पड़ेगा। अब यहाँ से स्थिति फिर दोबारा से थोड़ी सेम होती भी जा रही है, क्योंकि एंड में आते आते ना आपके पास एक प्लस पॉइंट आता है और एक गलत फाइट आप ले लेते हो, जिसके कारण आप आउट नंबर हो जाते हो और जो एडवांटेज आपके पास आया होता है वो फिर जो है नलीफाई हो जाता है। और ब्रदर स्पोर्ट्स इसी बात का फायदा उठा रहे हैं हर बारी, जितने बार भी प्लस पॉइंट लॉस के पास आते हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए ब्रदर स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, या तो सामने जाके मार देंगे जो
प्लेयर्स हैं उनको मार देंगे, या ऐसे कोर मेंबर्स आपके मार देंगे जिनके बिना आप फाइट ही नहीं ले सकते हैं। और फिर दोबारा से वही स्थिति यहाँ पे आती हुई दिख रही है एसटीजी कि लॉर्ड ले लिया, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि लॉर्ड जो है मिड लेन पे ही रोक दिया जाएगा क्योंकि आपके पास इनिशिएटर ही नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो बात बोला कि फ्रंट लाइन आपके पास है नहीं, तो दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग नलिफाइड एवरी टाइम। बट यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा कि लॉस्ट सीरियल्स की तरफ से फिनिशिंग तो आ सकता है अभी, क्योंकि उनके पास बहाना भी है, बट कहीं ना कहीं उन्हें लिंग एंड बीट्रिक्स को डाउन करना पड़ेगा। एवरी टीम फाइट यू विल सी दिस टू प्लेयर्स आर रियली गेटिंग द कैच फ्रॉम द मैच। तो डेफिनेटली ये देखिए मिनियंस की टोली मिड लेन से अंदर जाती हुई और उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर बर्स्ट के साथ। आपकी एक भी टरेट मौजूद नहीं, जबकि उनकी 2 टरेट मौजूद है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जब आपकी इनहिबिटर टरेट टूटती है तो मिनियंस का जो साइज है, जो डैमेज है, जो सस्टेन है, वो बढ़ जाता है। तो अभी वो हेवी मिनियंस आ रहे होंगे एंड जो जब लॉर्ड ले लेंगे तो वो और ज्यादा हेवी मिनियंस आएंगे। तो डेफिनेटली वो आपको थ्रैश आउट करने वाला है, लेन प्रेशर आपके ऊपर पड़ने वाला है, और आप अगर एक भी लॉर्ड खोते हो तो फिर आप ही गलत पोजीशन में आ जाओगे। तो लॉस सीरियस इतना अच्छा खेले ये मैच। देखिए, आप किल पे आपके पास इजाफा है, गोल्ड की बात करूं उस पे भी आपके पास एक छोटी सी इजाफा है। अभी तक गोल्ड की इजाफा मैटर नहीं की है इस मैच में, किल की इजाफा मैटर नहीं की है इस मैच पे, लेकिन ये टरेट का इजाफा जरूर मैटर करेगा, क्योंकि टरेट की इजाफा से कहीं ना कहीं मैप एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर टीम ब्रदर स्पोर्ट्स को। लेकिन ब्रदर स्पोर्ट्स के पास भी वही खामियाजा कि वो भी फिनिश नहीं कर पा रहे, उनके भी आउट नंबर हो रहे हैं। कभी कभार फाइट लेते हैं तो वहां पे फाइट हार जाते हैं, लॉर्ड लेते तो सिंक नहीं करते, लॉर्ड लेकर सिंक करते हैं तो फिर फाइट हार जाते हैं वहां पे। तो डेफिनेटली इतनी सारी दुविधाओं के साथ जो है फिनिश करना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण अभी हम उतरने वाले हैं 5वें लॉर्ड। इस मैच का 5वां लॉर्ड है ये। दोनों टीमों ने बारी बारी से 2-2 लॉर्ड लिया है। ये 5वां लॉर्ड कौन लेता है? उससे पहले टेम्पेस्ट ब्लेड का इस्तेमाल, फिर फिनिक्स का इस्तेमाल भी हुआ है। यहाँ पर लिंक के पास एक छोटी सी चांस निकलती हुई, पर अभी भी वो वॉल का यूज करके रेट्रिब्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लेन प्रेशर की बात मैं कर रहा था, उससे जूझती हुई यहाँ पर टीम लॉस सीरियल्स रिट्रीट करेगी और लिंक के पास मौका रहेगा इस स्लॉट को इजीली सिक्योर करने का। बिल्कुल। और चलिए यहाँ पे स्थिति देखते हुए जाएंगे, जरूर मेज यहाँ पे पकड़े जाएंगे लेंगे दोबारा, और देखिए वो बच सकते हैं जो बिल्कुल काफी कमाल का लिंक खेलते हुए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत पड़ सकता है। आर्टिकल का आएगा अनाबी की तरफ से कमाल का डैमेज, लिंक टुगेदर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, लेकिन एमएम के ऊपर यार होता हुआ क्या वो बच पाएंगे? कोशिश उनकी तरफ से, लेकिन द बॉयज उनकी नजर रहेगी इस एमएम के ऊपर। फिनिश ऑफ कर दिया है और पूरी टीम जो है वो फिनिश ऑफ हो चुकी है। लॉस, दे आर इन द लॉस, दे कांट डिफेंड दिस वन, एंड उसी के साथ गेम की आशाएं खत्म होती हुई जाएंगी दोस्तों, क्योंकि मेनियन जो है वो आ चुके हैं बेस की तरफ और बेस लॉक इन करते हुए गए हैं, डैमेज देते हुए, और उसी के साथ कर्ज बल का इस्तेमाल करेंगे जरूर, लेकिन एमएम फिनिश ऑफ हो चुके हैं। फायदा ज्यादा होने वाला है नहीं क्योंकि मिनियंस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बेस की तरफ और फिनिश ऑफ कर दिया गया है ये गेम। और उसी के साथ जो पहला मैच था वो यहाँ पे टीम ब्रदर स्पोर्ट्स जीती हुई। डेफिनेटली वहां पे लॉर्ड से पहले एक छोटी सी फाइट का आगाज हुआ था और उस फाइट में तब्दील किया टीम लॉस सीरियल्स को टीम ब्रदर स्पोर्ट्स ने। वहां पर अच्छी सी ट्रेड मिली उन्हें, बैकलाइन ट्रेड वहां पर चीना है भी आए थे वहां पर टॉर्नामेंट करने के लिए, लेकिन वो खुद फंस गए क्योंकि वो उन्होंने उनको किल मिल गया था लिंक का, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर प्रहार हो गया, जिसके कारण वो बच के पीछे हटना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। शटडाउन हमने देखा उनके ऊपर, बजूका फायर फ्रॉम द बीट्रिक्स डाउन हुए, लेकिन मिनियंस की टोली जबकि अंदर चली चुकी थी तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला था कि टरेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर इस मैच पर, क्योंकि आपके ऊपर लेन प्रेशर पड़ेगा और उस लेन प्रेशर से बचना बहुत मुश्किल होगा, जिसके कारण ये मैच जो है उनके हाथ से गया है। लेकिन सीरीज है BO3 का, तो देयर इज अ चांस दैट वी माइट गोना सी अ रिवर्स स्वीप जस्ट लाइक द लास्ट गेम। वैलिएंट गोल्स बना मॉरियन रॉयल्स के मैच में भी ने क्विक डोमिनेंस किया था ऑन द फर्स्ट गेम, देन वी सॉ द राइज टीम वैलेंट गोल्स। सेकंड गेम क्लिंच किया, थर्ड गेम को डोमिनेटिंगली कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली देयर इज अ वे, देयर इज अ चांस, देयर इज अ विल। तो अगर आप वो विल, वे और चांस को शो करोगे तो आप जीत सकते हो, आप रिवर्स स्वीप करवा सकते हो, आप खींच कर वो हार को जीत में तब्दील कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो अलगैम्बो स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को, तो फिर भैया क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखे हो, अगर आप हमारे फैमिली मेंबर में से एक हो, तो फिर जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी मौका दीजिए अलगैम्बो स्पोर्ट्स पे आके थोड़े से अच्छे
बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे अंडरडॉग सीरीज देखने का, क्योंकि अंडरडॉग्स के पास वो पोटेंशियल है आगे रूल करने का इनटू द मोबा 5v5 सीन ऑफ इंडिया। अगर आप अपनी टीम के साथ इस स्टेज पर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, खुद खेलना चाहते हो अपनी टीम के साथ, खुद वो अंडरडॉग के नाम में जुड़ना चाहते हो, तो देन यू आर वेरी वेलकम टू कम इन। लेकिन आपको कुछ प्रोसीजर्स के साथ आना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो प्रोसीजर्स है वो है कि आपको हमारे वेबसाइट लिंक के अंदर जाके जो लिंक आता है फॉर द स्क्रिम्स, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी टीम को, अपनी टीम के नेम्स, आपकी टीम के आईडीज वगैरह सब रजिस्टर करना पड़ेगा। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन गेट कंप्लीटेड, यू विल वेट फॉर योर टर्न टू कम इन एंड देन यू विल हैव योर मैच। और आप मैच से पहले इन्फॉर्म कर दिए जाओगे हमारे रेफरी। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हो, अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किए हो, तो फिर जल्दी से कीजिए। क्यों कीजिए उसका भी मैं समझा देता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करने के बाद आपको लेटेस्ट इन्फो मिल जाएंगे। जैसे कि पहले 2 दिन होता था स्क्रिम्स, आजकल 3 दिन हुआ, और फिर अभी तो 5 दिन लगातार चल रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी? अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, अगर आप हमारा मैचेस देख रहे हो, वहां से पता चलेगा। अगर देख भी नहीं रहे हो तो फिर इंस्टाग्राम से भी आपको पता चल सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और डिस्कॉर्ड क्यों ज्वाइन करना है? अगर आपके पास टीम नहीं है और इन्फॉर्मेशन आप इंस्टाग्राम पे नहीं पा रहे हो, तो वो आप डिस्कॉर्ड पे पाओगे। अगर आपके पास टीम नहीं है तो वहां पे 1,000 से ज्यादा मोबा 5v5 प्लेयर्स जुड़े हैं हमारे साथ। तो अगर आप उस चीज का पार्ट बनोगे तो डेफिनेटली 1,000 में से 4 बंदे तो आपको जरूर मिलेंगे जो आपके साथ एक प्रॉपर टीम बनाएंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। चलते हैं दूसरे गेम की ओर। जल्द से होने वाला है सेकंड गेम बिटवीन टीम लॉस सरियल्स वर्सेस ब्रदर ई-स्पोर्ट्स। पहला गेम ब्रदर ई-स्पोर्ट्स ने जीता है। शिंदा, व्हाट डू यू थिंक? सेकंड गेम पे कैसे रिस्पेक्ट्स बैन्स होंगे? क्या बीट्रिक्स को छोड़ा जाएगा? क्या बीट्रिक्स का काउंटर उठाया जाएगा? या फिर लॉस सरियल्स जो है वो हार मान लेगी? हम्म ठीक है, हार तो नहीं मानने वाली है। जिस तरीके का गेम उन्होंने दिया है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, वो तो डेफिनेटली फुल फाइट बाय रिवेंज पे आते हुए हमें देखेंगे। और आई थिंक इस बार थोड़ा सा लिंक के ऊपर प्रहार लेते हुए देख सकते हैं। लिंक बैन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एमएम को जितने बार भी तंग किया ना, वो लिंक ने ही किया बैकलेन पे आके। और उनको लाइक बोल सकते हैं कि एक ओपनिंग पोजीशन ढंग से नहीं मिल रही थी खेलने के लिए। क्योंकि जब भी फाइट हो रही थी, फाइट के बीच में जब भी वो डैमेज देने के लिए आ रही थी, आप एक बार नोटिस करेंगे हमेशा लिंक उनको मार करते हुए आ रहे थे पीछे से। या तो फिर बेट्रिक्स जो है, उनकी पोजीशन इतनी बोल सकते हैं कि अच्छी खासी थी। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी चेंजेस हमें आते हुए देख सकते हैं। मे बी शायद बेलरिक का आगमन होता हुआ दिखे, अगर बेलरिक बैन नहीं होते तो। बट मेरे को लगता नहीं वो खुले रहेंगे, लेकिन लिंक वो तो बैन जरूर होता हुआ हमें दिखने वाला है। You should be ashamed for डेफिनेटली not देखते हैं अभी trusting क्या होने वाला है। द yourself. थर्ड मैच, द थर्ड गेम, थर्ड मैच ऑफ द अल्गैम्बो ई-स्पोर्ट्स मोबा वार्म अप क्लास सीरीज। और अभी आप देख उस थर्ड मैच का सेकंड गेम, जो कि डू और डाई है फॉर द साइड ऑफ टीम यू नो लॉस सरियल्स, whereas it's a proper match point game for brother esports। तो ब्रदर ई-स्पोर्ट्स अगर यहाँ पे जीतते हैं, वो क्लिंच करेंगे इस सीरीज को, कंप्लीट करेंगे आज का दिन। लेकिन अगर लास्ट सीरीज जीते हैं तो फिर और एक मैच ऐड होगा आज की इस सीरीज में। हमने पिछले मैच में देखा था थर्ड गेम डिसाइडर हुआ है, तो हो सकता है और एक थर्ड गेम डिसाइडर देखने को मिले। पिछले हफ्ते भी पहले दिन में ही मंडे को ही थर्ड गेम डिसाइडर हुआ था। आज भी वो मौका है लस सीरीज के पास लाने को। है नबी यहाँ पर बैन करते हुए, बराट से यहाँ पर बैन करते हुए, दो रेस्पेक्ट यहाँ पर ब्रदर स्पोर्ट्स की तरफ से। पकीतो, यूडोरा, यूडोरा भी लास्ट गेम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मचाई थी, तो वो भी रेस्पेक्ट है। पकीतो तो ऐसे ही आपको बैन करते हुए दिखेंगे। तो क्या थर्ड बैन यहाँ पर चो के लिए जाएंगे टीम लॉस सीरीज? लास्ट टाइम जो उन्होंने चो बैन किया था, मुझे लगा था कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट है, लेकिन देखते। फिलहाल के लिए तो थर्ड बैन ब्रदर ई स्पोर्ट्स के आगे मंडरा रहा है। तो क्या लग रहा है शिन, विल इट बी एट लास्ट? एटलस अगर हो सकता है, मे बी शायद यहाँ पे जा सकते हैं। अगर एटलस नहीं जाएंगे तो आई थिंक लिंक वगैरह जो है वो बैन आते हुए दिखेंगे, लेकिन नहीं, ग्लू की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चाव लगातार बैन हो रहा है। और चाहती नहीं है कि सामने से जो चाव है वो एक बार भी आए। और थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रिस्पेक्ट बैन है, या तो टारगेटेड बैन हमें आता हुआ दिख रहा है लगातार। चाव से इतना खतरा, ओके। हो सकता है क्योंकि पिक ऑफ है, तो डेफिनेटली आप रोम पे खेल सकते हो, आप ईएक्सपी पे खेल सकते हो, मोस्टली इनटू द रोम। एंड रोम पे जब आप पिक ऑफ कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली थ्रैश आउट द बैकलाइनर। अगर आप सोचिए लास्ट मैच टीम चो बैन नहीं करती और उस बराट्स के साथ एक चो रहता वहां पर,
तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होने वाला था हैनबी को एज वेल एज उनके जो मिड लेनर है जेटियन को। वहां पे पैसिव हट जाता, लिंक के पास मौका रहता इजी थ्रैश आउट करने का। तो चाओ बैन करना एक अच्छी सूजी बूजी हरकत यहाँ पर लॉस एंजल्स की तरफ से। पहला पिक ऑन टू द सलीना ब्रदर esports। आई वाज थिंकिंग फॉर अ बेलरिक, आई वाज थिंकिंग फॉर दैट क्लास। दोनों ऑप्शन यहाँ पर खुले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सलीना का वो ऑप्शन को पिक करते हैं और मार्शल आता हुआ। नोबडी वांट्स टू गो फॉर द बेलरिक एज दे विल गो फॉर अ मार्शल एंड अ गॉड। क्या यहाँ पर एक बेलरिक आएगा? प्रोजेक्टाइल प्लस गोल्डन आवर, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट करती हुई लास्ट सीरियल्स इन अ डू और डाई गेम। और यहाँ पे टीम ब्रदर esports हिरारा के साथ जाते हुए जंगल पर एंड रोम पे, नॉट रोम बट EXP पे यूरेनस। भाई क्या तगड़े पिक्स आ रहे हैं यहाँ पर दोनों टीम की तरफ से। लाइक सीरियसली लास्ट टाइम जैसा ही है कि कोई हार नहीं मानना चाहता है। Gaze upon मैंने the बोला था edge of कि the आज void. पूरा रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा और लोगों में पिक आ चुका है यहाँ पे एसटीजी। ओके, आइदर दिस विल बी अ भाई बूम बैम वाला मैच होने वाला है, या तो एक साइड जाएगा या तो भाई दोनों ऐसे जैसे पिछला गेम में था ना भाई, बराबर की कांटे की टक्कर हो रही है। एक साइड पे गेम झुक रहा है, हमें लग रहा है यहाँ पे ये वाली साइड जीतने वाली है, फिर दोबारा से सामने बैलेंस आउट हो जाता है कुछ और होते हुए, तो वो कहीं ना कहीं आते हुए हमें दिखेंगे। लेकिन अर्ली गेम की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त की सलीना का Time दस and एरो tide अगर wait कनेक्ट for होते हुए no लगते हैं man. तो हिरारा Not उसका girl. पूर्ण The रूप से night फायदा sky उठाएगी, tells क्योंकि all. हिरारा के पास ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज रहता है, उसके पास मोबिलिटी रहती है और Magic is लेवल my 2 में ही उसका life. स्पाइक आ जाता है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो देखिए सस्टेन करने के लिए यूरेनस भी है, आगे की तरफ खेलते देखेंगे। अभी रूम एक और आने वाला है, लेट्स सी यहाँ पे रूम क्या आएगा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं Pain कि किस रूम is के the साथ जाते हुए proof that दिखेंगे, I'm क्योंकि still उनको alive. बर्स्ट अभी देखा जाए ना वो कहीं ना कहीं नहीं है, एमएम के रूप में भी देखना पड़ेगा बर्स्ट क्या आएगा। लेकिन उससे पहले बैन्स की बात करें तो काफी अच्छे बैन्स यहाँ पे इस बार जो है कहीं ना कहीं मार्क डाउन किया है बेट्रिक्स को, उसके साथ साथ हैरिक को भी यहाँ पे लॉक इन के लिए लेते हुए दिखे हैं। लेकिन Let पिक्स की them बात play करें the अभी भी जो hero. है यहाँ पे I एमएम will be वो the ओपन truth रहेंगे, this यानी world कि desperately अपने जो क्लॉड है needs. वो अभी भी ओपन है। शायद क्लॉड की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, ड्रैगन का आगमन होगा, ड्रैगन में बोलूंगा ठीक है, अच्छा पिक है। बैकलाइन को टारगेट कर सकते हैं, सलीना को पकड़ने का प्रयास रहेगा उनका, या हिरारा अगर बस्ती में निकलती है तो वहां पे एक अच्छा अप्रोच रह सकते हैं। उसके साथ साथ लेट्स सी क्या आता हुआ दिखता है। मे भी शायद अगर मेरे को लग रहा था कि अगर माशा पिक अगर आती है ना भाई, माशा भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है अगर देखा जाए तो। लाइक उनकी तरफ से अच्छे खासे डैमेज आता है। Come on, ओके, Dexter. एटलेस It's के our साथ जाते हुए दिखे, showtime. मैं बोल ही रहा था यहाँ पे। और उसके साथ क्या बोलना चाहेंगे स्टीज यहाँ पे ये भाई खतरनाक कॉम्बो, ओ माय गॉड, दिस पिक्स लाइक क्या बोलूं मैं, सारे एस टीयर पिक है यहाँ पे। कॉम्बो तो मस्त है, लेकिन मुझे पता नहीं इस मेटा पे क्लॉड इतना ज्यादा रसता नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं, बट आई हैव आंसर फॉर इट। क्योंकि क्लॉड इज लाइक अ स्नोबॉल हीरो, अगर आप उसको अर्ली गेम पे थोड़ा रोक देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए। डेफिनेटली क्लॉड, लेट्स सी एग्जीक्यूशन पार्ट पे पता चल जाएगा। मेलिसा यहाँ पर आया है तो एक तरीके से क्लॉड के पास वो आउट रेंज करने का मौका नहीं रहेगा, बिकॉज आप क्लोज रेंज पे जाके खेलते हो। क्लोज रेंज पे मेलिसा का वो अल्टीमेट होता है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक रखाएगा आपके ऊपर। पर दोनों टीमें सेट के साथ कंप्लीट है। यूजोंग इनटू द EXP, क्लॉड इनटू द गोल्ड, मेलिसा विल बी द काउंटर, सो डू द यूरेनस ऑनटू दिस यूजोंग। अच्छी खासी काउंटर स्ट्रेटजी के साथ लॉस्ट सीरियल्स यहाँ पर गई है, लेकिन ये नोलन हिरारा वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। नोलन डेफिनेटली फ्रैक्चर है, डेफिनेटली मोबिलिटी है, बट हिरारा के पास वो इम्यून भी है। तो दिस गेम इज एक्चुअली टोटली, आई मीन, डिपेंडेंट ऑन टू द अर्ली गेम स्नोबॉल। सलीना आया है, स्टन तो रहेगा, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट at least 8 out of 10 as a good Selena और 5 out of 10 as an average Selena। 2 out of 10 लगता है तो फिर आप poor Selena हो। फिलहाल के लिए मैच स्टार्ट हो चुका है। अर्ली गेम पर यहाँ पर स्ट्रम्बल करने की कोशिश यूजोंग यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तबाही ब्रदर esports स्टार्ट किया है यहाँ पर अपना पहला किल का सिलसिला। यहाँ पे सिलसिला ये किल यहाँ पर मिलता हुआ टीम ब्रदर esports को। क्या यहाँ पर हमें एक रिटेलिएशन देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर हमें एक रिवेंज आर्क खुलता हुआ दिखेगा? नो, राइट ऑन टाइम, एस्केपिंग बैक, रिटेलिएटिंग बैक इनटू द सेफर जोन। देखना पड़ेगा, थोड़े सा बुली करते हुए दिख रहे हैं टॉप लेन की तरफ अगर नजर डाले तो।
और दूसरी साइड की तरफ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेलिसा जो है यहाँ पे लेन फ्रीज करते हुए दिख रही हैं और ये अच्छी बात है कि सामने वाले को आप मजबूर करेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, वो अपने टावर से बाहर आए और फिर एम्बुश होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब इधर की साइड देखना पड़ेगा सलीना के कितने हुक्स जो हैं वो यहाँ हुक्स तो नहीं मैं बोलूंगा यहाँ पे एबर्सल एरो जो है वो कितने ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो रहे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। इदारा की बात करें वो वहां पे फार्म करती हुई दिखेंगी, दिक्कत हो सकती है। मार्शल जरूर आएंगे यहाँ पे पीछे हटते हुए दिखे और बढ़िया मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्लिकर आया एमएम की तरफ से। सन यहाँ पे जो है मार्क लगाते हुए दिख सकते हैं। एटलस अंदर की तरफ आते हुए दिखेंगे, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा और एबर्सल एरो कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। दिक्कत में पड़ सकते हैं, फ्रैक्चर का इस्तेमाल किया लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी वहां पे किल्स के ऊपर। फंसे वहां पे मार्शल और उसी के साथ उनको धाराशायी किया जाएगा। अभी टर्टल की टीम जो है वो आती हुई दिखेगी। ओके कनेक्ट होता हुआ दिखा है, एटलस पीछे से आएंगे, आर्टी कोल्ड और पीछे हटे इस समय वो पैसे उनका लगता हुआ दिखेगा, लेकिन ड्रैगन उनका एक अच्छी एंट्री बन सकती है। यहाँ पे कोशिश रहेगी, मार्क करना चाहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से वो मार्क नहीं लगेंगे जिसके कारण उनको पीछे हटना पड़ेगा। बचते हुए निकले नारा, एक अच्छी बचते हुए निकलेगी, टर्टल के लिए अभी नहीं आते हुए दिखेंगे। फिर दोबारा से फिर दोबारा कनेक्ट होगा और मार्शल को फ्रीली ओपन में घूमने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बार बहुत ज्यादा उनको दिक्कत का सामना पड़ना है, लगातार सीसी उनके ऊपर पड़ रहे हैं और ये देखिए टर्टल लेने का प्रयास करती हुई दिखेगी। रारा वहां पे मौजूदा है, अभी भी ड्रैगन उनके पास वो अल्टीमेट नहीं रहेगा इस समय, ब्लैक ड्रैगन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो कोशिश उनकी तरफ से आती हुई दिखेगी और पीछे की तरफ से गए लेकिन लोगों की तरफ से कमाल का रेट्रीब्यूशन आता हुआ और चुराते हुए लेके जाएंगे वो टर्टल। और इसी के साथ थोड़ा सा चेंजेस आते हुए दिखेगा, मार्शल की तरफ चाहते हुए दिखेंगे, रारा को दिक्कत देते हुए दिखेंगे, गोल्डन आवर का इस्तेमाल किया लेकिन बचते हुए निकल जाएंगे और इसी के साथ वापस सी होती हुई दिखेगी, रेड बफ लेते हुए जो आएंगे। ओ यहाँ पे मिस्टेक आता हुआ दिखेगा, सलीना के ऊपर कमाल का स्टन, मौके का फायदा उठाया, वापसी निकले यहाँ पे और उनके जंगल पे क्रॉस जंगल करने का प्रयास काफी ज्यादा सफल रहेगा। रेड बफ उनको मिलेगा, गोलम लेने का प्रयास लेकिन नहीं चुकेंगे वहां पे। और अब यहाँ पे अच्छी स्थिति उन्होंने थोड़ी सी बोल सकते हैं कि लॉस ने संभाली है, वो बैलेंस आउट करते हुए दिखेंगे अच्छे खासा। और हिरारा अंदर की तरफ गए, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, हिरारा को फ्रैक्चर पड़ेगा जी बिल्कुल और एक और किल मिलेगा यहाँ पे दोनों की तरफ से। मैक्स अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं कि एडवांटेज जो क्लियर आउट करना चाहते थे एज अ जंगलर आपको चाहिए होता है, एक लेवल एडवांटेज चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं उनको ये फार्म करके जरूर मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्टार्ट यहाँ पर टीम ब्रदर esports की तरफ से, लेकिन उसके बाद हमने रिट्रीब्यूशन देखा टर्टल पर एंड एक किल का इजाफा भी देखा। फिर से वही चीज है, टीम में जो है वो ऑफिशियली प्रोफाउंड प्रॉपर लीड नहीं दे रही है, इट्स लाइक रेमिनिस ऑफ लीड जो इजीली क्लियर आउट हो रहा है सामने वाली टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एरो लगता हुआ, टिक गोल्ड आता हुआ और साथ ही साथ गोल्डन आवर, he managed to go back into the safer side because of this golden hour follow up, लेकिन रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज्यादा बेटेड आउट हो गए यहाँ पर टीम लॉस सीरियल्स की तरफ से। तो टर्टल की फाइट के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। ड्रैगन मौजूद मिड लेन पर यहाँ पर फाइट 1v1 सिचुएशन, यूरेनस इज एक्चुअली सस्टेनिंग आउट, ऑब्वियसली सन यूरेनस तो सस्टेन तो करेंगे ही। इन टर्टल के पास यू डोंट हैव द गोल्डन आवर पे अभी बहुत बड़ा कूल डाउन लगा होगा, मिस्टिक गस्ट मौजूद है तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मिस्टिक गस्ट तो मौजूद है, लेकिन जो यूज करने वाला बंदा है वो मौजूद नहीं यहाँ पर, उसको माही के साथ यहाँ पे ट्रीट आउट करते हुए मिड लेनर फॉर द रोमा and at the same time we're going to see the double petri combo used as well. Uranus trying to sustain it out, Nolan going for the turtle, is getting Strumble, is getting zone out. We're going to see that beautiful approach from the Hirara, but the retribution will eventually go into the hand of Nolan and he's gonna get the second turtle as well. 3-2 the score and 2-0 in the match for team Lost Surreales. बिल्कुल, और उसी के साथ जो टीम वासी की तरफ आती हुई दिखेगी, अभी देखा जाए तो लाइक बोल सकते हैं कि मिस्टिकस पड़ता हुआ दिखा नहीं, चलिए बोल ही रहा था मैं, और यहाँ पे लगता हुआ दिखेगा, लेकिन सलीना उनके पास मोबिलिटी रहेगी, बचते हुए निकलेंगे पीछे आराम से और बहुत ही कम एचपी पे रहेंगे अभी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बोला जाए तो एरोस की अगर बात की जाए तो ऑन पॉइंट लग रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि चलिए वर्क कर रहा है आपके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी, कुछ करते हुए दिखेंगे। अंदर की तरफ गए हैं, हिरारा वहां पे मौजूदा है, पीछे से आते हुए दिखेंगे, फॉलो अप का इंतजार कर रहे हैं अभी, एक अच्छा बोल सकते हैं यहाँ पे कि चेन टुगेदर वो लगाते हुए दिख सकते हैं, कोशिश उनकी तरफ से रहेगी, पेटल लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
यहाँ पे गए अंदर की तरफ डैमेज देते हुए गोल्डन आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा, डैमेज देते हुए फ्रैक्चर लगेगा जरूर और उसी के साथ दाराशाही होते हुए दिखेंगे पीछे से एटलस वो आते हुए दिखेंगे। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया है, मेल्टडाउन करने का प्रयास, फ्लिकर यहाँ पे यूज अप जरूर होगा और चलिए बचते हुए निकल जाएंगे। इस समय मौके का फायदा उठाते हुए मेलेसा वहां पे रहेंगे मौजूदा और आपका जो टरेट है वो लेने का प्रयास करती हुई दिखेंगे और आई थिंक वो ले भी लेंगे इस बार। सलीना जरूर मौजूदा है वहां पे और चलिए मिल गया है वहां पे टॉप का जो टावर है उसमें सफलता मिलेगी। स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी सफलता, मैक्रो के ऊपर थोड़ी सी सफलता। 1 2 3 अभी स्कोर इक्वलाइज हो गया है for both the side. Lost Surreales, they're trying their best to cope up it with. We can see that tier 1 going down. एक मैप एक्सपोजर भी करवा दिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हिरारा के पास यहाँ पर स्नोबॉल नहीं है, जिसके कारण केवी इतना ज्यादा मतलब तरीके से किल सिक्योर नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर नोलन ब्यूटीफुल डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्चर, इजी डिफ्लेक्ट वहां पर किया, लेकिन देख सकते हैं खुल चुका है तीसरे टर्टल का गेट और उस टर्टल के खुलते हुए ही स्टार्ट कर दिया है एजेक्स एंड को onto the turtle. अभी शिलारो मिस आउट होगा, टर्टल के लिए नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। फ्री टर्टल यहाँ पर मिलता हुआ लॉस्ट सरियल्स को, दैट विल बी अ फ्री टर्टल फॉर मैक्स। इसी के साथ तीनों के तीनों टर्टल यहाँ पर सिक्योर करती हुई लॉस्ट सरियल्स। एक मैक्रो पे प्रबल दावेदार, प्रबल बढ़त और ये देखिए इन्वेड करते हुए ब्लू बर्फ यहाँ पर छीनेंगे। गोल्डन आवर इस्तेमाल हुआ फ्लिकर के साथ, पीछे हटते हुए यहाँ पर मार्शल उनको चेज डाउन करते हुए बहुत ही कम एचपी पे यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। शट डाउन हुआ है यहाँ पर हिरारा की तरफ से, पीछे से यहाँ पर मिस्टिक प्रोजेक्टाइल का स्टन। We're going to see that beautiful escape coming out here and look at this. Talon, he goes in for the fracture, couldn't manage to connect it down there, but now he will be escaping back to the safer side after taking down the blue buff and the turtle away from that Hirara's hand. कोशिश अच्छी की थी वहां पे मैक्स ने वो किल निकालने की हिरारा के लिए, लेकिन एक अच्छी में बचते हुए निकले। यहाँ पे ड्रैगन की भी बात करिए तो काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, लगातार पूक कर रहे हैं एनिमीज को, लगातार प्रेशर उनकी तरफ से भी आ रहा है। लेकिन अभी प्रेशर असली जो है वो एमएम की साइड से आने वाला है, क्योंकि मेलेसा का जब डैमेज और ज्यादा बढ़ेगा ना, तो मेलेसा के साथ आपका एक प्लस पॉइंट ये रहता है ना, जब भी आप बोल सकते हैं कि टावर फाइट लेते हुए दिखेंगे तो वहां पे आपका एडवांटेज रहता है। आज मजबूर करते हैं अपने एनिमीज को कि पीछे हटने के लिए अपने पपेट डॉल से, और वहीं पे जो है टावर निकालते हुए हमें देख सकते हैं कोशिश रहेगी और ये हील होते हुए दिखेंगे। यूरेनस हील करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, फ्रैक्चर आएगा पीछे से और माही वो यहाँ पे जा रहा होते हुए हमें दिखेंगे, कोशिश रहेगा लगेगा जरूर। गोल्डन आवर का इस्तेमाल किया, मारने का मौका नहीं, प्रोजेक्टाइल आएगा, कनेक्ट होगा और उसी के साथ फ्रैक्चर लगता हुआ कमाल का गेम प्ले आता हुआ इस बार लॉस उनकी तरफ से। बोल सकते हैं कि इस बार कमाल की कॉलिंग, इस बार कमाल का एग्जीक्यूशन आ रहा है उनकी तरफ से। हर एक सेट, हर एक टीम फाइट पे वो कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और देखिए बचते हुए निकलने का प्रयास करेंगे। हिरारा जरूर ओके बहुत ही अच्छी हुई बचते हुए निकली है, लेकिन वो ब्लू बफ उससे हाथ धोना पड़ेगा। लॉर्ड का आगमन हो चुका है और टीम जो है यहाँ पे लॉर्ड फाइट होती हुई दिख सकती है, लेकिन उससे पहले लगेगा यहाँ पे अल्टीमेट, लेकिन ज्यादा फायदा होगा नहीं। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया है, फ्लिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीछे से बचते हुए निकलेंगे। यूरेनस वहां पे मौजूदा है, लेकिन वो द्वारा जाएंगे 4 बंदों के बीच में और मेरे दोस्त ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब भी आप फार्म में कम चल रहे हो ना, तो नंबर ऑफ द टीम फाइट में आप नहीं जीत पाओगे। अगर आप आउट नंबर हो तो 1 वर्सेस 2 नहीं कर पाओगे आप, चाहे सामने वाला जितना भी लो, आप इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास एडमिशन नहीं है, आपके पास वो लेवल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि पीछे से उनका जो डैमेज है ना, वो बेसिक में ही इतना ज्यादा डैमेज लग जाएगा आपको कि आप एक किल के लिए जाएंगे लेकिन डबल किल देते हुए आएंगे, वहां पे दिक्कत होती हुई दिखेगी। और इसी के साथ एक बार एटोमेशन के ऊपर नजर डालना चाहेंगे, स्टेजी देखना चाहेंगे एटोमेशन के ऊपर क्या यहाँ पे बनाते हुए हमें दिखे। डेफिनेटली देखते हैं फिलहाल के लिए क्या होता है। और ये देखिए सस्टेन एंड स्टन विद द गोल्डन आवर, मिस्टिक प्रोजेक्टाइल विद द मिस्टिक क्रैश, अब आता हुआ काबी गोस डाउन, बैटल इज कनेक्टेड एज वेल, दैट्स अ मॉन्स्टर फ्रॉम मैक्स एंड यू गोना गो इन फॉर एंगेज। मेलिसा यहां पर टॉर्मेंट करती हुई एट लास्ट आर्टिक गोड के साथ यहां पर आगे बढ़ते हुए रिफ्लेक्ट किया है, डिफ्लेक्ट किया है एंड रिटेलिएट किया है बैक इनटू द पेस, बट लॉर्ड यहां पर पूरी तरीके से खुलता हुआ फॉर लॉस्ट सरियल्स। They are here to go in for the third game decider. They are here to turn the table for the game number 3. They're not going to stop with the second game. They're taking it far towards the third game.
और ये गेम थर्ड गेम अगर जाता है तो फिर ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के लिए वो मौका थोड़ा सा हाथ से खिसक जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉस सीरियल्स ने कमबैक करवाया है खुद को इस दूसरे गेम पर, पहले गेम पे भी ऐसा नहीं था कि पूरा डोमिनेशन के साथ जीती थी ब्रदर ई-स्पोर्ट्स। इट वाज अ फ्लिक ऑफ टाइम, इट वाज अ conversion of damage and conversion of trades, or you can say the clearance of the turrets which managed to give them the proper win। और इस बार आपके पास हिरारा है, कम बैक करने की चांसेस नहीं है। क्लॉड, मैंने पहले से बोला था, एक ऐसा हीरो जिसको स्नोबॉल चाहिए, अगर स्नोबॉल नहीं मिलता तो लेट गेम पे इतना ज्यादा जो है अभी फिलहाल के लिए इस मेटा पे तो कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी फाइट, फैटलिंग्स कनेक्ट होता हुआ पीछे से ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर जोन आउट करते हुए गॉड लाइक जाके अंदर गए हैं, माही को टेक डाउन करेंगे, मैक्स टर्रेट सिक्योर करेंगे यहाँ पर एज़ेक्स होते हुए। कोई बच सकता है क्या? एज़ेक्स हर एक टरेट पे अपना छाप छोड़ते हुए। अटैक स्पीड इज वर्किंग सो वेल, आई डोंट नो व्हाई, बट मेलिसा अगर ला रहे थे एटलास नहीं जाना चाहिए था। बेलरिक आपके पास एक ऑप्शन था, राथ ऑफ ड्राइड यूज हो सकता था, टॉन्ट आ सकता था, एंड विद हिरारा एक्चुअली द बेलरिक वर्क्स सो वेल। किलिंग स्प्री, Kabi goes down, minions are entering into the nemesis, we can see the holy shields are already taken out here। और इस बड़ के मीनियन के साथ टरेट 1 यहाँ पर टूटने के कगार पर। मिस्टिक गश आता हुआ तुरंत punish करेंगे, it is spotted in the air, Atlas comes in but he will also get taken down, fall off with a double, and now the Melissa goes in, flicker, PMI, Claude goes back at the safer side, but now the turret on the top will eventually get secured, and the nemesis will just get opened for the side of team Lost Surreales। एक के बाद एक टरेट यहाँ पर टूटती हुई, और ये टरेट नहीं, ये होप है ब्रदर ई-स्पोर्ट्स का। 2-0 का होप यहाँ पे टूट रहा है, लॉस्ट सीरियल्स का तीसरे पायदान को इस मैच को ले जाने का होप बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, और उसी के साथ कोशिश रहेगी यहाँ पे डिफेंड करने की। लेट्स सी किस तरीके से जो फाइट्स है वो यहाँ पे दोबारा आती हुई दिख सकती है। गोल्डन आवर का इस्तेमाल हो सकता है, वेट करने का प्रयास कर रहे हैं। टेरेट यहाँ पे टूटेंगे जरूर, मिनियंस जो है यहाँ पे इमोबिलाइज कर दिए गए हैं, और उसी के साथ जो है टीम थोड़ी वापसी की तरफ आती हुई, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी जो है एंड तो नहीं होगा, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। एक लॉट की आशंका यहाँ पे रहने वाली है, और उसी का इंतजार करती हुई दिख रही है टीम। बात की जाए लॉस, उनकी तरफ से फुल रिटेलिएशन आता हुआ, और लग रहा है पिछले बार की हार का बदला यहाँ पे लेना चाहती है, और दिखा रही है डोमिनेशन। 4-13 का वो स्कोर इस समय चल रहा है, और आई थिंक और ज्यादा बढ़ने वाला है। लॉर्ड का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है एसटीजी, और फाइट जो है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कमबैक करने का कोई भी चांसेस मुझे दिख रहा है ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि उनके पास वो हिरारा है जिसके पास स्नोबॉल नहीं है, उनके पास वो क्लॉड है जिसके पास अभी तक डैमेज नहीं आया है, उनके पास वो अटलास है जो कि मिस्टिक गस से पनिश कर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इवन द यूरेनस इज नॉट गेटिंग दैट मच सस्टेन, तो आपके फ्रंटलाइनर उतना ज्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहे, आपके बैकलाइनर के पास मौका नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली ये मैच यहाँ से कमबैक करवाना ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के लिए इज लाइक बहुत मुश्किल। इस अनबिलीवेबल स्टफ यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर वो यहाँ से कमबैक करते हैं। पूरी टरेट्स आपकी जा चुकी है, देयर इज नॉट अ सिंगल होप बीइंग स्टेइंग देयर। ये देखिए मिस्टिक गश, मिस्टिक प्रोजेक्टाइल कनेक्टेड, यूनास ऑन द वर्ज ऑफ टेक इट डाउन 8 so oh that's a monster kill for Fallout, he managed to secure it down। legendary यहाँ पर मैक्स के हाथों में लगता हुआ minions के साथ slain on the pros no limit, and now I think before the Lord eventually come in, Selena को भी यहाँ पे डाउन किया। इसी के साथ गेम जाता हुआ तीसरे पायदान पर, यानी कि Heaven's Call is for real guys। We are entering into the third game decider for the second time on the same day at Algambo Esports MOBA Class Series। Are you all excited? Are you all ready? क्योंकि आने वाला है तीसरा गेम, यहाँ पे जो है चीजें सेटल आउट होगी, इसके बाद और कुछ नहीं। ये आखिरी गेम है, आज के दिन का आखिरी गेम होगा, और इसके बाद पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर ब्रदर ई स्पोर्ट्स कंप्लीट करेगी विद अ विक्ट्री, या फिर लॉस्ट सीरियल्स रिवर्स स्वीप के साथ कंप्लीट करेगी अपना पहले मैच का हार का बदला। कमाल का गेम प्ले, कमाल का डोमिनेशन इस साइड पे, और कहीं ना कहीं बोल सकते कि 2 हीरो आपने ऐसे उठाए थे स्नोबॉल वाले, और वहां पे कहीं ना कहीं वो स्नोबॉल मिला नहीं। और आप बोल रहे थे जिस तरीके से एसटीजी की क्यों क्लॉड यहाँ पे वीक पड़ गए, क्योंकि उनको स्नोबॉल की जरूरत रहती है। अगर वो स्नोबॉल यहाँ पे कर पाते हैं अर्ली गेम पे, वो रूम बना पाते हैं, तभी वो चलते हैं। और पिछले बार जिस तरीके से वो गेम यहाँ पे चल रहा था, लेकिन इस बार वो गेम कहीं ना कहीं पीछे रहता हुआ, जिसके कारण जो टीम थी
वो यहाँ पे वापसी करती हुई दिखी है, रिटेलिएशन दिखाती हुई दिखी है पूरी तरीके से। क्या यहाँ पे वो रिवर्स स्वीप कर पाएंगे? वो सवाल जो है दर्शकों के बीच में भी रहने वाला है और हमारे बीच में भी रहेगा, क्योंकि गेम नंबर 3 कुछ ही देर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए टीम जो है ना वो भी रेडी होने वाली है। नई स्ट्रेटेजीज वगैरह वो दोबारा से कुक अप होती हुई हमें दिखेगी और आई थिंक यहाँ पे थोड़े से चेंजेस जो है कहीं ना कहीं आते हुए दिख सकते हैं इस बार। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश रहेगी जरूर, वेट करने का प्रयास करते हुए हमें दिखेंगे इस बार थोड़े से चेंजेस जो है पिक्स के ऊपर वो कहीं ना कहीं हमें आते हुए दिख सकते हैं और वेट यही रहेगा कि किस तरीके के चेंजेस जो है वो हमें दिखेंगे, क्योंकि पिक्स की बात की जाए इस बार क्लॉड इतने अच्छा से चले नहीं। हिरारा की बात की जाए वो भी इतना अच्छा खासा स्नोबॉल उनको मिला नहीं था, जिस तरीके से फाइट वगैरह गई थी। अर्ली गेम उनके हाथ से जा चुका था, अर्ली गेम जैसे ही गया उनके हाथ से मिड टू लेट गेम वो तो फिर पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। कोशिश आप देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वापसी यहाँ पे आती हुई हमें दिखेगी। क्या रिवर्स स्वीप हमें आता हुआ दिखेगा या फिर बोल सकते हैं कि जो दूसरी टीम थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो नाम है वो जो छाप है वो जीत के साथ छोड़ती हुई हमें दिखेगी। लेट्स सी किस तरीके का जो फाइट है वो यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि गेम नंबर 3 कुछ ही देर में यहाँ पे स्टार्ट होगा स्टीजी। वेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और गेम नंबर 3 टीम्स का थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि फटाफट से वो मैच की तरफ आए, मैच की तरफ बढ़े और आखिरी मैच जो है यहाँ पे वो कदम होते हुए हमें दिखने वाला है। आखिरी मैच गेम नंबर 3 की तरफ जाता हुआ एसटीजी कहना चाहूंगा कि लग रहा था जिस तरीके से गेम यहाँ पे गया है कमाल का गेम प्ले आता हुआ दोनों टीम की तरफ से। और चलिए आते हुए हम देखेंगे यहाँ पे ड्राफ्टिंग की तरफ, एक तरफ जी यहाँ पे ब्रदर ई स्पोर्ट्स वो रहने वाली है, दूसरी तरफ बात की जाए लॉस वो यहाँ पे रहेगी। और देखा जाए अभी ना जिस तरीके से गेम पलटा है पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि थोड़ा सा ड्राफ्ट की तरफ भी थोड़ा सा गए। दो आपने ऐसे हीरोज लिए थे जो स्नोबॉल की तरफ रहते हैं, थोड़ा सा उनको फार्म चाहिए होता है और हिरारा का गेम भाई अर्ली गेम रहता है, लेट गेम में वो तभी चल पाती है अगर उनको अर्ली गेम पे स्नोबॉल मिला हो। वही वही मैंने पहले से ही बोला था कि लाइक अर्ली गेम आप हिरारा गए हो लेकिन उतना ज्यादा सेटअप नहीं मिला। जिस हिसाब से नोलन किल ले रहे थे उस हिसाब से हिरारा को उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं मिला। मैंने Different बस एक ही किल perspectives देखा था उनकी तरफ expose से the एंड same truth. दैट वर्क्स सो वेल, You बट should be राइट नाउ ashamed गाइस for इट्स not नॉट सो trusting इजी टू मेक द yourself. कमबैक, क्योंकि अभी उनको पता है कि कौन से हीरोज कहाँ पे किस समय यूज करना है। क्लास यहाँ पर बैन होता हुआ यूडोरा को रेस्पेक्ट करते हुए लॉस सरियल्स यहाँ पे सो डू द मार्शल इज गेटिंग बैन हियर। पहला पिक मार्शल आया था, अटलास बेलरिक दोनों खुले थे लेकिन मार्शल के साथ उतरी थी लॉस सरियल्स और क्या कमाल का गेम प्ले I दिखाया था might उस not मार्शल be के a साथ। lightning man, मार्शल but I एज वेल do एज know गॉड my trades. दोनों ऐसे हीरो जो कि मतलब संगे मरमर के लिए बने हैं। तो डेफिनेटली लाइक एक प्रोजेक्टाइल हीरो विद अ गोल्डन Love आवर काइंड ऑफ is अल्टीमेट, ये like तो blood. भाई मतलब ऐसा हो गया कि वो पिज्जा के स्लाइस पे पाइनएप्पल का वो तड़का। बट यहाँ पर I am कैरमेला the को बैन करते हुए moonlight लास्ट that सरियल्स breaks आखिरी through the बैन यहाँ पर आता darkness. हुआ। दैट्स ऑन द मिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द मिया टू गेट बैन हियर फ्रॉम ब्रदर esports, बट सोच का दायरा उन्होंने बढ़ाया है, शायद कुछ सोच विचार रखे होंगे उसके कारण इसमें आपको बैन किया है। और पहला पिक यहाँ पर पकीतो, हाउ कैन यू ओपन अ पकीतो बैनिंग अ मिया? आई कांट हम्म बिलीव किस तरीके से आपने हम्म पकीतो खुला छोड़ दिया मिया को बैन करने के लिए। ऐसा ये तो ऐसा हो गया कि लाइक यार भेड़ बकरी हम ना रखेंगे लेकिन उसकी जगह चिकन रखेंगे। अब भाई सावन के महीने पे हम कुछ नहीं खाएंगे लेकिन अंडा जरूर खाएंगे बिकॉज अंडा जो है वो भेज में जाता है। यार कैसे हो गया ब्रदर ई स्पोर्ट्स, दे गोना गो फॉर द बेलरिक फर्स्ट Hope पिक। will अगर find a बेलरिक way, जाना ही था तो फिर आप even मियाँ when खुला all is छोड़ सकते थे forlorn. वेक्साना यहाँ पर आती हुई पकीतो को थोड़ा सा स्ट्रम्बल देने के लिए, लेकिन दो पिक्स अभी भी बाकी लॉस सीरीज के पास। क्या यहाँ पर हमें असैसिन में कुछ अलग देखने को मिलेगा? द हिरारा इज ओपन, देयर इज अ चांस टू गो फॉर द नोलन अगेन, हार्ली इज ओपन राइट नाउ, यू कैन आल्सो ट्राई द लिंग। तो देयर इज ऑल दिस ऑप्शन। मैक्स पिछले मैच में जॉय, उसके बाद वाले मैच पे नोलन, तो तीसरे गेम पे क्या कुछ और असैसिन उनके पॉकेट पे? क्या एक अल्टीमेट फैनी के लिए जाएंगे? देखने वाली बात होगी
आई डोंट थिंक ये फैनी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है हमको, क्योंकि फैनी के साथ ना बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहता है बफ को लगातार डिफेंड करने का, और अर्ली गेम इनवेड वो चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं बेलरिक के साथ। तो लेट्स सी। और चलिए मिड लेन पे मिस्टिकस स्वाद हवा में दिखेगा, इरारा उठाया जाएगा इस बार बदर स्पोर्ट्स। लेट्स सी क्या जवाब देते हैं यहाँ पे इरारा का इस बार। अब पकीतो यहाँ पे पिक हुआ है, तो लेन कट ऑफकोर्स होता हुआ दिखेगा, विनिंग लेन हीरो है, और मैं कहूंगा EXP पे सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट हीरोज में से अभी चल रहे हैं EXP पे। सबसे लाइक बोल सकते हैं कि टॉप पे अभी पकीतो चल रहे हैं, सबसे नंबर 1 प्योरिटी बने हुए। और मैं तो ओपन छोड़ता ही नहीं हूँ भाई पकीतो को, कभी भी हमेशा बैन करता हूँ मैं, क्योंकि भाई नहीं पता भाई उस बंदे का, अगर अर्ली गेम पे नहीं चला भाई, लेट गेम में भाई आइटमाइजेशन बना के भाई वो वन शॉट कर देगा फिर MM को पीछे से बैकलेन से आता हुआ, बहुत गंदा एम्बुश करके खेलते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे स्थिति आती हुई दिखेगी, रेंज की तरफ जाते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा क्लिंट यहाँ पे लिया जरूर है, क्लिंट के थ्रू बोल सकते हैं कि वो डैमेज उनकी तरफ से आता हुआ देख सकता है, रेंज थोड़ी सी रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। लेकिन सेशन हिरारा यहाँ पे बचती हुई जा सकती है, बैकलेन को टारगेट कर सकती है इजिली, और मिस्टिक जो आएगा यहाँ पे गॉड की तरफ से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बैन की बात करें तो यहाँ पे टेरिजला बैन आता हुआ दिखा है, और मैं कहूंगा कि थोड़े से बैन अलग हो गए हैं यहाँ पे STG। लाइक लास्ट के 2 बैन अगर बात करें हम लोग, सेकंड लास्ट के 2 बैन जो थे ये मिया और टेरिजला, लाइक इतना सेंस नहीं बना रहे। ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइक मे बी हिरारा यहाँ पर एक ऑप्शन बना इसलिए क्योंकि उनके पास पकीतो है। पकीतो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेट देंगे अपने किटकैट के साथ, तो डेफिनेटली दैट्स माइट बी द थिंग। पकीतो है इसलिए हिरारा गए हैं यहाँ पे टीम लॉस सरियल्स, बट यहाँ पे आखिरी 2 पिक्स बाकी ब्रदर स्पोर्ट्स का। क्लिंट गए हैं इनटू द गोल्ड, अभी तक सामने का गोल्ड लेन पिक आया नहीं है। आपने मेलिसा बैन किया, आपने मिया बैन किया, देयर इज अ चांस टू गो फॉर द क्लॉड, देयर इज अ चांस टू गो मॉकअप, देयर इज अ चांस टू गो ब्रॉडी कैरी। बहुत सारे पिक्स यहाँ पे खुले, बीट्रिक्स जा सकते हैं, इरथिल जा सकते हैं, लापू लापू ओके दैट्स अ गुड पिक अगेंस्ट द पकीतो, बट पकीतो डैमेज एक्सपी होंगे, उनके पास वो सस्टेन भी रहेगा, उनके पास वो शील्ड इफेक्ट भी रहेगा। ओह माय गॉड, wasn't expecting a chip to barge into the land of dawn at a third game decider, but Hirara with a chip definitely going to work so well. Portal खुलेगा, Hirara आएगा, finish करके जाएगा. That's what the call is for. There is a Pakito as well. Shinra, can you just imagine the immaculation of the team fight will heavier than we are thinking much. ब्रदर स्पोर्ट्स आखिरी पिक, उससे पहले लॉस सरियल्स के पास ये आखिरी पिक, लास्ट पिक, लास्ट चांस. What they gonna go for into the gold? Brody, Irithel, Beatrix. Is it a Beatrix? No, it's a U-Zone coming in. That means you know what it means. Pakito go lane. लेट्स गो भाई, यहाँ पे भाई ब्रेन घुमा दिया जिस तरीके से घूमता है। और गूशक, अरे ब्रदर स्पोर्ट्स, ब्रदर ब्रदर मेरे दोस्त भूषण, आई मीन ओके आपने पिक किया है, बट अगर आपने सिंगल ब्लेड भी मिस किया यू आर डन। वो भी लाइक ऐसी जगह पे यहाँ पे आपको करो या मरो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर यू आर काइंड ऑफ कुक। पता नहीं भाई क्या सोच, क्या मंशा है तरफ से, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द पिक. I'm not happy with the intent from Brother Esports in the last game. It's a final game. I know it's a scrim, but you should take the scrim as much as serious like a tournament. तभी जाके तब्दील होगा आपकी गेम में. But here we are, Land of Dawn पे आ चुके हैं guys for the last game between Team Lost Series versus Brother Esports. Kushan आया जरूर है, Kushan pick in the rank, but here into the match, he needs to prove himself. He needs to stand against all odds. STG ने उसके बारे में बुराई बोली, शिंदा ने उसके बारे में बुराई बोली. अगर उनको प्रूव करना है तो मैच जीत के करना पड़ेगा यहाँ कास्टर्स के अगेंस्ट, प्लेयर्स के अगेंस्ट एंड मैच के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा टीम ब्रदर स्पोर्ट्स को. एग्जैक्टली, और उसी के साथ जो है फार्म वो जरूर आता हुआ दिखेगा आप लोगों की तरफ. यहाँ पे हिरारा कोशिश कर रही है फटाफट से, जैसे सेकंड स्किल मिलेगा उनके पास तो बोल सकते हैं कि स्पाइक ऑलरेडी आ चुका है, तो मिड लेन की तरफ फाइट होती हुई देख सकते हैं हम लोग.
कोशिश रहेगी, चिप जाएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज आता हुआ यहाँ पे, और मैं कहूंगा एक अच्छी अप्रोच आती हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज देते हुए दिखे हैं मॉडर्न लावा, उसकी तरफ आते हुए कोशिश, और यहाँ पे देखिए बचते हुए निकलेंगे एमएम, बहुत ज्यादा डैमेज लगा यहाँ पे, फर्स्ट ब्लड मिलेगा जरूर, चिप पोदाराशाही होते हुए जाएंगे, इस बार चिप खाने को नहीं मिलेगा उनको, उससे पहले ही यहाँ पे रोका गया। और चलिए अर्ली ओपनिंग मिलेगी यहाँ पे बढ़िया तरीके से ब्रदर स्पोर्ट्स, लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा कर सकते हैं, कोशिश उनकी तरफ से रहेगी, अंदर की तरफ आते हुए दिखेंगे, डैमेज लगातार देते हुए दिखे हैं, अच्छा खासा लेन की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज किया हुआ यहाँ पे ड्रैगन ने, मजबूर कर रहे हैं लापू लापू को बाहर आके खेलने के लिए, और अभी तक तो बराबर ही चल रहा है फार्म वगैरह, चिप वहां से आते हुए दिखेंगे, पीछे हटने का प्रयास रहेगा, और चलिए अभी दोबारा से डैमेज आता हुआ दिखेगा, गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टन लगा उनकी तरफ से, चिप बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे मेरे दोस्त, आपको पीछे हटना पड़ेगा, गुशन की तरफ से कॉम्बो आता हुआ, लेकिन फ्लिकर का कमाल का इस्तेमाल करेंगे, एक अजीब बचते हुए निकले, इराना वहां पे मौजूदा है, चेस करना चाहती है, ड्रैगन यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन वो बच चुके हैं इस समय। ओके, लेकिन टॉप लेन वहां पे मौके का फायदा उठाया पकीसो ने, फिनिश ऑफ करेंगे एमएम को, और इसी के साथ टीम फाइट आती हुई जाती हुई दिखेंगी, टाटा लेने का प्रयास कर रहे हैं इस समय, टाटा लेने का प्रयास कोशिश होती हुई, लेकिन यहाँ पे इरारा उनके हाथ लग चुका है, और चलिए टर्टल के साथ साथ किल भी मिलेगा, वैसे उनको दाराशाही कर दिया गया है, और बोला गया है कि आइए आप वापसी दूसरी तरफ मिलेंगे, लेकिन पकीतो वो रुकने वाली नहीं है, लगातार डैमेज देते हुए दिखे, अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, चिप यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, मिस्टिक गस का इस्तेमाल किया, पीछे से डैमेज मिलेगा, चिप दाराशाही, लेकिन एमएम उनको सुला दिया जाएगा, और बोला गया है कि भैया सो जाइए, दिन आ चुकी है, रात हो चुकी है। एक अच्छा स्टार्ट है, आप एमएम को टॉर्मेंट कर रहे हो, आप वेक्साना को टॉर्मेंट कर रहे हो, उनके मिड लेनर उनके गोल लेनर यहाँ पर कमाल का खेल नहीं दिखा पा रहे, ड्यू टू दिस पकीतो, ड्यू टू दिस चिप constantly poking Kavi, constantly poking Valiant Vexana, but right now situation इतना बुरा नहीं हुआ है, आप कंफर्ट के लिए गए हो, अपने जो कंफर्ट हीरोज है जिनके साथ आप हमेशा खेलते हो रैंक वगैरह में, उसके साथ गए हो, तो आप उसके कारण यहाँ पर खेलना चाहते हो, लेकिन अगर स्नोबॉल जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कंफर्ट में हो चाहे आप मेटा पे हो, स्नोबॉल हमेशा बहुत ज्यादा कामयाबी देता है। गुशन ऑन द जंगल गेटिंग इन्वेडेड डाउन देयर, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको पोक किया जा रहा है, मिस्टिक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल होता हुआ यहाँ पर गुशन जरूर रिट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे फॉर द ब्लू बफ, आई मीन नॉट द रिट्रीब्यूशन बट द डैगर्स, यहाँ पर लीथो लैंटर्न ये किसको मिलेगा, अच्छा रिट्रीब्यूशन यूज किया लीथो के लिए, अच्छी कोशिश यहाँ पे, Hirara got the lethal there, but now Pakito goes in for the tormentation. He got the punish onto that cushion. No matter what you can do here, Mystic Gus shortcut खुला है, अंदर घुसेंगे, मैक्स सिक्योर करेंगे, ये खेल के डबल मिलेगा फ्लिकर के साथ, पीछे हटते हुए काफी यहाँ पर बहुत ही खराब पोजीशन में डबल किल का शिकार होते हुए। And did you recognize Kavi is right now playing the jungle? I mean, right now playing the gold, not the jungle. अभी इनके जंगलर है, लेकिन अभी वो गोल्ड खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली उनको टॉर्मेंट बहुत ज्यादा किया गया है। आप देख सकते हैं क्लिंट का स्कोर देखिए 130 एंड वेयर यू कैन एक्चुअली काउंट एसएक्स ऑन द पकीतो 303 भाई, जी यार, वहां पर 3 बार डाउन किया गया है, तो यहाँ पर 3 असिस्ट एंड 3 किल्स लिया गया है। Dragon the Lapu Lapu is having a fun under the EXP lane. That onto the turtle, you can see that it's an easy turtle for the Saturday Max. Oh. Gonna get the turtle there. 742 का ये score. Mystic projectile miss हुआ otherwise यहाँ पर आपको पता है कि रिची के साथ थोड़ा सा, अच्छा पूरी टीम ने चेंज किया। आप देख सकते हैं माही सिर्फ खेल रहे हैं, उनके अलावा जो उनके EXP लेनर है वो मिड लेन खेल रहे हैं, उनके EXP खेल रहे हैं, उनके गोल लेनर जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं जंगल, और उनकी जंगलर जो है वो गोल्ड लेन खेल रहे हैं। फिर से क्लिंट यहाँ पर टारगेट आउट होते हुए ब्राथ ऑफ ड्रैग का इस्तेमाल जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा इटर्नल गॉड, 3 people go, Pushin comes in there with the dagger, finds kill on the god, but 1-for-1 का ये ट्रेड, लापू यहाँ पे continuously chase down करने की कोशिश, Black Dragon goes off with a proud pick up on a burst coming out from the man, I think back Vexana there, but there you go, unstoppable reconciliation kill onto the effect, अंदर जाते हुए इम्यून के साथ, can she get the kill? Console play comes out there for the retaliation. Belleric managed to go back at the safer side, but into the meantime we're going to see the structure falling down on the top. कमाल का गेम मिला आता हुआ यहाँ पे लॉस की तरफ से, और थोड़ा सा देखा जाए तो ब्रदर स्पोर्ट्स बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रही है।
गुशन पिक के साथ गए हैं यहाँ पे, और यही दिक्कत रहती है गुशन प्लेयर के साथ, लाइक गुशन पिक्स के साथ जब भी आप खेलते हैं उनको स्नोबॉल की जरूरत रहती है। उनकी जगलिंग स्पीड ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो है, उसके बावजूद अर्ली जो है इन्वीड होने के चांसेस आपके पास ज्यादा रहते हैं। और अगर आपके ड्रैगर एक बार भी मिस हुए, एक कॉम्बो भी आपने मिस किया, तो पूरी टीम को सफर करना पड़ता है यहाँ पे। जिस तरीके से आप बात करें फाइट होती हुई दिख रही है, चिप जाएंगे मैच के पीछे पड़ना चाहते हैं, कोशिश रहेगी उनकी तरफ से शॉर्टकट ओपन होगा पकीतो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सोचा कि नहीं भाई अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, एचपी उनके पास वैसी नहीं थी, लेकिन चिप बहुत ज्यादा अंदर चले जाएंगे और भैया बह गए वहां पे। टावर का डैमेज सोचा नहीं था इतना ज्यादा लगेगा, और वहां पे ट्रू डैमेज लगा, ताराशाही हुए निकली की साइड, और रेड मिलेगा जरूर यहाँ पे। इरारा को चैटर के लिए आ सकते हैं, कोशिश रहने वाली है, लेकिन बचते हुए निकले इस समय। यूजोंग वो मौजूदा रहेंगे, फोक करना चाहते हैं, लापू लापू उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक डाउन कर रहे हैं, लगातार पोक कर रहे हैं, पीछे बचते हुए निकल रहे हैं। और लापू लापू की यही सबसे ज्यादा बेस्ट बात रहती है कि आप इजीली अपने ओपोनेंट को पोक करते हुए जा सकते हैं, लगातार उनको अनॉय कर सकते हैं। ड्रैगन की बात करें वो आते हुए दिखेंगे ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में मिड लेन की तरफ। लेट्स सी क्या फाइट्स वगैरह हो सकती है या नहीं, कोशिश उनकी तरफ से रहेगी जरूर। और जिस तरीके की फाइट हमें आती हुई दिख रही है टीम्स के बीच में, कमाल की फाइट्स हो रही है। शुरुआत पिछले बार की थोड़ी आप बोल सकते हैं कि वैसे ही जाती हुई दिख रही है। किल्स की बात करें तो 11 किल्स पे बैठी है यहाँ पे लॉस, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए ब्रदर स्पोर्ट्स 5 के खाते पे भी बची हुई है। फार्म डिफरेंस की बात करें तो वहां पे भी धीरे धीरे अब बढ़ोतरी धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस समय बोल सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 6K का फार्म डिफरेंस आ चुका है, और इस गेम में अर्ली गेम पे 7 मिनट में 6K का फार्म डिफरेंस, ये अच्छी बात तो नहीं है भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और देखिए लगातार कोशिश रहेगी, डैमेज देने का प्रयास किया है, अंदर की तरफ इनिशिएट करते हुए देखेंगे चिप, लेकिन बचते हुए जाएंगे। और यहाँ पे स्टिक प्रोजेक्टाइल वो आता हुआ दिखेगा गॉड की तरफ से। दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, ड्रैगन काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि अच्छे तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लापू लापू पूर्ण रूप से मौके का फायदा उठा रहे हैं। मिनियंस को बोल सकते हैं कि टावर की तरफ आने नहीं दे रहे, जिसके कारण वो टावर अभी भी खड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे बन सकती है क्योंकि रोटेशन आ चुका है, लेकिन नहीं पीछे हटे इस समय भी। लापू लापू के पास इम्यूनिटी है तो अंदर जाके भी, टावर के अंदर जाके भी ज्यादा फायदा होगा नहीं, उल्टा आप किल दे बैठेंगे जरूर। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती हुई दिख रही है हमें, और Gash monster kill, Mal's in there, bonus domination, Bonzo goes down, flicker from Oasis, he goes back to the safer side, and we're gonna see the destroy of the turret happen. Lapu Lapu goes in for the bravest fighter, oh that's a beautiful taunt coming out there. Oasis as well as Khavi दोनों पीछे हटे, वहां पर रिटेलिएशन किया, मुझे लगा कि बहुत बड़ा सेट आएगा, but it doesn't happen there, just Richie goes down, and otherwise everybody managed to retaliate back. लेकिन resources किसी के पास मौजूद नहीं, Khavi के पास बस ultimate है, but it's a clint ultimate of course, lesser cooldown वाला। But now the Lord is here into the matrix, क्या यहाँ पर Lord को secure करेगी team Lost Surreales? They do not have the chance to go for the fight, but they do have a chance to go to take care of this Lord. लेट्स सी जिस तरीके से इनिशिएट करते हुए दिखेंगे। वो ड्रैगन का आगमन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है लॉर्ड फाइट के लिए, और चिप के पास शॉर्टकट है तो इजीली वो कहीं ना कहीं से बोल सकते हैं कि अच्छा एक आउटपुट लाते हुए देख सकते हैं। ब्लू ऑफ लेते हुए दिखेंगे यहाँ पे गुशन, उसी के साथ वापसी होती हुई दिखेगी, लेकिन बहुत दूर दूर तक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे आने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि एक्स भी यहाँ पे मौजूदा नहीं है, लॉर्ड इजिली मिलेगा। टीम जो है बैकडाउन होती हुई दिखेगी। चिप अंदर की तरफ गए, फ्लेकर का इस्तेमाल किया है, शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, नई तरफ आते हुए दिखेंगे, टर्नकट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे डैमेज मिलेगा और यहाँ पे गलती साबित हो सकती है, शट डाउन दिया जाएगा इरारा को। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया, लेकिन फाइट थोड़ी सी पलट चुकी है यहाँ पे, क्योंकि 2 के बदले 2 मिल चुके हैं, और 3 की तीसरा किल है वो भी मिलेगा, और चलिए 14 के भी मिला। ऑलमोस्ट पूरी टीम जो है वाइप आउट हो गई यहाँ पे एक गलत कदम के कारण। और पकीतो यहाँ पे चावल लेते हुए दिखेंगे, लेकिन उनको भी निकलना पड़ेगा। इस समय पीछे से गुशन आ रहे हैं, दिक्कत हो सकती है। बाबा वहां पे कोई आ रहा है, पीछे हटे, गुशन का फुल कॉम्बो पड़ेगा, लेकिन आई थिंक सर्वाइव कर जाएंगे, और उसी के साथ डैमेज रिडक्शन थोड़ा सा मिलेगा जरूर। एक बार रिप्ले की तरफ जाते हुए देखेंगे, शॉर्टकट ओपन किया और वैक्साना का अल्टरनेट गार्ड, उसके साथ साथ बेलरिक का जो अल्टीमेट पड़ा टॉर्मेंट, वो कमाल का कॉम्बो यहाँ पे साबित हुआ। और चिप वो धाराशाही हुए अपनी टीम को लेते हुए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना चाहिए था चिप को, मे बी शायद, या फिर उनकी टीम को वेट करना चाहिए था। शॉर्टकट ओपन होने के बाद तुरंत नहीं जाना चाहिए था, और उसी बात का फायदा यहाँ पे लगा। एक
बढ़िया कॉम्बो मीच की तरफ से और गेम जो है ऑलमोस्ट वापसी की तरफ आता हुआ। डेफिनेटली पे जिस तरीके से गेम जा रहा है ना शिमरा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा ब्रदर। ई स्पोर्ट्स के पास जरूर कंफर्ट पिक्स है, ऐसे पिक्स है जो इतना ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग इट इज अ प्रॉपर वे। यहाँ पर जापानीज गाय अभी तक पीछे नहीं हटे। जापानीज गाय बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लापू लापू के साथ वो जिस तरीके से एंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं इनटू द फाइट, इज रियली हैपनिंग वेल। ओह दैट्स अ मिस्टिक प्रोजेक्टाइल कम्स द वे। मिस्टिक का इस्तेमाल काफी नहीं यहाँ पर मैक्स को टॉर्मेंट किया है, साथ ही साथ माही का यहाँ पर किल। डबल मॉन्स्टर, डबल फोन टू रिची, ट्रिपल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बोंजो को गिराया है, बोंजो गोज डाउन। दैट्स द 3-4-2 का ट्रेड यहाँ पर आता हुआ, लेकिन यूजोंग यहाँ पर टॉर्मेंट डाउन हो रहे हैं, अंदर जाएंगे, ओएसिस को टेक डाउन करेंगे। लापू गोज बैक। That's beautiful, guys. लापू को पीछे हटना पड़ा यहाँ पर Destroyed. क्योंकि उनके पास वो मौका नहीं था। लुंगी, आप लुंगी का बात करोगे ना? नहीं लुंगी का बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यार आप कास्टर कर्स बड़ा गंदा लगाते हो यार। अभी तारीफ करी थी आप ब्रदर ई स्पोर्ट्स की, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन और ऑलमोस्ट पूरी टीम यहाँ पे वाइप आउट हो गई। ये देखिए रिप्ले। कास्टर कर्स तो बस एक बहाना है। ऐसा है कि जो बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं करता, वो मेरे घर में 9 से 10 बजे तक लाइट जाती थी। तो बेटे तुम दिन में क्या करते थे? दिन में तो सूरज बाबू थे, उस टाइम पढ़ लो। तो वही चीज है, कास्टर कर्स सिर्फ एक कहने की चीज है। जब आप मियां बैन करोगे, गुशन जंगल जाओगे, तो फिर काहे का कास्टर कर्स भाई? ना भाई, ये नहीं चलेगा। कास्टर कर्स है भाई, और उसी के साथ फाइट यहाँ पे नीचे होते हुए देखेंगे और चिप अंदर की तरफ गए जरूर थे, लेकिन पीछे हटे। शॉर्टकट का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, अच्छी बात है। वेट कर रहे हैं अच्छे एक मौके का, उससे पहले टॉन्ट जरूर लगेगा उनको। पीछे हटे हैं इस समय, लेन क्लियर आउट करने के लिए गई है। इरादा की अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन लापुर को मार्क करने के लिए पीछे से आगे हुए जाएंगे, उनको पीछे हटना पड़ेगा इस समय। और इम्पोर्टेंट कोशिश यहाँ पे रहेगी लॉर्ड लेने की। सकी तो मौजूदा है वहां पे, डैमेज देते हुए देखेंगे। लापू की तरफ से बोल सकते हैं कि काफी अच्छा खासा गेम प्ले आता हुआ जा रहा है। और एसटीजी एक बार लापू की तारीफ कर दीजिए प्लीज। जी नहीं, तो कुछ है नहीं, लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं। मतलब अच्छा तो खेल रहे हैं वो। अभी तक उनके टीम में अगर कोई देखोगे आप, इनिशिएशन वाले फाइट वगैरह जो ले रहे हैं वो वही है। तो डेफिनेटली वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन देखने लायक होगा कि अच्छा ठीक है। ओएसिस यहाँ पे टेक डाउन कर लिए गए। इटर्नल गार्डियन का यहाँ पर आगमन होता हुआ, लेकिन टीम के पास लॉर्ड है। लॉर्ड टॉप लेन से आती हुई 19-12 गाइस। लॉस्ट सरियल्स आर येट टू टेक द गेम ऑन फॉर देयर साइड, लेकिन लॉर्ड मार्च करते हुए टॉप से सिंक करवाते हुए इस लेन को। लॉस्ट सरियल्स जब तक लॉर्ड को क्लियर नहीं करोगे, आपके ऊपर भारी संकट पर रहेगा, क्योंकि टरेट आपका थ्रैश आउट होने वाला है टॉप लेन से। नेक्सस खुलने वाला है, सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? लॉस्ट सरियल्स पहला मैच हारने की कगार पे थे, फिर हारे वहां पर ड्यू टू लेन प्रेशर। उसके बाद वो कमबैक सेकंड गेम पे, उसके बाद ये थर्ड गेम का मैचअप उनका डेफिनेटली एक मतलब फेरी टेल एंडिंग होने वाला है उनका मैच पे, अगर वो जीतते हैं तो। कोशिश रहेगी इधर तरह चाहते हुए देखेंगे क्लीन की तरफ से। कोशिश पर यार मिस्टिकस का इस्तेमाल किया है, लेकिन रेंज के बाहर रहेंगे मेरे दो। फ्लेकर अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए जो आएंगे, ड्रैगन की तरफ से कमाल का रिटर्न आता हुआ पीछे के बैकलाइन को पार करते हुए गए हैं। डैमेज आएगा जरूर। लापू मौजूद है यहाँ पे, पकीतो आते हुए देखेंगे। किलिंग स्प्री मिलेगा उनकी तरफ से और एक कमाल का स्टन आता हुआ, लेकिन लॉर्ड वो मौजूदा रहेगा की तरफ जाते हुए देखिए, बिना पीछे से आते हुए दिखेंगे। और ड्रैगन वो थोड़ा सा हील करने का प्रयास, मार्क अगर कंप्लीट होता 3 बंदों के बीच में तो शायद बच जाते, लेकिन पीछे हटे इस समय। लापू वो वॉल बने हुए जिनको गिरा पाना अभी मुश्किल नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है। 304 का स्कोर लाइन के साथ लापू आगे बढ़ते हुए समय। It's actually not a lungi, guys. It's actually gladiator का स्कर्ट जो होता है वहाँ पे. So it's actually that thing. So they actually wear this kind of attire in France, if I'm not wrong. Oh, ये जो था, like मैंने एक बार देखा था, एक पाइपर कुछ होता है ना जो बजाते हैं, वो जो पुंगी in France, वो ये सब attire पहनते हैं. People thinks it's a skirt, but it's not a skirt actually. It's actually a skirt, but it's a male skirt. जो भी है. तो अभी रिचुअल्स की बातें नहीं करते, अभी मैच की पर फोकस करते हैं। मिस्टिक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल लापू को यहाँ पर टॉर्मेंट करने की कोशिश चल रही है, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य के ओर बढ़ती हुई लॉस्ट सरियल्स। आई विल से कि यहाँ फाइट ली गई, पीस निकाला नहीं गया, लेकिन उसके बदले वो इनोवेटर मिला है।
So there हाँ, is बोल a सकते हैं। there is a chance. तो थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा स्टेप लेके बेबी स्टेप्स लेकर आपको आगे बढ़ना है, मैच को कंप्लीट करना है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कहूंगा ना मेज को थोड़ी सी अच्छी पोजीशन लेनी पड़ेगी। उनका एक मिस्टेक गज ना अगर अच्छे से पड़ा ना तो बैकलेन को अगर आपने डाउन कर दिया किसी भी तरीके से, या तो आप मेज को डाउन कर दीजिए क्योंकि मेज सबसे ज्यादा अभी अनॉयंस बने हुए हैं। मेन लेन क्लियर वगैरह कर देते वो हर बारी वैक्साना, उनको अगर आप यहाँ पे मार देते ना तो आपके पास एक अच्छा खासा मौका रहेगा जिसके कारण ड्रैगन जो है वो और ज्यादा बैकलेन को मार कर सकते हैं और ज्यादा वो अंदर घुस के खेल पाएंगे, क्योंकि जो इंटरनल गार्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है चिप की अल्टीमेट को बहुत ज्यादा। चिप जब भी शॉर्टकट खोलते हैं मेज जो है हमेशा रेडी रहती है वहां पे इंटरनल गार्ड के साथ। It's a bagpiper, sorry, मैं भूल गया था, मतलब वही मैंने पाइपर बोला था, पुंगी बोला था, जिराया ब्रो ने मुझे याद दिला दिया। नो इट्स अ bagpiper, या इट्स अ bagpiper। और उसका जो अटायर होता है वो स्कर्ट पहना जाता है। एंड आई हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मूवी। वहां पे मैंने देखा था वो चीज एंड मैं लिटरली शॉक हो गया था। आई वाज किड एट दैट टाइम, मैं लिटरली शॉक हो गया था कि यार ऐसे भी होते हैं यार, लड़के लोग स्कर्ट पहनते क्या। फिर देखा नहीं है, तो कोई ना गाइस, आजकल तो बहुत कुछ पहना जाता है, मैटर नहीं करता। लॉर्ड टॉप लेन से मार्च करती हुई यहाँ पे सिंक करने की पूरी कोशिश। आप देख सकते हैं कि फ्लैबॉन ने यहाँ पर कमाल का खेल दिखाया है। एंड राइट नाउ दिस माइट बी द एंड ऑफ द डे नंबर 1 ऑफ दिस वीक। मंडे खत्म होने को आ चुका है गाइस, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा स्मेल हो रहा है। बट क्या यहाँ पर द बैकपाइपर, द जापानीज गाय लापू लापू कुछ एक मर्दाना हरकत करेंगे? क्या अकेले इस लॉर्ड को डिफेंड कर पाएंगे? निचली भाग से टरेट टूटता हुआ अंदर जाते हुए यहाँ पर शॉटकट खुलाया है। ब्लैक ड्रैगन कमिंग इन फॉर दिस जोन, वी गोना गो इट बैक एंड वी गोना सी दैट लापू लापू जंपिंग इन विद द bravest fighter on the fourth member. He just goes in for the rampage. Lord base को अटैक करता हुआ, nobody is actually looking at the base right now. They might gonna go for the call down, but look at it, that will be a domination on Oasis. Lord को डिफेंड कर दिया गया है लेकिन पीछे हटती दिख रही है यहाँ पर टीम लॉस सीरियल्स। हर तरफ से उन्होंने खुला छोड़ दिया है नेक्सस को, तो हो सकता है कि यहाँ पर नेक्सस को ग्रैब करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ पे आता हुआ। जिस हरकत की बात मैंने की थी, लापू लापू डिड दैट, he just jumped into 4 man and literally went for the aura farming sector। ये देखिए वो जंप यार क्या मस्त था। देखो शॉर्टकट खुला, ड्रैगन आए और लापू कैसे कूदेंगे, देखना पूरा पूरा मतलब वो तेलुगु स्टाइल हीरो। हाँ वो कमाल का फ्लिकर मार के पूरा मजा आ गया यार वो ना। नाइस गेम प्ले भाई, कमाल का गेम प्ले आता हुआ लापू लापू की तरफ से। पूरी टीम जो सरवाइव कर रही है इस समय वो लापू लापू के बदौलत। और वैक्साना का पैसिव जो ग्रुप मिनियन है ना इजीली कहीं ना कहीं वो हटा दे रहा है, जिसके कारण अभी भी बेस बचा हुआ है। कोशिश रहेगी लेकिन चिप बहुत ज्यादा अंदर जाते हुए दिखेंगे, टॉन्ट उनकी तरफ से आएगा जरूर और शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है। ड्रैगन मार लगाते हुए इस बार बहुत ही बढ़िया पेट्रीफाई कॉम्बो और अंदर की तरफ जाते हुए मार कभी भी लगेगा। इनारा की तरफ से अच्छी कोशिश, लेकिन यहाँ पे डैमेज क्या वो पूर्ण रूप से होता हुआ दिखेगा? डैमेज तो आता हुआ दिख रहा है, सस्टेन भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओके बहुत ही कम एचपी पे ड्रैगन को बचना पड़ेगा भाई। ड्रैगन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन आप बोलोगे कि दूसरी साइड से लापू लापू आ रहा है। कमाल का मिनियन बहुत ज्यादा है बेस की तरफ, कोशिश रहेगी इसको खत्म करने की, लेकिन मेज यहाँ पे आती हुई दिखेंगे। और चलिए वो बचा लिया है, फिर से बचा लिया है भाई, फिर से बच चुका है गेम अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 19 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और इसी के साथ टीम जो है लौट के लिए आती हुई दिखेगी। की बंदे दराशाई है यहाँ पे लॉस के, और गेम अभी भी लगातार चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ। OMA one man army, ये कोई और नहीं, लापू लापू the tribal frontal warrior is still awakening, still arising and still trying to thrash out the side of Lost Surreales। अकेले खड़े हैं, अकेले संभाल रहे हैं। लॉर्ड के पास आते हुए यहाँ पर टॉमिक करने की कोशिश, ब्लैक ड्रैगन being used as this moment, Beleric going in for the taunts, we're gonna see the लापू लापू jumping in again, but right now look at it, थोड़ा सा स्टन यहाँ पे वैलेंटीना की तरफ से शॉर्टकट का इस्तेमाल हो चुका है। पीछे हटेंगे लॉर्ड के पास, वहां पर
सीधा बेस के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन लुक एट द डैमेज, मिस्टिक गश का इस्तेमाल यहाँ पर खाबी पीछे हटे, लेकिन मैक्स गोस डाउन, किलिंग स्प्रे टू द हैंड ऑफ द गुशियन राइट नाउ, दे कैन गो फॉर द बॉन्क हियर, टॉन्ट आता हुआ नॉक अप हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे टॉर्मेंट करने की कोशिश, इमोर्टलिटी गोस देयर, वी कैन सी खाबी गोइंग फॉर द फाइनल ब्लो, बट इट विल बी गुशियन गेटिंग द किल देयर, दे कॉलिंग बैक टू द बेस, रिटेलिएट किया है यहाँ पर लॉर्ड के लिए, अभी चांस बढ़ता हुआ टीम ब्रदर ई-स्पोर्ट्स का लास्ट सर, ये जरूर आपके पास स्ट्रक्चर है, जरूर आपके पास लीड है, लेकिन हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है ब्रदर ई-स्पोर्ट्स, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द डिफीट, दे वांट टू चेंज द फेट, दे वांट टू टेक ऑन द गेम फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टू अ विक्ट्री। जो निम्दा दा जो अभी माउंटेन रेंजर जो चल बसे, उनका एक अवार्ड आपको याद होगा, उनका एक जो सेंटेंस, और वो ये है कि गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, वही वाला चीज यहाँ पे हो रहा है गाइस, ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम। चलिए लॉर्ड का आगमन होने वाला है कुछ देर में, पर आई थिंक यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिख सकते हैं हमको, थोड़े से दिक्कत कहाँ हो जा रही है, थोड़ी सी देखना पड़ेगा। लाइक चेंजेस क्या हो रहे हैं ना कि आप कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेज का जो डैमेज आ रहा है, जो स्टन आ रहा है बेसिकली, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत बना हुआ है आपके लिए। आप अंदर जाके नहीं खेल पा रहे हैं, आपके पास हीरोज ऐसे हैं जो क्लोज रेंज की तरफ जाते हुए खेल सकते हैं, आपके पास एमएम नहीं है, जिसके कारण आपको गेम एंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। डेफिनेटली थिंग लाइक गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, नेम्स दाई का वो वर्ड याद आ रहा है, वो सेंटेंस याद आ रहा है, दैट्स व्हाट राइट नाउ द लापू इज सेइंग, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड। और क्योंकि गिव अप नहीं कर रहे, लौट लिया है, आगे बढ़ेंगे इस बार, और ये but Gushin got the ball up, unstoppable, emasculating, Max goes down, Kabi formation happened there, down, he goes in for the dagger, finds the double onto Bonzo, 3-man down here, flicker comes in, oh, that's the flicker from the Valentina, I mean Vexana as well, Lapu goes in for the way, dagger falls in, पॉप अप हुआ है, टॉर्मेंट करेंगे काफी, मैच चेंज हो गया है, परिवर्तन दिखता हुआ यहाँ पर, जीत का हश्र, जीत का गाना यहाँ पर गाएगी टीम none other than brother esports, they just changed the whole game, the whole scene, बदल चुका है फेट, बदल चुका है इस गेम का आगमन, इटर्नल गार्डियन, छोटा लॉर्ड, बड़ा लॉर्ड, सब एक साथ अंदर जाते हुए, brother esports just pulled out one of the biggest comeback at Algambo Esports MOBA Warmup Class Series, from thrashing out from the starting to not giving up till the end to get the victory into the hand. This is brother esports with a 2-1 victory against Lost Surreales. एक मौका, एक तब्दील, एक कोशिश अपने कंफर्ट हीरोज के साथ, कास्टर्स अगेंस्ट हो गए थे, प्लेयर्स अगेंस्ट हो गए थे, व्यूअर्स अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन टीम साथ में रही, जुड़ी रही और कमाल का खेल दिखाया। The OG Lapu and the OG team, brother esports, going to take on the game as a victory at Algambo Esports. कमाल का डोमिनेशन आता हुआ, कमाल का बोल सकते हैं आप कि एक तरफा झुकने के लिए रेडी नहीं थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि हम नहीं झुकने वाले, हम करके दिखाएंगे, एंड दे डिड इट सो फैबुलसली। इतना कमाल का गेम प्ले था एंड की तरफ आता हुआ एसटीजी। बढ़िया भाई, बढ़िया। I can't believe the way they played, the way they won this game with a cushion jungle and a Vexana into the mid. Literally, like we don't see this kind of game plays in regularly in the scrims, but literally they did not lose the hope. And I'll full credits to that Lapu. The way he defended the base even after losing all the outer tiers, all the inhibitors, immense respect, man. और इसी के साथ ये दिन खत्म हो रहा है गाइस। ये दिन पैक ऑफ फन था भाई, मतलब फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपनिंग टुडे and ended it with a brother esports win. Literally, I really want to see another between this two team actually. इस वीक पे अगर हो सके तो और एक सीरीज होना चाहिए इन दोनों का। It's not ended with a 3 games guys. It should be end with at least a BO5, at least a BO7 kind of thing. कोई बात नहीं, जीत यहाँ पर ब्रदर esports को मिली है। मैच टीजी शिंडा विदा लेने का समय आ चुका है क्योंकि रात बड़ी लंबी हो गई है आज। But we will come back tomorrow again for another 3 exciting BO3 series. Who knows? Again, we will see some third game decider or a fully clingy 2-0 clean sweep. उसको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
स्पोर्ट्स में सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारे स्क्रिम्स को, और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्वाइन कीजिए डिस्कस सर्वर को, एज वेल एज फॉलो कीजिए Instagram हैंडल को फॉर द फॉलोइंग मोर इन्फोज अबाउट Algambo Esports इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स। क्योंकि आने वाला है स्टारलाइट क्लैश, तो उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप जल्दी जाकर जो है Instagram पे फॉलो कीजिए। अगर आपको वहां पे खेलना है, रजिस्टर करना है अपनी टीम को, देन हमारे वेबसाइट लिंक को भी अपने पास मौजूद रखिए, क्योंकि वेबसाइट पे भी हमारे इन्फोज आ जाते हैं। इसी के साथ मैं एसटीजी, मेरे साथ चिंडा, साइन ऑफ करते हैं आज Algambo Esports की मोबा क्लास सीरीज से। मिलते हैं आपको कल फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल एवरीवन, गुड नाइट, सबा खैर।